हाँ पूरा है पूरा। लेकिन कोई हाँ ऑपरेटर आया पूरा है ना। चलो ओके ओके थैंक यू मैं हो रहा है शाबाश शाबाश। वो हम कोशिश करेंगे फुल टाइमर से वो आपको जो करें वो हम कर लेते हैं इसके बाद जो है हमें सारे काम लोग कोशिश करेंगे कि नहीं हाँ टाइम जाया होगा मेरा सर्कल पे रोको 10 मिनट ये काम ये अपना काम
बताओ उनको कैसा लगा है। ठीक है मैं सही है। हाँ ये जानी अपना कोई एक नंबर दो।
पता चला तो वो तो लाहौर में बेचारे को किसी को नहीं पहचानता, सबके नाम जानता हूँ, सबकी खिंचाई करता हूँ। मैं हुसैन नहीं नहीं वैसे बताओ ये ना नीचे कितना पैक गया आता तो वो आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सिको भाई वाह तुम इधर हो। आप अगर तबीयत खराब हो ये तो साथ साथ सब यही है, तुम भी इधर हो, तुम भी इधर हो, सब इधर ही है। वेलकम टू द पिच रिपोर्ट। आज पहला सेमीफाइनल है प्रेसिडेंट कप का और आज की जो पिच है वो आपको पहले हम दिखा देते हैं कि ये पिच बड़ी मुझे सॉलिड सी लग रही है और ये थोड़ी सी नई लुक है इसकी। जो कराची में वुमन पिचेस बनती थी उसको देखते हुए ये काफ़ी एक तो आप देखें काफ़ी सॉलिड लग रही है। और अभी मुझे अंपायर साहब ने बताया कि इसकी ये ऑस्ट्रेलियन सॉइल है जिसके ऊपर ये पिच बनी है और इसमें हल्के फुल्के क्रैक हैं, मगर पहले दिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसी ख़तरनाक चीज़ होगी। तो मेरे ये ख्याल है, आई डोंट नो, इसलिए कि ये कुछ नई पिच है, नई सॉइल है, तो अगर जो भी टॉस जीतता है मेरे ख्याल से उसको पहले बैटिंग करनी चाहिए, इसलिए कि इसमें रफनेस नहीं है। कराची की कोई भी पिच हो, पाकिस्तान की कोई भी पिच हो, स्पिनर्स उसमें काम करते हैं। तो लेट्स सी कि टॉस जीत के वो क्या करते हैं।
वो आपको पहले हम दिखा देते हैं कि ये पिच बड़ी मुझे All right.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to ARCL presents the University of Lahore Presidents Cup 2025 और हम नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में मौजूद हैं। सेमीफाइनल्स का सिलसिला शुरू हो चुका है और पहला सेमीफाइनल अभी खेला जा रहा है। OGDCL का मुकाबला PTV और टॉप 4 टीम्स हमें मिल चुकी हैं। OGDCL अब तक अनबीटेबल है इस कंपटीशन में और आज इनको ये मैच जीत के अपने फाइनल में जगह बनानी है। PTV की तरफ से देखा जाए तो 4 मैचेस उन्होंने जीते हैं, 3 हारे हैं और इस बारे में हम अब थोड़ी बातचीत करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर। वेलकम खुर्रम। हम थोड़ी बात करना चाहेंगे, OGDCL अनबीटेबल रही है, डोमिनेट किया उन्होंने। क्या लगता है आपको इन गिवन कंडीशंस में नॉकआउट का प्रेशर, सेमीफाइनल का प्रेशर क्या उनको परेशान कर सकता है? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, बड़े मैच का प्रेशर तो होता है और यही प्लेयर की क्लास शो होती है कि कौन सा प्लेयर कितना प्रेशर को हैंडल करना जानता है और वही प्लेयर एक नॉर्मल प्लेयर से एक स्टेप आगे निकलता है। तो यहाँ पे की प्लेयर्स जो हैं जिन पे टीम डिपेंड कर रही है या बैकबोन का रोल होगा, तो उनको ये चाहिए फ्रंट से लीड करें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि OGDCL से इमाम है और माँ सदाकत है, इन पे बड़ा डिपेंड है कि ये जो जिस फॉर्म को कैरी कर रहे हैं ये इसको कंटिन्यू करें और टीम के लिए अच्छा एक स्टार्ट दें और जब ये 30, 40, 45 के करीब आए तो अधूरा छोड़ के ना आए, क्योंकि एक एक्सपीरियंस प्लेयर देखिए इमाम के पास एक ह्यूज एक्सपीरियंस इंटरनेशनल क्रिकेट का भी है। तो इसी तरह अगर देखा जाए PTV में भी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और कप्तानी का बड़ा फ़र्क है। आदिल अमीन के साथ मैंने खेली भी है क्रिकेट और बड़ा स्मार्ट मूवर है वो और गेम को रीड करने की उसकी एक अच्छी नेचर है। तो अच्छा देखा जाए हेल्दी कंपटीशन देखने को मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा कंपटीशन होगा, क्योंकि थोड़ा सा जो इनका पहला मैच हुआ था आपस में मैंने देखा था 40-45 फॉर 5 थे और 280 समथिंग किए थे PTV ने। तो इसका मतलब फाइट बैक करने की स्ट्रेंथ है। तो माना सही OGDCL अनबीटन है और अच्छी फॉर्म में एक टच में है, एक मोमेंटम बना हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा और हेल्दी मैच देखने को मिलेगा। दोनों टीमें अच्छी क्रिकेट खेल के क्वालिफाई किया है, तो लेट्स सी। अच्छा खुर्रम, अक्सर हम देखते हैं कि नॉकआउट में जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि टॉस जीतो और पहले बैटिंग करो और स्कोर लगा दो, लेकिन बहुत से कप्तान जो है चेस की तरफ जाते हैं। इन गिवन कंडीशंस में आपका क्या कहना है कि कप्तान को नॉर्मली उसी पैटर्न पे जाना चाहिए कि बड़ा स्कोर लगा के जो है प्रेशर अप्लाई करो ओपोनेंट्स पे? नहीं देखिए, जो स्मार्ट टीम है, स्मार्ट कैप्टन या उनकी जो थिंक टैंक होता है वो कोशिश करते हैं कि पिच को रीड करें और डिसेंट फैसला करें। ज़्यादा एक्साइटमेंट भी आपको डैमेज करती है। तो मैंने जितना पिच को अभी देखा मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा अर्ली ऑन प्रॉब्लम करेगा बैट्समैनों के लिए। डजन मीन के आप समझ रहे हो कि बहुत मुश्किल होगी, मगर अर्ली ऑन फ्रेश पिच है तो थोड़ा बहुत एडवांटेज होगा बॉलर को और यही एडवांटेज लेने के लिए उन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग की है OGDCL ने। ओके, अच्छा इसमें हाउ मेनी रन्स यू आर प्रेडिक्टिंग समहाउ के 300 350 रन भी हमने देखे हैं 50 ओवर्स में, इंटरनेशनल में भी डोमेस्टिक में भी। तो अभी आपको क्या लगता है कि इन गिवन जो कंडीशंस हैं यहाँ पर 300 के करीब एक अच्छा डिफेंडेबल स्कोर हो सकता है या 300 से ऊपर ही जाना चाहिए? देखें 300 प्लस तो बहुत मतलब बहुत अच्छा स्कोर कहेंगे आप, मगर जो इस पिच को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है 270 280 एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि बाद में ड्यू फैक्टर भी है, पिच का बिहेवियर चेंज होगा, थोड़ा बैट पे बॉल आने लगेगा, थ्रू द बैट आप शॉट मारेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि पहले बैटिंग के मुकाबले में सेकंड बैटिंग में जब बैट्समैन आएंगे उनको इजी होगा बैटिंग करने में। तो ये अब इनकी जहानत पे है, थिंक टैंक पे है PTV को कि ये एटलीस्ट शुरू के 10 ओवर कैसे खेलते हैं, क्योंकि देखें ओपनर बेस बनाते हैं पूरे मैच की, तो इनके ऊपर जिम्मेदारी है और PTV के स्मार्ट ओपनर हैं और आई होप कि वो अच्छा स्टैंड दें ताकि बड़ा टोटल कर सकें। अच्छा, ड्यू फैक्टर आ सकता है कुछ इस तरफ? देखें अब है, ऐसा नहीं है कि है और ठीक ठाक है, मगर ज़्यादा वही वाली बात है कि अगर टीम के देखें स्ट्रेटजी में तो ये भी होता है कि बॉल की केयर कितनी करती है सामने वाली टीम, तो ये सारी केयर के ऊपर है। अगर थोड़ा सा आप ढीला करेंगे और इग्नोरेंस बोलते हैं नहीं कि बॉल को ड्राई नहीं रखेंगे तो बॉलिंग टीम को डैमेज होगा। ओके खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है पिच रिपोर्ट का। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त मौजूद हैं पिच रिपोर्ट के साथ। चलते हैं पिच के सेंटर पे। वेलकम टू द पिच रिपोर्ट। आज पहला सेमीफाइनल है प्रेसिडेंट कप का और आज की जो पिच है वो आपको पहले हम दिखा देते हैं कि ये पिच बड़ी मुझे सॉलिड सी लग रही है और ये थोड़ी सी नई लुक है इसकी। जो कराची में वुमन पिचेस बनती थी उसको देखते हुए ये काफ़ी, एक तो आप देखें काफ़ी सॉलिड लग रही है। और अभी मुझे अंपायर साहब ने बताया कि इसकी ये ऑस्ट्रेलियन सॉइल है जिसके ऊपर ये पिच बनी है और इसमें हल्के फुल्के क्रैक हैं, मगर पहले दिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसी ख़तरनाक चीज़ होगी। तो
मेरे ये ख्याल है, आई डोंट नो, इसलिए कि ये कुछ नई पिच है, नई सॉइल है, तो अगर जो भी टॉस जीतता है मेरे ख्याल से उसको पहले बैटिंग करनी चाहिए, इसलिए कि इसमें रफनेस नहीं है। कराची की कोई भी पिच हो, पाकिस्तान की कोई भी पिच हो, स्पिनर्स उसमें काम करते हैं। तो लेट्स सी कि टॉस जीत के वो क्या करते हैं। और पिच रिपोर्ट से हम वापस आ गए। वक्त हुआ है टॉस का। ज़िशान खालिद मौजूद हैं दो कप्तानों के साथ। Assalamu alaikum and welcome from National Bank Stadium in Karachi. This time for the first semi-final of AirCL presents the University of Lahore President's Cup one-day tournament. And we are all set for the toss where we have got both the captains up with us along with the match referee. The OGDCL skipper Adil Amin is here with us. I've got Shamil Hussain, the skipper of PTV, and Mr. Iftikhar Ahmed being our match referee. I believe, Shamil, you have got the coin. Adil, give it a flip. Tails. Tails is the call. And heads it is. आदिल आदिल टॉस जीते हैं, क्या करना चाहेंगे? हमारा पहला बॉलिंग का प्लान है। आदिल किस टोटल पे रिस्क करना चाहेंगे आज पीटीवी की टीम को? देखिए अभी तो कुछ कह नहीं सकते, पहले देखेंगे क्या कंडीशंस है और कोशिश करेंगे कि कम से कम रिस्ट्रिक्ट करें। आदिल, अब तक आपकी टीम की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, 7 के 7 मैचेस अपने राउंड सीरीज में जीते हैं, पीटीवी को भी हराया था, तो कॉन्फिडेंस है हाई टीम का? जी बिल्कुल, मोराल और कॉन्फिडेंस टीम का बिल्कुल हाई है और कोशिश करेंगे आज भी अच्छे से अच्छा करें। ऑल द बेस्ट आदिल फॉर टुडेस गेम। शामिल, टॉस आपके हक में नहीं रहा, आज एक बार फिर आपको बैटिंग की दावत दी गई। व्हाट वुड यू हैव डन अगर आप टॉस जीते? नहीं, हमारा प्लान वैसे बैटिंग का ही था। पिच बिल्कुल ठीक लग रहा है और पहले भी जब हम इधर खेले तो हम लोग बैटिंग फर्स्ट करके हम लोग ही जीते, तो हमारा प्लान वही था। पिछले कुछ मैचेस से काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपने गेन किया है, यहाँ पे पहले मैच जीता, फिर हमने पिछले मैच में भी देखा बड़ी टीम को हराया, तो कितना टोटल नज़र आता है आज की पिच को देखते हुए? आई थिंक जिस तरह हमारी बैटिंग परफॉर्म कर रही है, आई थिंक 300 तो एक मॉडेस्ट टोटल एजिंग जो हम कर सकते हैं। बाकी ऑब्वियसली क्रिकेट कुछ पता नहीं है, लेकिन हम इतना ही टारगेट देंगे जिससे वो लोग अंडर प्रेशर हो। सेमीफाइनल है, बड़ा मैच है, क्या चेंजेस हैं आज के प्लेइंग 11 में? हमारे प्लेइंग में 2 चेंजेस हैं, मुझे याद नहीं आ रही लेकिन 2 चेंजेस हैं। चलें, ऑल द बेस्ट शामिल फॉर टुडेज गेम। थैंक यू सो मच। सो दैट्स द न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर। वी सॉ OGDCL skipper Adil Amin winning the toss and no hesitation in choosing to bowl first. जी, और टॉस हो चुका है और ओजीडीसीएल की टीम ने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया। और खुर्रम, हम बात कर रहे थे कि आपने जैसे प्रेडिक्ट किया था कि पहले जो है बॉलिंग करना बेहतर रहेगा और ओजीडीसीएल ने लगता है पिच अच्छी रीड की है। देखें, स्मार्ट टीमें ये होती हैं कि थोड़ा सा कंडीशंस को यूज़ कर लें, क्योंकि देखें वनडे ऐसी क्रिकेट है, इसमें आप थोड़ा सा चांस होता है और वो आपका अगर टीम नहीं लेती या मैनेजमेंट नहीं लेती तो उसका जो एडवांटेज है वो दूसरी टीम लेती है। तो टॉस जीत के एक अच्छा फैसला है कि आपको पिच का पता चल जाएगा, एटलीस्ट पिच का बिहेवियर क्या है। दूसरी बात ये कि एक टीम को कम से कम कम से कम रन पे आउट करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो पहले बॉलिंग करने वाली टीम टॉस जीतने के बाद करती है। तो उनकी कोशिश यही होगी कम से कम रन पे इनको आउट करें, उसके बाद ड्यू फैक्टर साथ में बैटिंग पैराडाइज थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है ऑफ द पिच बैट पे बॉल आना लगेगा। और आपने ही पिच पे नज़र डाली थी, तो आपको लगता है कि स्पिनर्स का रोल काफ़ी होगा और अनइवन बाउंस हो सकता है ड्यूरिंग द इनिंग्स? मुझे ऐसा लगता है अर्ली तो जिस तरह अभी पहले जो बॉलिंग करेगी उनको थोड़ा बहुत स्पिन का एडवांटेज हो, शायद बॉल थोड़ा ग्रिप करे, मगर लेटर ऑन सेकंड इनिंग में अच्छा बैटिंग पैराडाइज। मैं बार बार एक जो लफ्ज़ बोल रहा हूँ बैटिंग पैराडाइज, वो इस वजह से बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलियन सरफेस है और वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है तो बैट पे बॉल ईजीली आता है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बॉल ग्रिप करेगा सेकेंड इनिंग में। आइदर कोई बैट्समैन गलत शॉट मारे, उसके बाद ये हो के बॉल फंस गया था या पिच ने थोड़ा सा बिहेवियर वेयर एंड टेयर दिखाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड बैटिंग का एडवांटेज है और बिल्कुल डिसीजन अच्छा है। ओके खुर्रम, थैंक यू सो मच। और टॉस भी हो चुका है, पिच रिपोर्ट भी आ चुकी है। थोड़ी देर में लाइव एशन के साथ आपकी खिदमत में अभी हाजिर होने जा रहे हैं, लाइव कमेंट्री के साथ। और अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, थोड़ी देर में आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
Welcome to the President's Cup 2025 semi-final between OGDCL undefeated and PTV, live from National Bank Stadium, Karachi. Incoming umpires on field, Tariq Rashid and Imran Javed. TV umpire Nasser Hussain. Let's have a look at both teams, starting with OGDCL, Imam ul Haq at the top, Maz Sadqat, Haroon Arshad, Ruhail Nazir, Adil Amin the captain, Muhammad Sarwar, Danish Aziz, Imran Randawa, Asif Afridi, Muhammad Amir Khan and Arshad Ullah. Now PTV is led by Shamail Hassan, Yasir Khan, Mohammad Sulaiman, Mohammad Taha, Mohammad Mohsin, Taimur Khan, Ali Usman, Jahadat Khan, Faisal Akram, the Chinaman, Israr Hussain and Ahmad Bhatt. And that's the equation we have at the moment. OGDCL won the toss. They opted to field first. And the players are taking their positions in the middle. It's a bright sunshine here. And some glimpse of summer, Qasim. Some clips of beautiful summer. Lovely, beautiful Karachi. Lovely temperature here early in the afternoon as both PTV openers come to the crease in this huge must-win first semi-final. Yes, they lost to OGDCL in their league match. They lost to them by 5 wickets. Now it's a brand new game. It will bring new fortune. And the OGDCL captain was very clear and straight away he opted to bowl first. He certainly wants his bowler to exploit the conditions. And there were some cracks, some moistures. So first 10 overs are super crucial. Yeah, absolutely. If you've opted to bowl first, I think he's probably thinking there might be a little bit in the pitch early on. I doubt there will be anything in it later in the afternoon. So if you're going to try and get some movement out of it, now's the time to do it. They'll be looking to start well, OGDCL, in these first 10 overs. Left-hand batsman is taking the guard, and certainly we can expect lots of runs here. But obviously it's a 50-over side match, so plenty of overs, so the batsman can afford to have some quiet overs in the beginning. The bright sunshine, the fielders are taking their position. We have a traditional slip, mid-off, mid-on. It's Shamail Hassan, the skipper. The stylish left-hand batsman. He's an aggressive player, the man in form for PTV and also the captain. And the push-ups are going on, so the intentions are pretty clear. Push-ups first thing in the morning, that's fitness for you. A long game ahead, must be very fit. Yasir Khan at the non-striker's end, right-handed batter. Yes, we have seen him in the PSL as well. Yasir Khan is a very elegant player. Mohammad Amir Khan will start the proceedings. The right arm fast will start from the pavilion end. Okay, ji. Chale ji, ready please. So plays a call from the umpire. Right arm over, let's play. A slip is on. It's Mohammad Amir has got the brand new ball. Nice defensive push. Little bit of early in-swing there for Amir. Not too much, but he bowled the ball in the right area, looking to start it outside off stump and bring it back into the left-hander. So he'll be looking for a bold or an LBW here, early doors. He has to be careful. We can see some movement off the pitch early on. It's a brand new ball. So it's all about using it for a good effect. Certainly he will try something outside the off stump as slip is on. The team third man is being asked to go a little wider. That one he looked to hit the pitch a little bit harder, but still good start here by Amir. Both balls making the batter play. That's what you want from your opening bowler in the first 5 to 10 overs. You don't want them leaving balls or getting any loose ones. So he started well here. That's the aerial view that defines the field placement. It's a traditional field placement, deep square leg for the left-hander. So certainly he's a good puller, hooker, and the third man. Off the mark, Shamail Hussain, and PTV off the mark as well. Yeah, that was well played by Shamil. Soft hands, again in a really good area by Amir. Hitting his good areas here, making the batter play again, but nice soft hand, runs it down to third man, and PTV are off the mark
with their first run of this game and this crucial first semi-final of the President's Cup. Right and left in combination for PTV. Yasir Khan and Shamail both are naturally quite aggressive and also very good stroke player. Taking guard in the shifting the ranch in the ball's fashion. I don't know how the groundsman will feel about that. I wonder if they get upset by these divots. But yes, Chunder ball, you're absolutely right. He used to take the bail out and make his guard. Oh, nicely bowled, shaped away from the right-hander, well bowled. It's a beautiful start by Amir. He's adjusted his line instantly. It's not easy to adjust your line early doors when you're bowling to a left-hander from one end and then straight into the right-hander, but he hit great areas on off stump and he's beaten the outside edge. Yasir Khan did well. He just decided to withdraw his shot in the last instant, and sometimes you see the batsman gets the outside edge in that fashion. He was alert enough, so you need to respect to the bowler. Decent start from the bowler Mohammad Amir. 2 balls to go. Down the leg side runs, possibly a boundary, chases on, couple of fielders are after the ball, and ball wins the race, the first 4 of the semi-final. Yeah, save your legs on this outfield at National Bank Stadium, Karachi. Once it's through the infield, it's going to go all the way to the boundary for 4. He played that really late, allowed the ball to come into him, and worked it through that mid-wicket area beautifully well. First boundary of the match. PTV 5 without loss here in this first over. Very well played by Yasir Khan. He let the ball go outside the off stump. It's a dot ball, so 1 gone, 5 for none. Five for none. Decent start from PTV. Just 1 boundary they got. Yasir, who got the scoring opportunity on middle leg stump, just worked it over to the onside for 4 runs. A beautiful Karachi city, very busy. And now it's Arshadullah who is sharing the new ball. Left arm bowler from the far end. Always good to have a right arm seamer and a left arm seamer, I think. Keeps the batsman guessing early doors. Right on the money. Is well bowled and well played right behind the line, Shamil. Yeah, if I'm the captain right now, I'd be happy with the way the bowlers have started. They're making the batters play. They'll be looking to take early wickets here in this first 10 overs OGDCL. But PTV will be looking to play nice and tight, not give away any early wickets, and get a partnership building here. Such an important occasion for Shamil. He's the captain of the side, and he knows the condition of the pitch, and he needs to be careful. So far, he has shown some glimpse to show some intention to stay out there. Down the leg side, we have to wait for the umpire's signal. Yes, wide given. 1 extra now. First wide of the game for Arshadullah. We're looking to get back and hit his areas again in this second delivery. He's not getting as much shape as Amir was from the other end. Amir was getting quite a bit of in-swing and out-swing to the right-hander. So far, Arshadullah has not really found any swing as yet. Oh, well bowled. So close to the outside edge. He kept the batsman guessing. Arshadullah, beautifully bowled. Beautiful delivery. Asking that corridor of uncertainty, hitting a good area just outside off stump, making the batter play, and he's played and missed and lucky to not find the edge there. Yeah, he has been spot on so far. Beautifully bowled, so close to the outside edge, and that will encourage the bowling side captain to bring the second slip on.
Big shot. Goes down the ground over the leg side. It's got to be 6. We have to wait for the umpire's signal. Yes, up goes the arms. Lovely shot. Well picked up by Shamil Hussain. The first 6 of the semi-final. Beautiful shot from Shamil. Allowed the ball to come into his pads under his eye line, and he hit the ball right through the line. He didn't hold back in that shot. Gave it the kitchen sink all the way for 6. First maximum of this first semi-final of the President's Cup 2025. Lovely shot. He can afford to smile. And certainly he must have enjoyed that. Picked it up well. The scoring opportunity, and he may made most of it. Right off the middle of the bat, and that will make him feel better. So I hope the ball has been recovered. So hit that one pretty long, Qasim. Yeah, wonderful shot. Arshadullah has started a bit nervous here. He's bowled one good delivery so far. He's bowled a wide down the leg side. He's slanted into the pads as well. So he just needs to find a bit of consistency here. Look to start hitting his areas consistently and just keep asking the batter some questions. Perhaps maybe some early nerves as well in such a big fixture. It's a sign of a good batsman. He saw the opportunity and he made most of it straight away. Yes, came back well. Yeah, that's much better. Looking to just hit a good area, just back of a length, make the batter play. Batters played well. Both batters have started well. Very composed, I would say. And not looking to miss out on the bad delivery, which is key, I think, when you're opening the batting. Look to rotate the strike, play the ball on its merit, but whenever you're presented with an opportunity, look to take the bowlers on, which is what we've seen so far in this over. Bad delivery, way down the leg side. The second wide of the over. Yeah, yet again, we just complimented him for finding his area of the ball before, and then back down the leg side again with a wide. So a very inconsistent start here by Arshadullah. He needs to just settle down a little bit, find his composure. Maybe captain go and have a word with him, calm down, look to just hit your sets. PTV have ticked along nicely to 13 without loss at 1.4 overs. Just wanted to test the batsman with extra bounce, but he got it wrong. Imran Javed, the field umpire, one of the umpires officiating the semi-final. Nicely played. So it's back in the line. Arshadullah has got a long run up, and it's turning out to be a long over as well. Yeah, a couple of wides doesn't help the cause, Farouk. So he'll be looking to finish the last ball of the over. Tariq Rashid there, one of our on-field umpires. So dot ball to finish the over. 8 of it is 13 for none, PTV. What a beautiful view of National Bank Stadium, Karachi. Such a historical cricket stadium. One of the best, I would say, in world cricket. And the wicket is fantastic as well. I had a look at it this morning, Farouk. Wouldn't mind having a bat on that. Oh, there are some things for the bowlers as well. A lovely bird view. Yet again, consistent start here by Mohammad Amir. He's getting a bit of shape, but he's staying consistent with his lines and his length. He's making the batter play. That's exactly what you want as his captain. You want to make the batter play. You want to try and find an early edge here, get an early wicket, and get the new batsman to the crease. Runs half stop at the point region, and they should come back for 2. Yeah, the fielder got a hand to that, which prevented it from going all the way to the boundary. But again, Mohammad Amir with some swing there, which meant that the batter was not very convincing, Yasser, with that shot. It drives it half-heartedly. Wasn't a convincing shot, but nevertheless he got 2 runs. The effort was there. The hint of a half stop. So 2 runs taken.
Lovely bowling. Well left by Yasser as well. But Ahmed is certainly asking early questions here. He's definitely looking for the batter to drive so he can find that outside edge. I'm a bit surprised they maybe don't have a second slip in just now with the shape that he's getting. And also there is a significant gap between the keeper and the first slip. So there is a chance to ball go through between two men. Yet again, good consistency here. Mohamed Amir has started very well for his team. If I was a skipper right now, I would be strongly considering putting another catcher in there, because what you don't want is the batter finds the outside edge and it goes through second slip. Nothing worse than that. But at the moment, he's certainly getting shape, and this is the time for them to try and get some early wickets. Yasser seems to be very cautious. He's not making any contact, anything outside the off stump. Well bowled, beautifully bowled. Almost a wicket here. Wonderful bowling here from Mohamed Amir. Superb bowling. The batter cannot leave that. The ball is slanted. It's very hard to leave. And he's holding his line. He's not following it and still is beating the outside edge. Really, really good shapes here from Mohamed Amir. Oh, he just got away with that, Yasser. He was watchful. He was already paying respect to the bowler. But that was possibly the ball of the afternoon so far. Absolute peach of a delivery. Gone, dropped, oh dear. It was a certain chance. It's Master Takat as first slip. A straightforward chance. He dropped it and Yasser gets alive. Oh, I seen it coming. I had a feeling there was going to be an edge at some point. The bowler has found the edge, Mohamed Amir. He's done his job. But unfortunately for him, first slip has parried it. And we're 17 without loss here after 3 overs. Just seemed to hit his hands. Didn't manage to get the ball into the hands. Soft hands were needed in that instance, but the ball hit the hands before he could react, and it's gone straight through him. And that, how costly will that mischance be, Farouk? Yes, absolutely. It could be costly. Over number 4. Nicely timed. Yeah, Qasim, it was a big loss and a big miss, in fact, by Master Takat. But I think the technique of anticipating the catch with the palms pointing upwards, and it was a high catch near about his head high, and he could have gone with the Australian fashion to grab that. Perhaps, but I think the key to it all was that he didn't really use soft hands. He didn't give with the ball. His hands were very hard, and the ball struck the hands very hard, and then with a cricket ball, that's just going to parry out your hand. His technique was a little bit off. Soft hands were needed, but could be a costly miss, that one. The left and right hand combination with the bat, left arm and right arm combination with the ball. Arshadullah is into his second over. Going for the quick single. Yeah, good start to this over for PTV. Mid-on was a little bit on his heels, and they've scuddied through for a quick single. But better start by Arshadullah. He now has to adjust his line straight away, though, back to the left-hander, which is not easy to do. Let's have another look at it. Yeah, just struck the hands. There was no give. Let's have a better look from this angle. Can't really see that there, lost it. But yeah, just hard hands, very hard hands, and that was what cost him taking the catch. Going for the quick single again, and also Qasim, it could have hurt him as well. He's a proper batsman, and going in that fashion, obviously not recommended. Yeah, there's nothing worse than dropping a catch of an important batter of the opposition team. It could be a long day, 50 overs, if he goes on to make 100 here for his team, or a big score. OGDCL will be hoping that's not the case. It's got a feel for the bowler. He was so clinical. He was bowling really well outside the off stump. He created an opportunity, but didn't get any support from his fielder.
Outside the off stump, drive, square drives, runs coming up. Could be a boundary, chases on. And he pushed the ball back. A couple of runs have been taken. Yeah, good shot. Didn't try to hit it too hard. Allowed the ball to just come onto the bat. Just played with a bit of timing, not too much force. Got it through the infield. Couple of runs, well fielded. And a couple of runs added to the total for PTV. Now 22 without loss after 3.4 overs. Yasir is playing the square drive very well. He has been very watchful. So I think it's a clean save. He's driving the ball well. Anything over pitch outside the off stump. Drives well, straight to the fielder. Good looking shot for nothing. Yeah, good shot. Confidently played. Straight to the fielder. But he'll be happy with the timing there. Arshadullah will also be a bit happier with his line so far in this over. He's getting the batter to drive. That's what he'll be looking to aim to do, but he's not quite getting the swing that Amir is getting from the other end. That's quite right, and but Arshadullah needs something from his colleague, and anything outside the off stump with extra bounce can certainly tease Yasir. But he looks comfortable, anything over pitching. He's got such a long run up, Arshadullah. And single to end the over. Yasir will keep the strike. 23 for none. Who do you think will be happier of the teams at the moment? Farouk 23 without loss. PTV off the first 4 overs. Drop chance. OGDCL should have had their first wicket. Even Stevens at the moment. That's quite right. It's, they have been watchful at the bowling side. Will be slightly disappointed as far as the catch drop is concerned, but they have done their jobs well. Mohammad Amir especially, very impressive. Just like that, right on the money. Yeah, he continues to make the batter play, and he's still going to be looking for this edge. I come back to the point again. They've now found the edge. I would be strongly considering taking one of the fielders out from maybe extra, moving backward point round a little bit, bringing point to cover, and putting another slip in there. And also the empty space will encourage the batsman to go for the drive. Ooh, on the bounce this time. Strange shot from Yasir. Yeah, he's consistently finding the outside edge. So I wonder what the captain's thinking is here, of why he doesn't feel that they need a second catcher in. Certainly uncomfortable against Mohammad Amir. You can see nothing short from him. He just wants to get off the strike as quickly as possible. Shamil hasn't faced Mohammad Amir as much as Yasir has faced. That's well, wide given. The umpire is being on a stricter side there. That was a tight one, to say the least. But it's umpire's call. We don't question the umpire's decision. Oh, I think that was a tight one. Bit harsh on Mohammad Amir there. Yes, that is an interesting call. The Yasir left it, and maybe just about the tram line. The ball moved, shaped away after pitching. Third man is in position. Held the outside Asian. Certainly not intentional, but he's safe enough. Yeah, again, outside edge. That wasn't convincing whatsoever. Mohammad Amir has started superbly well. He should have a wicket already, but he's still running in for his team. He's not giving up hope. Still getting a bit of shape. It only takes a wicket or two here, and OGDCL would be on top, I think. A lot of work to be done for the fielders, left and right in combination. The slip is still on over the wicket for Shamil Hussain. Nice shot. That should be 2 at least. His deep square leg fielder is covering plenty of ground to his right. And
settled with 2 in the end. Yeah, good hands there by Shamil. Again, didn't try to hit it too hard, just allowed the ball to come onto him, worked it onto the onside, couple of runs through mid-wicket, keeping the board ticking for PTV. 27 without loss now, after 4.4 overs. We have a deep square leg fielder, but he hasn't tested Shamil with a short pitch stuff, with a bouncer so far. Width provided, straight to the fielder. So good over again. It is turning out to be from Mohammad Amir. Apart from wide, he has been spot on with his line and length. Yeah, really, really good. His captain won the toss, opted to bowl first. And Mohammad Amir is certainly delivering for him. He's continuing to work hard to try and get his team this first wicket. Extra bounce. We have to wait for the umpire's signal. So it's a legal ball. 5 gone. This 27 for none. PTV. Nice to see a bit of aggression at the end of that 5th over. Mohammad Amir coming in with a bouncer. I like a bit of chin music just to let the batter know that you're there. He's been looking to pitch it up, but very, very good bouncer, well directed. So OGDCL is still in search of a first wicket, as Arshadullah will continue from the far end. Oh, extra bounce, good carry. Yeah, the wicket's got a good bit of zip in it, a bit of bounce as well. So there's certainly something in it for the bowlers. But PTV will be looking to continue building here so they can keep wickets in hand for the back end of their innings. Their openers are doing a good job for them, but they certainly haven't got away from OGDCL here. Interesting game so far. In the air and straight to the third man. The catcher was a cry. It was uppish, not convincing though. Arshadullah has certainly settled down now after his first over where he sprayed the ball around a little bit. He's found his consistency now, and that's good areas he's bowling, inviting the batter to drive, and he's edged it down to third man for a single. So he's asking questions as well now from the other end, and he'll be hoping to try and find an outside edge here for his team. Shamil 11 off 14 and Yasser 14 off 18 here for PTV. Big shot. There's a leading edge. It's gonna be out. Should be taken. Gone. First wicket falls, a big one. The captain Shamil Hussain departs. Well bowled and well deserved, Arshadullah. Shamil didn't quite pick that length up as quickly as he would have liked, and it's gone straight up in the air, and the man at short 45 has taken a pretty easy catch, and that's the first wicket for OGDCL. They're having a look here, but that's all good. Plenty of that heel behind the front line. Again, top edge, man at 45 takes a nice, easy, straightforward catch. So Shamil is dejected with himself. He goes for 11. 28 for 1, PTV. Shamil Hussain went for 11 off 15 there. Caught Sarwar, bowled Arshadullah. Sarwar Afridi, who picked up a catch, a high catch, pressure catch, and Shamil Hussain mishit that one,
And now that brings the new batsman, Mohammad Mohsin, the right-hand batsman. And Arshadullah bowled quite beautifully, extra bounce, a tall fast bowler, and he did it exactly what his captain wanted. 1 for 15 to his bowling figures. Arshadullah's got his tail up here now. He's bowled well this over and the previous over. And he'll be looking to make Mohsin play on this first delivery. He's got one slip and a sort of third slip in play. Right behind the line. So they are applying the pressure. The first slip is, has been joined by the fourth or fifth slip. Still there is a gap between both of them. And that is how the Shamil Hussain got out. Extra bounce, wanted to smash it out of the park, leading edge. And the fielder, Sarwar Afridi, was nice and calm. Yeah, he set himself well under that, Sarwar Afridi, and took it very calmly for his team to get their first wicket of this crucial first semi-final match. Yeah, it was a well-directed bouncer from Arshadullah. Well bowled and well left. Good channel. Impressive bowling in this over by Arshadullah. Lovely lines. Good length as well. Batter leaving the ball well, but any attempt to try and play at that will bring those catchers into play at first and third slip. Really good over this by Arshadullah. He'll be hoping to finish well with the last ball of this sixth over. Mohammad Mohsin was very watchful and let the ball go. He knows there is a slip cordon in place. Oh, runs. Third man has been challenged. Good work. And he's off the mark, Mohammad Mohsin. And he will keep the strike as well. It's 29 for 1 after 6. So slight delay in the start of this seventh over. Man down. He's holding his shin. I wonder what's happened there. What a view that is. National Bank Stadium, Karachi. It doesn't get much better than that. Many legends of the game have graced the turf here. It's a really magnificent shot of the stadium. And Karachi backdrop in the background as well. Can't really see the traffic at the moment, Farouk, but I'm sure there's plenty of it somewhere in there. It's definitely one of the areas I find interesting in Karachi. You spend a lot of time in the traffic. So one fielder is walking off the field. He was struggling with his knee. I wonder what happened there. We didn't really catch it. Was perhaps the fielder at third man? He came running round. Maybe has just tweaked something. 5 minutes with the physio, maybe. Some of the magic cream. We might see him back on the field, Farouk. Yeah, so deep third man fielder. He had to put the dive to his left. The ball was really traveling for the boundary, but the landing maybe wasn't proper and he hurt himself. I hope he will get back to the field very quickly. This is how he. Oh, I think the ball hit the boot. I think it was his left. I think it was his left leg, yeah. As he came up, he limped on that as well. He seemed to just go over it a little bit. But he's standing fairly comfortably and he's moving, which is a good sign that it's not maybe as bad as it could have been. He needs a magic spray for sure.
And Mohammad Mohsin has to show some magic against Mohammad Amir. Well worked round the corner. Adds a single to the PTV tally. Mohsin, 2 singles now to his name. 30 for 1 here, PTV, of 6.1 overs. And Yasir has to take some charge, and he has spent a lot of deliveries. Some cricket scorers are busy, along with Masher Freed and the third umpire as well. Well bowled, very well bowled. Mohammad Amir has been so clinical in his areas. I've been very impressed with him, Farouk. Literally from ball 1 of the game, he started to the left-hander. He started the ball outside off stump. He was swinging it back into that off stump. As soon as the right-hander came on to strike, he adjusted his line straight away and was asking questions there as well. He found the edge, should have been taken at first slip, drop catch, but he's bowled thoroughly well and with great consistency. Drives straight to the fielder. Yes, he has dried up the boundaries, that's for sure. And he hasn't got the express pace, but he is so disciplined and using a brand new ball for good effect. Yeah, he's delivered for his captain so far. He's 0 for 14 off 3.3 overs. Really good opening spell of fast bowling. And now it's got the extra slip as well, the wide slip or floating slip position for Mohammad Amir. We saw the same slip caught in the previous over of Arshadullah, and quite rightly so, because he has troubled Yasir on quite a few occasions. Just one of the overs so far. Terrific stuff. Oh, almost chopped it on. Almost chopped it on. Not the right way to handle that. Little bit extra bounce. Yasir Khan got away with that. Yasir Khan is living a little bit dangerously. He's already been dropped, and that just hurried onto him, and he almost chopped it back onto his own stumps, but luck was on his side. Yes, you need a piece of luck if you are facing Mohammad Amir. A little bit extra bounce, and somehow the ball stayed away from the stumps. Nick and gone. What a good catch. Terrific catch that is. Mohammad Amir struck, and finally the Yasir has been removed from the centre. It's Ruhail who has picked up a blinder to his right. Well deserved, very, very well deserved, Mohammad Amir. From ball 1 today, he has started consistently well. He's been getting shape throughout, and that's a beautiful bit of bowling, but what a wonderful catch. Let's have another look at that. Foot is well behind the line, no issues there. Crucial wicket this. PTV go to 30 for 2 now. Mohammad Amir 1 for 14. So is it a clean catch, Qasim? I think he has carried it quite perfectly, but the on-field umpire needs confirmation from the third umpire. Better to be safe than sorry. I think it's always better to just check, just in case you go off the field later on and the naked eye has not seen it as well as you think you've seen it, so they just want to double check it. Even the batsman has almost left the ground. No problem with the front foot landing. What a great catch. Clean as a whistle. No issue with that. The umpire can raise his finger, and with that we will have a change in the commentary box with PTV at 30 for 2 off 7 overs. We will have the excellent Zishan Khalid and former Test cricketer of Pakistan, Khurram Manzoor, joining you now.
बहुत बहुत शुक्रिया कासिम और फर्रुख। एक अच्छा आगाज़ आज OGDCL का PTV के खिलाफ। याद रहे ये पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है प्रेसिडेंट्स कप वनडे टूर्नामेंट का। 2 विकेट्स गंवा चुके हैं सुलेमान, नए आने वाले बैटर हैं। लाड़काना सिंह का ताल्लुक शानदार फॉर्म में लगे हैं। पिछले ही मैच में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ शानदार सेंचुरी स्कोर करके इस बात को यकीनी बनाया था कि PTV वो मैच अपने नाम करने में कामयाब रहे। ऑसम की काफ़ी भार गेंद जिसको जाने दिया विकेट कीपर के पास। एक शानदार आगाज़ अब तक OGDCL का। 2 विकेट्स लेने में कामयाब हुए हैं। पहले शामिल हुसैन को पवेलियन की राह दिखाई और इस अंदाज से एक शानदार कैच लिया आज रुहेल नज़ीर ने। अपने दाएं जानिब डाइव किया और इस बात को यकीनी बनाया कि एक क्लीन कैच रहे। ऑल्दो हमने देखा कि अंपायर ने इसको रेफर ज़रूर किया, लेकिन एक अच्छा आगाज़ और आमिर खान डिज़र्व भी करते थे ऐसी विकेट। दिफाई अंदाज से खेले, लेना चाहते ज़रूर थे सुलेमान, लेकिन इनको इनकार किया। मेरे साथ कॉम बॉक्स में मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर, जिन्होंने काफ़ी हद तक रन्स बनाए हैं। अगर हम नेशनल बैंक स्टेडियम का जिक्र करें, और खुर्रम कैसे देख रहे हैं आज की पिच और अब तक के इस आगाज़ को? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा और एक सेंसिबल स्टार्ट लेने की कोशिश की थी PTV ने। अनफॉर्चुनेट दोनों जो सेट हुए थे वो आउट हो गए और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कैच ड्रॉप हुआ था और उसका फ़ायदा ना उठा सके यासिर, और आमिर को क्रेडिट देना पड़ेगा जिस लाइन को वो हिट कर रहे थे मुस्तकिल, और उनको कामयाबी हुई। ऑस्ट्रम के बाहर थी गेंद जिसको खेला पॉइंट की जानिब और काफ़ी हद तक सुकून का सांस लिया होगा मां सदाकत ने, जो वो फील्डर थे जिन्होंने पहली स्लिप पे कैच ड्रॉप किया था यासिर खान का। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कंसिस्टेंटली ऑस्ट्रम के बाहर गेंदें करते रहे, पढ़ने के बाद उनको मूवमेंट भी मिली और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। और यासिर खान एक बार फिर आज हमने देखा इतना बड़ा स्कोर ना खड़ा कर सके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यासिर जिस तरह की एक उनके बारे में मशहूर है कि थोड़े बड़े शॉट्स खेलते हैं और दिखे भी हैं जिस तरह PSL में उन्होंने खेला है, तो ऐसा कुछ लगा कि वो शेल में है। इस दौरान ड्राइव करना चाहते थे लेकिन एक्स्ट्रा बाउंस यहाँ हासिल हुआ अरशदुल्ला को। और यही उमूमन हम देखते हैं कि जब बॉलर एक विकेट हासिल कर ले तो उनके एतमाद मजीद बहाल हो जाता है और वो अटैकिंग लाइन एंड लेंथ से गेंदबाजी करते हैं। कुछ ऐसा ही करते हुए नज़र आ रहे हैं दोनों ही एंड पे, आमिर या अरशदुल्ला। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर मुझे ऐसा लगा कि आमिर जो है पहले ओवर से पहली बॉल से थोड़ा सा बॉल को हैमर कर रहे थे जिससे उनको मूवमेंट में मदद मिल रही थी, और उसी के मुकाबले में अगर आप अरशदुल्ला को देखें थोड़ा सा उन्होंने जज किया कि बॉल को मारना पड़ेगा, हैमर करना पड़ेगा ताकि बॉल की मूवमेंट आपके फेवर में जाए। एक कदम आगे आए थे, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोका और इस बात को यकीनी बनाया कि रन यहाँ हासिल ना कर सके। एक और शानदार ओवर अब तक अरशदुल्ला का। अब तक कोई रन बैट से ना हासिल हो सका है इस ओवर में खुर्रम। देखा जाए तो डॉट बॉल जो है बैट्समैन को प्रेशर डालती है और वही कर रहे हैं अरशदुल्ला। कंसिस्टेंट डॉट बॉल कराने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे एरिया को हिट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर एक विकेट और ले लेती है OGDC तो वो उनका जो टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला है वो काफ़ी सूदमंद शामिल होगा। मगर वही वाली बात है कि अगर पार्टनरशिप में करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आमिर जिस तरह बॉलिंग कर रहे थे, ऑस्ट्रम के बाहर गेंद, शानदार ड्राइव, दिलकश ड्राइव देखने को मिला मोहसिन की जानिब से। गैप तलाश किया एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के दरमियान और इनिंग्स की पहली अपनी बाउंड्री हासिल की। बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत शॉट था और बड़ा कंट्रोल था। और सुलेमान के बारे में थोड़ा सा ये कह लें कि अभी शाहीन से गए थे, उन्होंने वहाँ पे भी अच्छे परफॉर्म किया था। और ये देखा आपने कितना खूबसूरत शॉट खेला है बिटवीन द एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ, और थ्रू द लाइन बॉल बहुत अच्छा खेला उन्होंने। और जहाँ तक कहा जाए कि इस टाइम एक प्रेशर को थोड़ा सा ब्रेक करने की ज़रूरत है, वो बाउंड्री ही करती है। 8 ओवर्स यहाँ मुकम्मल, PTV 34, 2 विकेट्स के नुकसान पे। तारीखी नेशनल बैंक स्टेडियम। और खुर्रम आपकी तो काफ़ी हद तक यादें वाबस्ता होंगी, आपने टेस्ट करियर का आगाज़ भी इसी ग्राउंड से किया था। जी बिल्कुल, मेरा टेस्ट डेब्यू अगेंस्ट श्रीलंका इधर ही था और बड़ी आदतें हैं और सेंचुरीज़ की सूरत में, विक्ट्रीज़ की सूरत में बड़े बड़े मेगा इवेंट्स यहाँ पे हमने जीते हैं। तो
अच्छा लग रहा है कि आज बाहर से बैठ के कवर करते हुए। शॉर्ट पिच गेंद और इसको चकते हुए खेले सुलेमान बॉलर की जानिब। काफ़ी अच्छी फॉर्म में है सुलेमान, और पिछले मैच में जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि स्टेट बैंक एक ऐसा एक मस्ट विन मुकाबला था पीटीवी के लिए, और एक बार फिर हमने देखा था इनकी टीम मुश्किलात से दो चार थी जब जल्दी विकेट्स गंवा दिए थे, लेकिन वहाँ आए इन्होंने टाइम लिया और हमने देखा कि नाकाबिल शिकस्त 117 रन की इनिंग्स खेली थी। कुछ इसी अंदाज की इनिंग्स आज भी दरकार है पीटीवी को। जी बिल्कुल, सुलेमान का एज ए बैकबोन रोल पीटीवी की तरफ से लगता है और कहीं ना कहीं उन्होंने दिखाया भी करके। स्क्वायर ऑन हो गए थे, अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं आमिर। कोशिश कर रहे हैं कि विद इन द लाइन ऑफ द स्टंप्स गेंद करें ताकि पैड्स और स्टंप्स को गेम में लेके आ सकें। जी उनकी कोशिश यही है कि ज़्यादातर बॉलें उन्होंने उस एरिया में किए जहां बैट्समैन बैट से खेलने की कोशिश करे, वहीं गलती के चांसेस होते हैं कि कोई बॉल स्लिप पे चली गई या मिस हो गई, और इसी गलती का इंतज़ार कर रहे हैं आमिर, और आमिर को क्रेडिट देना पड़ेगा। 4.2 बॉलें की हैं और 14 रन दे के एक आउट किया है। बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, डिसिप्लिन है, और जो इनकी जो सरप्राइज़ है स्पेशली बाउंसर, क्योंकि ऑलमोस्ट 140-145 बिटवीन बॉल करते हैं ये। दिफाई अंदाज से इनको खेला ऑफ साइड की जानिब। जी खुरम बिल्कुल सही फरमाया आपने, ऑल्दो इतना लगता नहीं लेकिन काफ़ी तेज़ रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। हाई आर्म एक्शन है, गेंद को पिच पे लाके पटकते हैं और दोनों ही तरफ गेंद को हिला सकते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और इनके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं कि इनके एक्शन को लेके कोई काम एक्शन है तो बैट्समैन अक्सर बेशतर जो है वो डिसीव हो जाता है, रीड नहीं कर पाता है। हमारे जो पास्ट में भी रहे हैं एजाज चीमा, उनका भी कुछ इस तरह ही कोई काम एक्शन था, तो ऐसे बॉलर को मुश्किल होती है रीड करने में। मुकम्मल तौर पर रिस्पेक्ट देते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे सुलेमान आमिर को। उमूमन हमने देखा है कि न्यू बॉल नई गेंद के साथ 5 ओवर का स्पेल कराया जाता है फास्ट बॉलर्स को, लेकिन आज ऐसा मालूम होता है कि शायद यहाँ पे एक्स्ट्रा एक आधा ओवर और दिया जाए अरशद या आमिर को, जिस अंदाज से दबाव बरकरार रखा है दोनों ही बैटर्स पे। जी बिल्कुल, मुझे भी कप्तान की स्ट्रेटजी भी कुछ ऐसी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 से 2 विकेटें और अगर ले लेते हैं तो इनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, ख़ास तौर जब स्पिनर्स आएंगे तो उस इनिंग को बिल्ड करने के लिए दोबारा से स्टार्ट लेना पड़ता है बैट्समैन को, तो जब अगर सेट हुआ होगा तो मुश्किल होती है। तो एक अच्छा बाउंसर, इसको डक किया और जाने दिया रोहिल नज़ीर के पास। शानदार गेंदबाजी जारी। अभी OGDCL की टीम का खास तौर पे जिक्र करें, प्रेसिडेंट्स कप वनडे टूर्नामेंट का सेमीफाइनल जो आज नेशनल बैंक स्टेडियम में खेला जा रहा है। पीटीवी मध्य मुकाबिल है OGDCL के। याद रहे OGDCL ने आज टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और अब तक की शानदार कारकर्दगी रही है OGDCL के। अनबीटन रहे हैं 7 के 7 मैचेस में, जबकि पीटीवी का जिक्र करें तो एक ऐसा मौका आया था तो ऐसा लग रहा था कि शायद रसाई हासिल ना कर सके सेमीफाइनल तक, लेकिन अपने बैक टू बैक 2 मैचेस जीत के इस बात को यकीनी बनाया कि वो आज OGDCL से मध्य मुकाबिल है। एक बार फिर आमिर ने अच्छी लाइन और लेंथ को हिट किया और अच्छा ओवर फिनिश किया है। 5 ओवर में 14 रन 1 विकेट उन्होंने हासिल किए। 34 रन अब तक बने हैं इन 9 ओवर्स में। पीटीवी जो चौथी पोजीशन पे फिनिश किया आज मध्य मुकाबिल है 47 पॉइंट्स के साथ, जबकि कल हम देखेंगे कि KRL का मुकाबला होगा SNGPL के खिलाफ। दोनों ही ऐसी टीम जिसमें नामवर खिलाड़ी मौजूद हैं और एक कांटेदार मुकाबले आज भी मुतवक्के और कल भी, जब KRL मध्य मुकाबिल होगी SNGPL के। कुछ किस्मत ने साथ नहीं दिया। अगर साइड एसोसिएट्स गनी क्लास का भी जिक्र करें, अच्छी क्रिकेट उन्होंने भी खेली, अपने अहम कीमती मैचेस जीते। देखा जाए तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट क्रिकेट बहुत अच्छी हेल्दी क्रिकेट देखने को मिली और प्लेयर्स ने बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया, परफॉर्म किया, और इन दी एंड वही बात है कि थोड़ा सा लक जिस टीम के फेवर में चल जाए तो उसको एडवांटेज मिल जाता है। ऑस्टम के बाहर गेंद ड्राइव किया, थर्ड मैन के पास मौका जरूर है गेंद को रोकने का। अपने दाएं जानिब दौड़ लगाई, दानिश अजीज ने स्लाइड किया और इस बात को यकीनी बनाया कि सिर्फ एक ही रन हासिल हो सके। जी फील्डिंग की तारीफ करनी पड़ेगी, सिवाय उस कैच के जो मास सदाकत से ड्रॉप हुआ था। वो एक्चुअली मुझे ऐसा लगा वो रिवर्स कप कैच होना चाहिए था, थोड़ा सा उनको लेट जज हुआ, जिसकी वजह से खैर अगर आपने देखा हो सेलिब्रेशन में सबसे ज़्यादा मास सदाकत ही खुश हो रहे थे कि जिसका कैच मुझसे ड्रॉप हुआ था वो आउट हो गया। यासिर एज अ फील्डर आप कोशिश करते हैं कि अगर आप कैच ड्रॉप करें तो उसके बाद हम मज़ीद कंट्रीब्यूट करना चाहें,
और यही हुआ था। ये वो फील्डिंग एफर्ट दानिश अजीज़ का, अपने दाएं जानिब स्लाइड की और तो बाएं हाथ से थ्रो करते हैं, लेकिन इस बात को यकीनी बनाया कि मौका ना दिया जाए बैटर को अपना दूसरा रन मुकम्मल करने का। और आप उस कैच ड्रॉप का जिक्र कर रहे थे। उमूमन हम देखते हैं कि पहली स्लिप पे फील्डर जब बैटर ड्राइव की तरफ जाता है तो वो तैयार रहते हैं। ख़ास तौर पर इस शॉट पे यासिर लीव करना चाह रहे थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लेट रिएक्ट भी किया था माज ने। एक और शानदार ड्राइव, गैप तलाश किया, कोई मौका नहीं फील्डर्स के लिए। 4 रन हासिल करेंगे यहाँ सुलेमान। बहुत ही खूबसूरत शॉट, फुली कंट्रोल शॉट था और मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा इस ओवर को फोर्सली करवाया गया अरशद की जो बॉडी लैंग्वेज है, क्योंकि वो एनर्जी नहीं दिख रही इस ओवर की। जो पहली बॉल थी वो भी देखें, ला के उन्होंने सिर्फ बॉल को फेंका था। तो अगर बॉलर ला के हैमर नहीं करेगा ख़ास तौर इस पिच पे, तो ये देखा आपने, बड़ा खूबसूरत शॉट, फुली कंट्रोल्ड, बहुत ही खूबसूरत एग्जीक्यूशन। और सुलेमान वो प्लेयर हैं जिन्होंने लास्ट मैच में सेंचुरी की थी, तो इनका आउट होना OGDC के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छी लेंथ पे गेंद की अरशदुल्ला ने, इसको बैकवर्ड पे जाके दिफाई अंदाज से खेला। या बिल्कुल सही कह रहे हैं खुर्रम, ऐसा लग रहा है कि शायद अरशदुल्ला अब वो उस वेनम से गेंदबाजी नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। उमूमन काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि गर्म मौसम है। उमूमन हम साल के इस वक्त इतना गर्म मौसम कराची में देखते नहीं, लेकिन आज काफ़ी गर्म मौसम, और कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर्स को इस बात को यकीनी बनाना होगा कि अपनी स्ट्रेंथ को प्रिजर्व करके रखें। लेकिन ये वो मैचेस होते हैं कि जिसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाना पड़ता है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। इस दौरान अच्छी गेंद, खुशकिस्मत रहे यहाँ पे सुलेमान के, गेंद काफ़ी देर हवा में ना रही, वरना मौका था क्योंकि स्लिप कॉर्डन पे फील्डर काफ़ी मौजूद थे कैच की ताक़ुब में। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगा जो सरप्राइज पैकेज होता है एक बॉलर का, बाउंसर, और सुलेमान जो है वो लेंथ बॉल को एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ये देखा आपने शॉर्ट बॉल, बहुत ही वेल डायरेक्टेड बाउंसर थी और जिसको थोड़ा सा मिसरीड किया, और ये उनके लिए फ़ायदा रहा कि कैच नहीं हुए वो। तो सुलेमान के लिए अगर हम बात करें, जिस तरह की उन्होंने लास्ट मैच में सेंचुरी की अपनी टीम के लिए बेहतरीन, उनका इस टाइम पूरे ओवर्स का खेलना एटलीस्ट ज़रूरी है। एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद कट करना चाहते ज़रूर थे, लेकिन अंदरूनी किनारे को लेती हुई गेंद पहुंची रोहिल नज़ीर के पास। रोहिल नज़ीर की अगर हम बात करें, रोहिल नज़ीर ने जिस तरह का कैच किया है, वेरी गुड कैच, लो था, और उनके अगर आपने देखा होगा राइट साइड पे था और वो अप राइट नहीं हुए थे, ये इसी वजह से कैच जो है वो पिक हुआ। और रोहिल नज़ीर की फॉर्म भी बड़ी अच्छी है, उन्होंने डबल 100 भी किया था अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो अच्छे टच में है, और देखा जाए तो इस टाइम इनको ज़रूरत भी इस तरह की परफॉर्मेंस की। पीछे गिरी हुई गेंद, यहाँ पे पहला रन लेना ज़रूर चाहते थे लेकिन इनकार किया, और एक बार फिर डॉट बॉल के साथ किया ओवर का इख्तिताम। तो 10 ओवर्स यहाँ हुए मुकम्मल, PTV पहुंची 40, 2 विकेट्स के नुकसान पे। पहले पावर प्ले का हुआ इख्तिताम, 10 ओवर्स में PTV ने बनाए 40 रन, 2 विकेट्स का नुकसान उठाया। हमने देखा दोनों ही ओपनर्स की विकेट लेने में कामयाब हुए, नई गेंद से गेंद करने वाले अरशदुल्ला और आमिर, और एक्सटेंडेड स्पेल दिया गया है आमिर को। कैप्टन चांस ले रहे हैं कि शायद यहाँ पे एक विकेट और अगर आमिर जाते जाते इसी स्पेल में ले जाएं तो टीम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अच्छी लेंथ पे गेंद की, जिसको एक बार फिर दिफाई अंदाज से खेला सुलेमान ने। सबसे अच्छी चीज़ जो देखने में आ रही है आमिर की, कि फुली कंट्रोल बॉल कर रहे हैं, विद इन स्टम्प बॉल कर रहे हैं, हार्ड लेंथ को हिट कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं बैट्समैन गलती करे, प्रेशर में आके कोई अननेसेसरी शॉट मारे जिससे टीम को फ़ायदा हो। और आपने देखा है कि ये इनका छठा ओवर है कंसेक्यूटिव, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, मगर टीम के लिए ये सेमीफाइनल का मुकाम है, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है प्लेयर को। लेग स्टंप पे गिरी हुई गेंद, जिसको खेलने में कामयाब हुए मिड विकेट की जानिब। वेकेंट मिड विकेट रीजन था, दौड़ के बाद सानी 1 रन हासिल किया सुलेमान ने, वो पहुंचे 6 पे, जबकि PTV पहुंचा 41 पे, 2 विकेट्स का अब तक नुकसान उठाया है। याद रहे आज OGDCL ने पहले टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला किया, और
और एक कॉन्फिडेंट आगाज़ नज़र आ रहा था जब हमने देखा यासिर खान ने एक बाउंड्री हासिल की, शामिल हुसैन ने इनिंग्स का पहला छक्का लगाया, लेकिन उसके बाद एक शॉर्ट पिच गेंद की पुल करना चाहते थे और बाउंसर अटेम्प्ट की, खड़े खड़े इसको खेलने गए, ना फ्रंट फुट पे नज़र आए ना बैक फुट पे नज़र आए। गैप तलाश करना चाहते ज़रूर थे यहाँ पे, लेकिन टाइम ना कर सके। ये पहली विकेट जब शामिल हुसैन पुल करने गए और उसके बाद हमने देखा एक अच्छा और शानदार कैच रोहेल नज़ीर ने विकेट के पीछे लिया और उसके बाद आने वाले दो नए बैटर ने ऑफ साइड पे एक बाउंड्री हासिल करके अपना खाता खोला। तो एक मोहतात आगाज़, लेकिन अच्छा आगाज़ कहलाया जाएगा OGDCL का। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। और देखा जाए अभी इनको चाहिए कि विकेट ना थ्रो करें। एक और अच्छी बॉल, दिफाई अंदाज, वो यही उनकी दोनों बैट्समैनों की यही कोशिश दिख रही है कि किसी तरह ये जो एक आमिर का स्पेल है, उनको भी ये आइडिया है कि ये मेरे ख्याल से आखिरी ओवर कर रहे होंगे कप्तान की थोड़ा फोर्स करने पे, और अगर इनका ये ओवर अगर ये सी ऑफ कर जाते हैं विदाउट विकेट तो ये इनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि एंड में इस तरह का बॉलर डेंजरस होता है। तो इनकी भी यही कोशिश होगी, पार्टनरशिप्स लगे। मगर एक चीज़ आप देख रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है स्ट्राइक की रोटेशन, जिसकी वजह से डॉट बॉल इनके ऊपर प्रेशर डेवलप कर रही है। तो शुरू के जो दोनों ओपनर्स थे उनकी भी यही थोड़ी सी मिस्टेक लगी थी। इस दौरान पीछे गिरी हुई गेंद पुल करने में कामयाब हुए, कोई मौका नहीं स्क्वायर लेग के पास। शानदार टाइमिंग का मुजाहरा मोहसिन की जानिब से, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की जानिब बाउंड्री समेटी। गुड शॉट, बहुत ही फुली कंट्रोल शॉट था और उन्होंने ये देखा हुआ था कि डीप स्क्वायर लेग पे एक फील्डर लिया हुआ है आमिर ने, और ये देखें आप, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा बैलेंस था, फुल कंट्रोलेड था। और मुझे ऐसा लगता है मोहसिन जो है अब थोड़ा सा उन्होंने सोचा कि बाउंड्रीज़ को देखा जाए, क्योंकि हर डॉट बॉल जो है वो प्रेशर डेवलप कर रही है। तो मोहसिन ने सोचा कि क्यों ना एक आध बाउंड्री मार के इस प्रेशर को रिलीज़ किया जाए। इस दौरान कदमों का इस्तेमाल किया, फ्लैट बैट खेले, लेकिन टाइम ना कर सके। मिड ऑन पे मौजूद थे दानिश अजीज, जिन्होंने गेंद को रोका। तो एग्रेसिव इंटेंट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं सुलेमान। डॉट बॉल के साथ हुआ ओवर का इख्तिताम। 11 के बाद PTV 45, 2 विकेट्स के नुकसान पे। काफ़ी हद तक बॉलिंग ऑप्शंस आज मौजूद हैं OGDCL के पास। अगर हम स्पिन अटैक में जिक्र करें तो आदिल अमीन ने शानदार गेंदबाजी की है, जो कप्तान भी हैं, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि अब तक जिस अंदाज से असिस्टेंस मिली है पिच पे दोनों ही बॉलर्स को, चाहे हम अरशदुल्ला का जिक्र करें या आमिर का जिक्र करें, उन्होंने फैसला किया है कि इमरान रंधावा को अब गेंदबाजी दी जाए। अच्छे ऑलराउंडर कंसिडर किए जाते हैं इमरान रंधावा, और अच्छी रफ्तार से भी गेंदबाजी करते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और वनडे में काफ़ी यूज़फुल हैं, T20 में काफ़ी यूज़फुल प्लेयर हैं, और सरप्राइज़ पैकेज है। फील्डर भी बड़े ज़बरदस्त हैं, बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं, और देखते हैं कि आज के दिन का कैसा अहम रोल है ये। पहली गेंद पे कदमों का इस्तेमाल ज़रूर किया था सुलेमान ने, लेकिन ऑफ साइड पे मौजूद थे इमामुल हक, जिन्होंने गेंद को रोका। कुछ हद तक अब कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं सुलेमान और मोहसिन। हमने देखा पिछले ओवर में एक बाउंड्री भी समेटी और इस दौरान कदमों का इस्तेमाल भी किया था। याद रहे पॉइंट सिस्टम्स का अगर हम जिक्र करें, अगर आप जीत हासिल करते हैं ड्यूरिंग द राउंड स्टेजेस, जब टीम्स मध्य मुकाबिल थी एक दूसरे के, स्क्वायर की जानिब खेले, फील्डर मौजूद ज़रूर थे, मिस फील्ड हुई आसिफ की जानिब से। यहाँ मौका है दूसरा रन हासिल करने का, स्लॉपी फील्डिंग कही जाएगी आसिफ आफरीदी की जानिब से। यही फील्डिंग का जो एटीट्यूड होता है, बैट्समैन प्रेशर में है, उसकी स्ट्राइक रोटेट हो नहीं रही है और आपकी मिस फील्डिंग। एक्चुअली तो ये सिंगल भी नहीं था अगर ये फर्स्ट टाइम में अटैक करते। आपने देखा बैट्समैन ने ग्लाइड किया और ये थोड़ा सा लेजी आए थे, जिसकी वजह से सिंगल रन बना, फिर फंबल हुआ और साथ ही 2 रन हो गए। बैट्समैन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है अगर स्ट्राइक रोटेट हो, तो ये फील्डर को इस तरह ख्याल करना चाहिए। या जिस अंदाज से गेंद की तरफ आए थे, अगर पहली अटेम्प्ट में गेंद को गैदर कर लेते तो मौका ज़रूर होता रनआउट का, खास तौर पे विकेट कीपर्स एंड पे। और ये वो पॉइंट सिस्टम जिसका हम जिक्र कर रहे थे, अगर आप
जीत हासिल करते हैं तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर मैच टाई होता है तो 5 पॉइंट्स दिए जाते हैं दोनों ही टीम्स को, और अगर 1 रन पर ओवर की डिफरेंस से आप जीते हैं तो आपको 1 पॉइंट दिया जाता है, जबकि 2 रन पर ओवर की डिफरेंस से जीते हैं तो 2, और उसके साथ साथ अगर बढ़ता जाता है तो 3 पॉइंट्स आपको मिलते हैं। एक और अच्छी बॉल, मगर लीजी फील्डिंग की वजह से स्ट्राइक रोटेट होते हुए अब आहिस्ता आहिस्ता सलमान जो है स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, प्रेशर को कोशिश कर रहे हैं रिलीज़ करें। और यहाँ फील्डिंग जो यूनिट है उनका काम है कि डॉट बॉल अगर नहीं हो रहा तो रन आउट में एटलीस्ट, ये सिंगल बनता नहीं था मगर अच्छी रनिंग, अच्छी आई कांटेक्ट कॉल थी ये रनिंग की। तो सलमान और मोहसिन इस टाइम कोशिश कर रहे हैं स्ट्राइक को रोटेट करें, क्योंकि 11.4 बॉलें हो गई हैं, 48 रन है। तो उनकी कोशिश होगी थोड़ा सा स्ट्राइक को रोटेट करें, जहां बैट बॉल मिले बाउंड्री में कन्वर्ट करें। फिर सॉफ्ट हैंड से खेला लेकिन अपने दाएं जाने मूव होते हुए गेंद को रोका फॉलो थ्रू में इमरान रंधावा ने। उमूमन हमने थ्रू आउट दी राउंड मैचेस भी देखा कि बैटर्स ने जब बाउंड्रीज हासिल की उसके अलावा स्ट्राइक रोटेशन पे इतना इन्हिसार नहीं किया, खासतौर पे पावर प्ले में। लेकिन अब क्योंकि पावर प्ले का अख्ताम हो चुका है और आप 4 फील्डर्स दायरे के बाहर लेते हैं, आपके पास गैप भी होते हैं, तो आप सिंगल्स की तलाश में रहते हैं। तो यही सोचते हुए फील्डिंग साइड को भी इस बात को यकीनी बनाना होगा कि यहाँ बैटर जब भी कोशिश करें कि गैप तलाश करें वहाँ पे रन्स रोके जाएं। यहाँ देखें डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौजूद, जबकि मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर और पॉइंट दायरे के अंदर। और लेग साइड पे देखें तो काफ़ी बड़ी स्पेसेस आपको नज़र आती हैं कि मिड ऑन दायरे के अंदर हैं और मिड विकेट भी दायरे के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट टाइम पे गिरी हुई गेंद, इसको फ्लिक किया डीप स्क्वायर लेग की जानिब। फील्डर वहाँ से आएंगे गेंद को रोकने के लिए। तो 4 रन हासिल हुए इमरान रंधावा के पहले ओवर में। 12 के बाद पीटीवी पहुंचा 48, 2 विकेट्स के नुकसान पे। Left arm down. बॉलिंग में चेंज, आसिफ आफरीदी। और आसिफ आफरीदी जो है स्पेशलिस्ट वाइट बॉल में काउंट होते हैं। बड़ा ही अच्छा स्टार्ट आसिफ आफरीदी का। विद इन स्टंप बॉल करते हुए सलमान ने कट बैक फुट के बीच में खेलना चाहा मगर इतना आसान नहीं था। काफ़ी तजुर्बा है आसिफ आफरीदी के पास, चाहे हम रेड बॉल का जिक्र करें या वाइट बॉल का जिक्र करें। पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान के लिए डेब्यू की इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ और अपने पहले ही मैच में 5 विकेट्स हासिल की थी। और अच्छी गेंद अपील करते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन मुतासिर ना कर सके यहाँ अंपायर को। बहुत ही क्लोज कॉल थी और आसिफ आफरीदी सरप्राइज। रोहिल नज़ीर का रिएक्शन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देखते हैं रिप्ले में कि क्या दिख रहा है। मुझे ऐसा लगा विद इन स्टंप बॉल पैड को हिट हो रही थी, ये देख रहे हैं आप। अच्छा बॉल पिच हुआ विद इन स्टंप। ओह, बहुत ही क्लोज कॉल थी मगर एम्पायर डिसीजन जो है वो फाइनल होता है। वाइडर ऑफ द क्रीज आए थे आसिफ आफरीदी और अंदर किया था गेंद और पड़ने के बाद सीधा रहा था। काफ़ी खुशकिस्मत कंसिडर करेंगे अपने आप को मोहम्मद मोहसिन, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि गेंद जिस लाइन में टकराई थी पैड्स को, स्टंप्स को टकरा थी, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही सेल्फ डिफेंस पे चल रहे हैं सुलेमान। अननेसेसरी ये जो बॉल इनके पाँव पे अभी लगी वो इतना कोई ख़ास बॉल लगा नहीं था। अच्छे लेंथ पे गिरा हुआ बॉल था और डिफेंसिव सोचे हुए थे, ये इसलिए हमसे मिस जज हुआ। ये देखा आपने, उन्होंने फीट यूज़ करी और कहीं ना कहीं प्रेशर डेवलप हो रहा है क्योंकि बाउंड्रीज़ नहीं आ रही हैं, रन्स जो है वो आ नहीं रहे हैं जिस तरह का बैट्समैन चाहता है वनडे क्रिकेट में कि स्ट्राइक रोटेट हो, बाउंड्रीज आए। तो काफ़ी टाइट बॉलिंग हो रही है। पिछले कदम पे जाके पंच किया और
तेज़ी के साथ रन मुकम्मल किया। बैकफुट पे नजर आया, यहाँ पे फील्डर लेट रिएक्ट किया था, जिसके दौरान मौका मिला एक रन मुकम्मल करने का। इसी एक रन के साथ पीटीवी के 50 रन भी यहाँ हुए मुकम्मल। 13 ओवर्स के बाद पहुंचे 50, 2 विकेट्स के नुकसान पे। कदमों का इस्तेमाल किया, गैप मौजूद है मिड विकेट पे, तलाश भी करने में कामयाब हुए मोहसिन। काफ़ी देर से आए आमिर गेंद के पीछे और मौका मिला मोहसिन को 4 रन हासिल करने का। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी शॉट सिलेक्शन और मुझे लगा वेल प्लान था ये शॉट कि रंधावा को पहली गेंद पे निकल के अटैक करेंगे। अगर आपको पिछले ओवर भी अगर याद हो, पहली गेंद पे सुलेमान ने फीट यूज़ की थी और वही चीज़ इस दफ़ा फिर हुई। देखें ये शॉट थोड़ा सा मिड ऑन के ऊपर से मारना चाह रहे थे, बॉल अंदर आया और फिर भी इन दी एंड बाउंड्री में कन्वर्ट हुआ। अच्छा शॉट था और ये प्रेशर को ब्रेक करते हुए तेजी के साथ रन मुकम्मल करना चाहते हैं और मुकम्मल कर भी पाएंगे। सेंसिबल बैटिंग कही जाएगी मोहसिन की। पिछली गेंद पे कदमों का इस्तेमाल किया था और इस दौरान देखा कि मिड ऑन पे फील्डर बिल्कुल दायरे के एज पे मौजूद थे, उनकी जानिब खेला और एक रन दौड़ के हासिल किया। फील्डिंग यूनिट को थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये जो सिंगल जो लीक हो रहे हैं इसके बारे में सोचें। अगर ये इस तरह स्ट्राइक रोटेट करते रहे तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है और रंधावा की जो एक अच्छी बॉल है वो सिंगल रन में कन्वर्ट हो रही है, तो प्रेशर रिलीज हो रहा है बैट्समैन पे। और शॉर्ट पिच गेंद पुल किया, लेकिन स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद है, जब तक गेंद उनके पास पहुंचेगी एक और रन हासिल कर पाएंगे। यहाँ पे सुलेमान, जैसा आपने जिक्र किया खुर्रम, एक अच्छी पार्टनरशिप अब जारी है दोनों ही बैटर्स के दरमियान। दोनों ही दाएं हाथ के बैटर्स हैं, अपना वक्त लिया है और अब ऐसा लग रहा है कि पिच को रीड भी कर चुके हैं और जहां हमको मौका मिलता है कदमों का इस्तेमाल भी करते हैं और बड़ी हिट्स की जाने भी जा रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि देखें थोड़ा सा बॉल भी ऑलमोस्ट 10 ओवर हो चुके हैं और थोड़ा पिच रीड हो गया है, किस तरह का बिहेवियर है, वेर एंड टेयर दिख गया है, तो अब वो कोशिश कर रहे हैं स्ट्राइक रोटेट करें, बाउंड्रीज बढ़ाएं। एक और अच्छी बॉल, अच्छा डिफेंसिव उन्होंने शो किया और देखा जाए सुलेमान के ऊपर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा है कि सुलेमान को ये रोल देके भेजा गया कि आपने पूरे ओवर्स खेलने हैं और मोहसिन को ये मैसेज मिला है कि आपको जो बैट बॉल मिले आप उसको बाउंड्री में कन्वर्ट करें, जो इनकी दोनों बैट्समैनों के बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है। और मेन चीज़ ये है कि आसिफ से थोड़ा मुझे ऐसा लगा सुलेमान इरिटेट होते हुए दिखे, क्योंकि उनको लेंथ जज नहीं हो रही है। एक्सपीरियंस एक तो बहुत है, फिर दूसरा पाकिस्तान टीम से आए हुए प्लेयर का एक प्रेशर होता है और उसको वो अच्छे तरीके से डिलीवर कर रहे हैं आसिफ। फिर सॉफ्ट हैंड से खेला और इसको थर्ड मैन की जानिब गाइड किया। एक बार फिर एक्शन में नजर आएंगे दानिश अजीज, तो काफ़ी मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं इस पोजीशन में। सुलेमान का हम जिक्र करें एक बार फिर, काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं इस प्रेसिडेंट्स कप वनडे टूर्नामेंट में। पिछले 2 मैचेस में बैक टू बैक रन स्कोर करते हुए आ रहे हैं। इनफैक्ट अपना पहला मैच जो उन्होंने इस टूर्नामेंट का खेला था नेशनल बैंक स्टेडियम में ही, उसमें शामिल हुसैन के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप लगाई थी। SNGPL के खिलाफ 90 रन बनाए थे और उसके अगले मैच में ही 100 रन बनाए थे, तो काफ़ी हद तक उनकी टीम इन पे डिपेंड भी कर रही होगी कि आज बड़े रन हासिल करें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और ऐसे प्लेयर का जो ख़ास तौर इनफॉर्म हो तो बैटिंग यूनिट की कोशिश करेगा कि ये ग्राउंड के अंदर ज़्यादा मैक्सिमम ओवर खेलें। और सोहेल, जिस तरह सुलेमान है और जिस तरह वो टाइम ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लंबी इनिंग के इरादे में खेले थे मिड ऑन की जानिब। कोशिश की थी मिड विकेट से मास सदाकत ने अपने बाएं जानिब डाइव करके गेंद को रोकने के लिए, काफ़ी एक्रोबैटिक हैं लेकिन रोकने में कामयाब ना हुए, लेकिन रन भी ना हासिल हो सका। तो 14 ओवर्स हुए यहाँ मुकम्मल। PTV पहुंचा 57, 2 विकेट्स के नुकसान पे। इसी के साथ साथ तब्दीली होगी कॉम बॉक्स में, जहां आपको ज्वाइन करेंगे कासिम शेख एंड फॉर्मर क्रिकेटर सिकंदर बाख। Thank you very much, Zishan Khalid and Khurram Manzoor. And it's a pleasure to be joined in the comms box
single of the second ball of this 15th over. Skander bucks up. How are you? Sir, thank you very much. And I think it's a very tricky start. This is the first time I've seen a Karachi pitch which will look like very hard. Let's see. Attempted sweep there. He's got it very, very fine. And a much needed boundary for PTV. Well, this is the second over from SF-1, and haven't seen any leg break from him. He's usually bringing the ball into the batsman. And again, he's bowling towards the leg side in the middle stump, so it's very easy to sweep him. So far, SF-1 haven't bowled a single leg spin. He's trying to bowl within the stump, and the ball is keeping straight or coming in. Let's see if he bowls the leg spin or not. Better line there, bringing the batter forward, looking to drive straight to cover there for no run. Well bowled again. See, he's flighting the ball, but he's not turning away from the batsman. And Asif Afridi played 5 matches so far in this tournament, and he has taken 5 wickets with an average of 40.80. Quicker through the air there. See, once again, he's bowling in the stumps. He's bringing the ball into the stump because the pitch is very hard. Gonna have a time for a drink now. PTV at 62 for 2 of 15 overs. Players will take a drinks break here at National Bank Stadium, Karachi. Oh, a lovely view of some water sports there. Somebody on a jet ski. Do you fancy doing that today? No, I don't want to do that because I've tried once. I don't know where it is. It's nearby somewhere, or it's in the. It looks nice. Yeah. What happened when you did the jet ski? No, I'm a long time back, 2 years back. Let's have a look at the scorecard there. Shamil at the top, caught Sawar, bowled Arshadullah for 11 off 15. Yasser caught Rohail, bowled Muhammad Amir 14 off 23. And Mohsin is not out 20 off 31, and Suleiman is not out 14 off 21. They're trying to build a partnership here. They've ticked along PTV to 62 for 2 off 15 overs as we continue to see some jet skis in the background and a scorecard. It's a great picture there. Yes, I don't know where they are doing it. I'm not sure it's nearby. It must be somewhere near defense in the sea, or I don't know. Let's have a look at the bowling card. Muhammad Amir was wonderful up top. 6 overs, 1 maiden, 19 runs at 1 wicket, 3 and over, just over 3 and over. Arshadullah, 5 overs for 26 with 1 wicket also. Imran has started well, 2 overs for 11, and Afridi is 2 overs for 6. See, Arshadullah only played 2 games so far in this President Cup. This is his 3rd game, and he's only taken 1 wicket, but he bowled pretty well. The pitch is hard. I've never seen a Karachi pitch like this. It's had a very different kind of a look, brownish look, and it was very hard. When I was giving the pitch report, I told them it's a very hard pitch. I've never seen a Karachi pitch that hard. Usually we see a pitch which is next to the playing pitch. You can see on the left side of the screen, that is the typical Karachi pitch, which is a bit rough and good for the turning track. But this one,
Players are back from a drinks break. PTV are 62 for 2 off 15 overs as we're just about to start this 16 over. Imran will continue for his third over. Short pitch ball, well pulled away by Mohsin. He's managed to get it very fine to beat the fine leg fielder all the way to the boundary, much needed boundary for PTV. Imran is a part-time bowler. He's not a regular bowler. I've gone through his record. He's never bowled a single over throughout the President Cup. Yeah, it's short pitch there, but the batter, Mohsin, played it very, very well. He didn't try to go too square. He purposefully went fine and got it away for 4. Back to a better length there, Imran. More orthodox, hitting a good area just outside off stump. And Mohsin just punched it to the cover fielder for a dot ball. Mohsin seems to be a very good batsman. He's playing like a perfect batsman. See, this is a 50-over game. It's not a 25-over game where you have to play quick shots. Over here, the batsman should play all the overs to make a good score. Otherwise, it would be useless. So they are doing a good job. Just stay there at the pitch and play all the overs. Well bowled, well played, down to third man by Mohsin for another single onto the scoreboard. And yeah, just coming back to your point there, Sikandar. I think in a 50-over format, wickets in hand is crucial, and I think they're just trying to build a partnership so they have that cushion. Have you seen the match yesterday? The Indians were trying to score on every ball. That's not on. For 50 overs, you have to stay there. Take your time. And this is what they are doing. Salman and Mohsin doing a good job so far. Well bowled. Quick single to the mid-on fielder. I wouldn't be so happy with that if I was the captain. Mid-on is meant to be saving the single. He looks like he's standing on his heels. And as a captain in the field, you want your fielders to be on their toes and not giving away easy singles. Bowled. Just nudged to the mid-wicket fielder there by Mohsin for no run. Imran is doing his best to hit good areas here. He's gone for 17 runs off his 2.5 overs so far. PTV 68 for 2 off 15.5. Right, Ali Imran, as I said, he's a part-time bowler. I think so because I'm going through his records in the President Cup. He didn't bowl a single over. He played 2 matches. This is his 3rd game. He must be bowling well in the nets. They've brought him out of nowhere and given him the ball in the semi-final then. No, I think the pitch is like that. They need a seamer. It's a wide ball down the leg side. Just coming back to your point about this pitch, Sikandar. You said it's hard. But just to talk about this point, is that not a good sign? Do we not want to see harder pitches and bowlers being able to bowl with more pace? Yeah, I do agree with you that we should have a harder pitches and seaming track. Initially, the new ball was moving around and the ball is bowled in a very good line. This is the last previous ball, which is a wide ball. And I think Ali was trying too hard. He doesn't have that kind of a pace, so he must move the ball. If you don't have a pace, then you must swing the ball. Otherwise, it will be easier for the batsman. Much better. Hitting good areas. See, when Amir and Arshad was bowling, they were very quick and they were bowling in a very good line. The ball was moving around and the ball was taking a little bit of height, which was very good for the new ball. And they bowled very well with the new ball. And they took 2 wickets. But now, the spinners are not bowling well. Asif Afridi is a very, very... Good start to this over for Asif Afridi. Yes, once again, keep an eye on him. He's not turning the ball. The pitch is very hard, I told you earlier. It's a very hard pitch, you cannot turn it. So he's bringing the ball in.
Just watch him. Well struck away, beautifully struck away by Suleiman. Cleanly struck, well in front of square for 4 runs to PTV. 73 for 2 now. Picked that up very quickly. Yes, as I told you, the batsman must be also noting that the ball is not turning away. It's coming into the batsman, so it's easier to sweep or play towards the onside. Look at him. See, it's what's outside the off stump, but perfectly hit. Good timing towards the mid wicket for 4. Yeah, he doesn't have any fear of the ball turning and bouncing, you're right. So it's pretty much a free strike for him when the ball is in his arc. Pressure back on the bowler here. Much better, getting the batter forward. But again, the ball was just coming in. It's not turning away. I think they haven't. They should have played at least 4 seamers. They only have 3. They should have another seamer on this track. He's looking to kind of bowl to contain at the moment, not really looking to bowl to get wickets. And you want your spinner to bowl to take wickets for you. Well, when you're playing a cricket match, you're supposed to take a wicket. So the pitch is not helping him. There is no turn in the pitch, so he's bowling straighter. Just watch him. Good dot ball there. Once again, you see, there was a appeal, a little bit half-hearted appeal. The ball is coming in. Again, watch it. See, it came in. So it's not moving away. The leg spinner is supposed to. Once again, it came Shout, in. he's given him this time. Asif Afridi is struck for OGDCL to take the 3rd wicket, and Mohsin is gone. And just when a partnership and momentum was starting to go in PTV's favour, they've broken this partnership. I'm really surprised how Mohsin got out, because you know that he's bowling on the incoming ball, the off spinner, the fluter, whatever you call it. It's not spinning the away ball, so he should be very careful. He was not stretching forward. If you can see in the action replay, he's not stretching forward. The no ball is clear. It's a legal ball. Just watch him. He should stretch. Look, see, he's on the crease. Yeah, stuck in his crease. Yeah, he's stuck in the no footwork. That's why he got out. A little bit lazy there, you would say. He looked so good at the crease and very compact, but that's the first time he's kind of not made a commitment either way. He didn't go back, he didn't come forward, stuck in his crease, and a very good wicket for OGDCL. Kind of against the run of play. 74 for 3 here, PTV off 17 overs. New batsman Mohammad Taha for PTV, left-handed batter. Coming in at a tough period here. They really now need this partnership to bat deep into the innings. Another couple of quick wickets now, and they'll be well up against it here, PTV. Site of Dubai Airlines. Short pitch ball, it's a great catch at mid-wicket. What a catch at mid-wicket. It was looping, but he had to make the ground up quickly, and he's taken a wonderful diving catch. The batsman is waiting for the umpires to have a look again, but I think it's a brilliant catch. It's a one-handed, brilliant catch, a good diving catch, and he mistimed it. He was playing so well, Salman. I'm really surprised. It was not a quick ball. It was short, meant to be pull. Just hold on. Let's have a look at the action replay. What happened actually? The ball came slow or what? Salman must be very, very disappointed, because it's a good pitch to bat on. So the ball was coming to the bat.
both set batters gone. And the last couple of deliveries has turned this game on its head. PTV gone for 74 for 2 to 74 for 4. Let's have a look at this one again. Bangs it in short, Imran. Heel is behind the line, no issue there. And it's come on to him pretty quickly. One final look at this. Dug in short by Imran. Mistimed, but wonderful catch at mid-wicket. One-handed in the end. Taimur Khan is the new batter, right-handed batter for PTV. He's under pressure here coming to the crease. He has to rebuild for his team. Well, Taimur Khan is in a good nick. He scored 306 runs in the present cup in 6 matches. This is his 7th match, and he's got a very good average of 76.50, which is very good. Let's see how he bats today, because we still have 33 overs to go. So they have plenty of time. Just stay there. Just play your normal cricket and go for the 50th over. Beautiful delivery, first up by Imran. Taimur is also the wicketkeeper. So wicketkeeper batsman, always good to have a wicketkeeper batsman that can score big. Well, Rohil Nazir is one of the best wicketkeepers in Pakistan. And he took a brilliant catch. I think it was amazing catch. This is the catch, super catch. And bad luck for Suleiman. Suleiman was playing very well. He's a very good batter. 2 new batters at the crease now. Imran's got his tail up. Well bowled. Just where you want to bowl to the new batter. As soon as a batsman comes to the crease, new to the crease, you want to be asking them questions, and that's what Imran is doing at the moment. Right, Taimur had already scored 100, 117 not out, and he has 250s into his credit. Gone for the short one again, Imran. This time lost the control of it. Gone down the leg side. Wide. Well, that's a wide ball. Imran doesn't have that pace to help him with the short ball. And Khurram just told me that Taimur scored 100 against the same team. And look at him again. Too wide. He doesn't have that kind of a space and, you know, the bounce. So, anyway, the pressure is on the PTV, so he's trying his best. You mentioned Khurram there. I just want to take this opportunity to say sorry to him. I called him a former player. He's still churning out the runs right now, so he's still going strong. Yeah, I saw him protesting against it. That he was saying that I'm still playing, I'm not retired. Quite right, quite right. Khurram is still playing. He scored a lot of runs, and he's a very strong player. Again, short pitch. Taimur has played it out to that deep square boundary for a single.
Well, he has a square leg for the short ball. He wants the batsman to play that hook shot. For that, he has a square leg and a fine leg. Fine leg is a normal field, but the square is specially placed over there with the short. See, again he bowled the short ball because he has a deep square leg where the ball is going right now. If you can see the field, they also have a what we call it, a 45. No, this is a field have changed. No ball by Imran, but well round there, the mid-off fielder. Oh, the umpire! Oh my days. Did he hit him? No, but it was very close. I don't think the umpire is too happy. He's smiling now, but he might not have been smiling. Well, lucky. Let's have another look at this one. Left arm throw. And, I mean, it was safely evading the umpire, but it was going in his direction. I think he was a little bit nervous there. Not an easy job umpiring, sometimes when these balls are flying around at high speed. 76 for 4 off 18 overs here, PTV. माइनर सा ज़्यादा हो गया ये ठीक है मिडल ठीक है Good start to this 19th over for Asif Afridi. Little bit slower than what he's bowled it in the previous overs. Well, but he's not turning the ball that much, so the batsman should know about it. It's still 31 overs to go. He's beaten that man at 45. Fielder's coming round him, well fielded on that deep backward square boundary, just a couple added. That's what's a good fielding, and otherwise it was a confirmed boundary. And this is what the batsman going to do, because the ball is coming in a little bit, not turning away, so they will go for the sweep shots. I think so. Quicker one there, and the batter might have had his heart in his mouth there for a second, opted to go back, kept low, almost skidded onto his stumps. Well, I'm really surprised. We are sitting over here, we can see the ball is coming in. Once again, he went for a cut shot. Very lucky. No ball there. Just played into the offside there for no run. The last ball was a little bit of a leg spin. Let's see. Single out to deep cover there. Well, the last ball was an over-pitched ball. Could have been hit through the covers, but I think the batsman is still under pressure. They're not. They have to settle down first to play a cover drive. I think he's a left-hander. Let's see. The ball is going to move away. There is no slip. Let's see how he handles it. Taha is a left-hander. I think the captain should keep a slip over there. This is the offside field, as you can see. The long off is coming back, and this is the onside. Well, it's 79 for 4. Why not? Dot ball to finish the 19th over. Takes PTV to 79 for 4 off 19. Imran to continue for this 20th over.
Crucial period of the match here. PTV just need to settle down, look to rotate the strike and build a partnership here. Played down to fine leg for a single there by Timur. Well, Imran is continuing bowling. Imran has bowled a lively spell so far. He's had a lot of energy about him, changing his lengths quite a lot, sometimes short, sometimes fuller. He's 1 for 21 off his 4.1 overs just now and doing a good job for his team. Yeah, so far he's done a good job. And though he's not as quick as the other bowlers. Well played for a single there by Taha onto the onside. What's a good total, do you think, today? Well, at least they should cross 200, 250, but they should do it because still, as I said, 30 overs are still left, so they just have to cool down. Play proper cricket, at least play proper cricket. There's another thing, dot balls. They should try to pick singles. Well fielded at backward point, saved the single. Just coming back to that point there, don't you feel that Pakistan cricket in general, this is the area where work is needed in the middle overs of a one-day match? About what? Rotation of strike, building the partnership. You have to do it in T20 too, and this is a very good piece of fielding. You play towards the point area, gully point, and very good fielding by this youngster. Yeah, totally agreed, because I've seen people giving training for the striking things, big hits and all. They should train the kids or the youngster how to take singles. Especially in a 50 over format, when the field is spread, the boundary options are not as much available to you. So strike rotation is crucial. Wide ball there by Imran to add one onto the board. Well, that was a wide ball, and but I believe if you are a good runner, it's a wide ball, the short ball, well, still have that square leg fielder waiting for the hook shot, and wait and see where he bowls the next ball. Right back on the money. Good area there. Yeah, that was a better ball within the stumps. You know, batsman was waiting for a hook shot. No, he's not going to hook. They have a short mid wicket too. So let's see. We were talking about the singles. Singles is important in every kind of cricket. Doesn't matter if it's a test cricket, is a longer format, shorter format. Singles are very important. And if you are a good runner, like Rizwan is a very good runner nowadays, and he can take quick singles. Well ball by Imran. Back-to-back dot balls. Yeah, the judging of a single is crucial as well. Game awareness is crucial for these batters as well. Yeah, you have to play with your wrist if you wanted to pick up singles, quick singles, like playing straighter. You can a little bit twist your wrist and you can play towards the offside or towards the onside to pick a single. Javed Miandad was the best player I've seen in my life, who is a very good player for the change of strikes. He was very quick with his singles. So nowadays Rizwan is very good, who can take quick singles. So singles is a very important factor in cricket. Another dot ball there for Imran to finish his 5th over. PTV now 82 for 4 off 20 overs. There's the wonderful Javed Miandad, Fazal Mahmood enclosure. Speaking of the legend, wonderful player, Javed Miandad.
Well, I have the honor of playing under him in under 19 in the Pakistan side, and he was my captain in under 19 too. And we played against Sri Lanka and other teams. And he's a brilliant, brilliant cricketer who thinks a lot about cricket. Afridi to continue now to the left-hand batter coming over the wicket now. Afridi starts this over with a dot ball. See, the previous ball he could play it with his wrist towards the short mid wicket or towards the fine leg. See, he's playing very straight with a dead bed, so he must try to pick singles from here. Roll of the wrists. Look to rotate the strike. Look to hit him. The ball just in front of square there. There's a single available. Clever shot there. Very clever, but the bowler is also clever. He's got a fielder down there, so just a single. Keep on rotating the strike. As I said, there's still 29.3 overs left, so it's plenty of overs left. You just have to stay there, take singles and wait for the bat ball to score a big runs. Quicker one there, straight to the cover fielder. Good over so far here by Asif Afridi. He's 1 for 15 off 4.4, so he's going pretty well. And slower this time, bringing the batter forward onto the front foot. Yeah, he's a very experienced bowler. Very experienced. Waiting for run out. Punched into the offside for a single to finish off the over. Takes the score to 84 for 4 for PTV. We're going to have a change in the commentary box. Farooq Riaz will be joined by Pakistani Test cricketer and current player Khurram Manzoor. बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्त और कासिम शेख। 21 ओवर का खेल मुकम्मल। खूबसूरत ग्राउंड नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है। OGDCL का मुकाबला PTV और स्पिनर जो हैं वो बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल आसिफ आफरीदी ने बड़े उम्दा बॉलिंग की। और कमेंट्री बॉक्स में एक दफ़ा फिर मैं खुशामदीद कहूँगा खुर्रम मंजूर को। थैंक यू सो मच फारूक भाई। जैसा कि जानते हैं बॉलिंग में एक बार फिर तब्दीली लाए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अभी कहीं ना कहीं एक बार फिर दोबारा जो अर्ली स्टेज पे प्लानिंग दिख रही थी PTV के बैट्समैनों की, एक बार फिर लगी कि विकेट जो है वो ज़्यादा चली गई हैं, आउट हो गए हैं ज़्यादा, तो थोड़ा डिफेंसिव मूड में बैटिंग हो रही है, डॉट बॉल्स ज़्यादा हो रही है, तो इनको चाहिए कि डॉट बॉल्स कम करें। पंच की ऑफ द बैक फुट। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बाउंड्रीज अगर नहीं भी आ रही तो 1s and 2s के साथ आप स्ट्राइक रोटेशन करें, बिल्कुल इसी तरह उनकी प्रोटेक्शन मौजूद है और सिंगल्स के साथ जो है वो स्कोर जो है आगे बढ़ता जाएगा। बाउंड्रीज की भी है कि जब लूज बॉल मिले वहाँ पर आप मौका हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने और मुझे लगा कप्तान की स्ट्रेटजी कुछ ऐसा लग रहा है कि जो अरशद को लेके आए हैं कहीं ना कहीं उन्होंने ये प्लान किया कि एक विकेट को और यहाँ पे अगर हासिल कर लिया जाए तो थोड़ा सा बैटिंग साइड जो है वो बैकफुट पे हो जाएगी। रन्स मिलेंगे। थर्ड मैन की फील्डर आए दाएं जानिब। जी हाँ बिल्कुल, अरशद एक विकेट टेकिंग बॉलर है और उन्होंने शामिल हुसैन को भी एक्स्ट्रा बाउंसर की मदद से आउट किया था, तो यकीनन पूरी एबिलिटी है इनके पास कि वो ब्रेक थ्रू हासिल करें और एक स्लिप भी मौजूद है, तो बिल्कुल वही हिकमत अमली है कि यहाँ पर एक और विकेट मिले और कम्प्लीटली बैकफुट पे कर दें बैटिंग साइड PTV को। जी ताहा का जो है यहाँ पे थोड़ा सा एंकर रोल होगा, जिस तरह के वो जो वे ऑफ प्ले है उनका, वो कोशिश करते हैं कि डॉट बॉल्स कम हो, बाउंड्रीज मिलें, तो आज थोड़ा शेप में दिख रहे हैं वो। टाइट लाइन और लाइन पर बॉल करते हुए अरशद
उनकी पूरी कोशिश होगी इस स्पेल में एटलीस्ट एक विकेट हासिल कर सकें ताकि सामने वाली टीम और बैकफुट पे हो और कम से कम स्कोर में इनको आउट करें। कवर के ऊपर और मिड ऑफ के ऊपर जो गैप मौजूद है, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस अगर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप है तो मौका मिल सकता है बैट्समैन को कि लिफ्ट कर दें ऑफ साइड की जानिब। पिकअप शॉट, रन्स बनेंगे, गैप ढूंढने की कोशिश, लेकिन फील्डर काफी तेज, दोनों फील्डर्स कन्वर्ज हुए। अच्छी फील्डिंग थी आसिफ अफरीदी की और 2 रन को 1 रन में कन्वर्ट किया आसिफ ने अपनी थ्रो के ज़रिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी फील्डिंग साइड जो है वो थोड़ा रिलैक्स हो गई है और मैच में थोड़ा सा कंट्रोल उनके हाथ में आया है। 20.4 बॉलों पे 87 रन हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स लग रही है, मगर ऐसा होता नहीं क्योंकि देखें सेमीफाइनल ऐसा मुकाम है कि एक स्टेप दूर है आप फाइनल की अचीवमेंट से, तो फील्डिंग टीम को चाहिए थोड़ा सा दोबारा। पिकअप शॉट, रन्स मिलेंगे, फाइनल के फील्डर को काफी ग्राउंड कवर करना पड़ेगा, लेकिन इतना पेस नहीं था, बड़े आराम से 1 रन मुकम्मल किया। एक बार फिर दानिश अजीज बाउंड्री पे पेट्रोलिंग करते हुए, आज जितनी भी अक्सरियत में बाउंड्री में बॉलें गई हैं दानिश अजीज को अच्छी फील्ड करते हुए देखा गया है। वो स्लाइड करके बॉल रोकना हो या लॉन्ग रन करके फील्ड को रोकना हो, तो अरशद का अगर हम देखें ये स्पेल बड़ा वाइटल है। मुझे लग रहा है 2 से 3 ओवर के लिए लाए हैं स्पेशली विकेट दिलाने के लिए। तो दूसरा एंड से जो रंधावा बॉल कर रहे हैं वो बड़ी अच्छी बॉल कर रहे हैं, उन्होंने एक आउट भी किया है, बेहतरीन कैच पकड़ा था। अच्छी लाइन लेंथ डॉट बॉल के साथ ओवर मुकम्मल, बहुत ही टाइडी ओवर अरशदुल्ला का, 88 फॉर 4। बाईस ओवर्स हो चुके हैं, 88 पर 4। ताहा और तैमूर क्रीज पे मौजूद और दोनों बैट्समैन काफी न्यू है अभी क्रीज पर, लेकिन एक पार्टनरशिप की जरूरत। आसिफ अफरीदी कंटिन्यू करेंगे, बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग की है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ताहा का एक अच्छा सेंसिबल सिंगल मिड ऑन के ऊपर। ताहा जो है थोड़ा एग्रेसिव खेलने के शौकीन है, आज वो टीम का पेन लेते हुए कि इस टाइम टीम को एक अच्छी पार्टनरशिप रिक्वायर्ड है, और तैमूर एक्सपीरियंस के साथ अपना शेयर करते हुए दोनों एक कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी हेल्दी पार्टनरशिप हो जिससे टीम का अच्छा टोटल हो सके, क्योंकि ओवर्स बहुत हैं, 23वीं ओवर का गेम है। अपील किए लेकिन बॉलर इंटरेस्टेड नहीं थे, विकेट कीपर को ऐसा लगा कि बॉल जो है वो पैर पे लगी और स्टंप्स को जा लगती। आसिफ को थोड़ा सा मिस जज कर रहे हैं, आसिफ अपनी पेस को वेरी करके, लेंथ को वेरी करके, ये देखें आप, बहुत ही ज़बरदस्त फास्टर बॉल थी, मिस रीड हुई, आगे की बॉल को थोड़ा सा बीच में रह के खेले। जी हाँ, बिल्कुल यही एक्सपीरियंस है कि आपकी पेस को वेरिएशन करें, अगर आप स्पिन ज़्यादा आपको नहीं भी मिल रही, लेकिन पेस को बाउंस को वेरी करके आप बैट्समैन को परेशान कर सकते हैं। और जब भी इनके इकोनॉमिकल बॉलिंग है, 1 for 17 और 33 लीगल बॉल्स अब तक कर चुके हैं टू बी एग्जैक्ट। एक और अच्छा बॉल, अच्छा शॉट कवर की तरफ खेलते हुए सिंगल लिया। आसिफ की ये क्लास कह लें कि वाइट बॉल में जो इनके लिए स्पेशली कहा गया है कि इनको हिट मारना इतना आसान नहीं होता, विद इन स्टंप बॉल करते हैं, पेस को वेरी करते हैं, लेंथ को वेरी करते हैं, और जिस तरह की इन्होंने टेस्ट मैच में, टेस्ट कैरियर में अपनी एंट्री की है फाइफर से, तो ये भी अच्छा है, वो भी एक्सपीरियंस है। हाँ जी बिल्कुल, और बैट्समैन के लिए भी बड़ा अच्छा मौका है, जितना वो आसिफ अफरीदी को खेलेंगे उतना उनका फुटवर्क के हवाले से और जज करने के हवाले से उनमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि क्वालिटी बॉलर्स को जितना लंबर से आप खेलें उतनी आपकी इम्प्रूवमेंट एज अ बैट्समैन जनरेट होती है। एक और शानदार ओवर, आखिरी बॉल आएगी और सिर्फ 2 रन्स कंसीड किया आसिफ अफरीदी ने, 18 रन्स दिए अब तक, 1 विकेट हासिल किए, 6 ओवर्स मुकम्मल, 23 के बाद 90 पर 4 PTV।
23 ओवर्स के बाद 90 पे 4 रन रेट इतना बुरा नहीं है खुर्रम, लेकिन विकेटें थोड़ी ज़्यादा गिर गई हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, 23 ओवर में 90 रन अच्छा है, मगर ये जो 4 आउट हो गए वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ गया। एक बार फिर अरशद, एक्स्ट्रा बाउंस और अपील की, एक आउट बिहाइंड की, सारे फील्डर्स एक्साइटेड हैं लेकिन अंपायर अनमूव्ड। मुझे भी ऐसा लगा जिस तरह बॉलर का रिएक्शन है और एम्पायर को लगा कि नॉट आउट है, और इन दी एंड फैसला तो एम्पायर का ही है और सारे प्लेयर एक्साइटेड थे। और सरप्राइज़ मुझे ऐसा लगा कि बैट्समैन रेडी नहीं थे शॉर्ट पिच बॉल के लिए, और जब उनको सरप्राइज़ हुआ तो वो लेट हुए, जिसकी वजह से वो डिसीव हुए। ये एक्शन रिप्ले में पता चलेगा कितना करीब था। ये एक्स्ट्रा बाउंस से हुक शॉट अटेम्प्ट किया था, लेकिन एक्साइटमेंट में सबकी अपील थी और थोड़ा प्रेशर आया अंपायर पे, लेकिन अंपायर का डिसीजन वही। क्या लगता है खुर्रम आपको? बैट्समैन का जो रिएक्शन है एकदम से, अमूमन जब आपके कनेक्ट होता है तो रिएक्शन में वो पीछे कीपर के पास देखते हैं। मुझे ऐसा लगा, मैं श्योर नहीं हूँ, कि शायद एज लगा हो, बहुत माइनर सा। बहुत ही अच्छा कैरी मिल रहा है टॉल फास्ट बॉलर अरशदुल्ला को, और इस तरह के डिसीजन में जहाँ बहुत ही फेंट आवाज़ हो और बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन की फेवर में जाता है। ये ऑब्वियस ही बात है, बेनिफिट ऑफ डाउट जिताते ही है बैट्समैन के फेवर में। जहाँ तक रही बात अरशद की, और अरशद ने जिस पर्पसली कैप्टन लेके आए थे, अभी तक वो दिख रहा है वाजे क्लियर के विकेट टू विकेट बॉल करना और बैट्समैन को डिसीव करवाना सरप्राइज बॉल करके। तो कहीं ना कहीं कैप्टन की और बॉलर की दोनों की एक ही इंटेंट है कि किसी तरह हमें एक और विकेट मिले और हम मैच में और डोमिनेट करें। अच्छा शॉट, हाफ पिकअप हाफ पुल शॉट। अरशदुल्ला जो है वो शॉर्ट पिच बॉल पे ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं, डीप स्क्वायर लेके फील्डर भी इसी वजह से उन्होंने रखा हुआ है कि कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। यहाँ पे एक चीज़ तो साफ दिख रही है, देखेंगे बहुत ज़बरदस्त वेल डायरेक्टेड बाउंसर था, और जहाँ पे बैट्समैन सरप्राइज़ हुआ। ये रोयल नज़ीर काफ़ी एक्साइटेड, इमाम भी आपको दिख रहे होंगे, इमाम ज़्यादा मेक श्योर लग रहे हैं आउट है, मगर फैसला इन दी एंड नॉट आउट था। मिस डायरेक्टेड बॉल था, वाइड का इशारा होगा। मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा ऑफलाइन हुए अरशद, और कहीं ना कहीं ताहा को भी चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि तकरीबन 12 बॉलें वो खेल चुके हैं, पिच रीड हो चुकी है, थोड़ा सा डॉट बॉल का प्रेशर। ये देखें आप, हल्का सा बॉल एयर में स्विंग हुआ, ऑफ द पिच भी एंगल क्रिएट हुआ डाउन द विकेट, और पुल करने में कामयाब हुए। अच्छा शॉट, गैप ढूंढने की कोशिश, लेकिन ग्राउंड कवर किया दानिश ने एक दफ़ा, फिर अच्छी फील्डिंग। एक बार फिर दानिश अजीज पेट्रोलिंग करते हुए, अभी तक 4 से 5 अच्छी बाउंड्रीज उन्होंने डबल में कन्वर्ट की हैं, और दानिश अजीज जो अमूमन T20 फॉर्मेट में बाउंड्री पे पेट्रोलिंग करते हुए दिखते हैं, आज भी सेम वही उनको बाउंड्री पे रखा हुआ है। क्योंकि ये देखें आप, बेहतरीन स्लाइड मार के बॉल रोकी, अपने फील्डर अपने पार्टनर को बॉल दी, उन्होंने थ्रो की। हवा में गेंद थी, लेकिन काफ़ी सेफ रहे। कवर फील्डर आया, उन्होंने दाएं जानिब ग्राउंड कवर करके एक रन हासिल किया। 24 के बाद 93 पर 4। तिरानवे पे 4, 24 ओवर से खेल मुकम्मल, और आसिफ आफरीदी कंटिन्यू करेंगे पवेलियन एंड से राउंड द विकेट टू द राइट हैंडर। जी बिल्कुल, आसिफ आफरीदी प्रेशर बिल्ड करते हुए 6 ओवर में 18 रन दिए, एक आउट किया है, थोड़ा मुश्किल डाला हुआ है बैट्समैनों को उन्होंने।
एक और अच्छी बॉल मिस जज हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई स्ट्रेटजी है बैट्समैनों की या कोच की, कैप्टन की ख़ास इंस्ट्रक्शन है कि आसिफ आफरीदी को केयरफुली खेलना है। स्मैश किया उसको, साथी बैट्समैन के बल्ले से लगने के बाद डिफ्लेक्ट हुई बॉल की वापस मिड ऑफ की तरफ। पहला कोई तेज शॉट था, लो फुल टॉस थी ये आसिफ आफरीदी की। जी हाँ बिल्कुल, और ये लग रहा है पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है कि ज़्यादा जो है वो चांस नहीं ले रहे, कदमों का इस्तेमाल हमने नहीं देखा इनके अगेंस्ट सिंगल्स लेने के लिए भी। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आसिफ के बाद हो सकता है दानिश अजीज जो है एक वो भी चॉइस है कैप्टन के पास। फिर हारून ऑफ स्पिन के तरह चॉइस है उनके पास, काफ़ी चॉइस है। फिर आदिल अमीन खुद बॉल करते हैं। ये आपने बॉल देखी, बैट से लगी, बहुत तेज शॉट था। एक और अच्छी बॉल आसिफ आफरीदी की, पेस को वेरी करते हुए, लेंथ को वेरी करते हुए। आसिफ आफरीदी ना सिर्फ इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हैं बल्कि जल्दी अपना ओवर ख़त्म कर रहे हैं, तो ओवर रेट के हिसाब से भी काफ़ी हेल्पफुल है इनकी ये बॉलिंग। एक और मिस जज, तेज बॉल थी। ताहा थोड़ा डिस्टर्ब दिख रहे हैं आसिफ आफरीदी से, मगर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है बैट्समैनों को चाहिए स्ट्राइक को रोटेट करें। जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है ये आसिफ कर रहे हैं। ये देखें आप, बॉल मिस जज हुए। एक और अच्छा शॉट और मिस फील्डिंग, बाउंड्री, गुड शॉट। ताहा की तरफ से एक खूबसूरत शॉट खेला गया है मिड विकेट एरिया में, और फील्डर की मिस फील्डिंग की वजह से ये बाउंड्री मिली है बैट्समैन को। वेलकम बाउंड्री ओवर के इख्तिताम पर चौके के साथ ओवर मुकम्मल हुआ 25 ओवर्स के बाद 98 पर 4 पीटीवी। पे 4 पीटीवी, 4 विकेटों के नुकसान पर, और वेलकम बाउंड्री हासिल की इस पिछले ओवर की आखिरी बॉल पर मिस फील्डिंग के नतीजे में। नॉर्मली फील्डिंग काफ़ी अच्छी रही लेकिन गलती की, लेकिन साथ साथ अरशदुल्ला अपनी दूसरे विकेट की तलाश में है। एक दफ़ा फिर 8वां ओवर करेंगे। अच्छी बॉल थी अरशदुल्ला की, हार्ड लाइन को हिट किया। बैट्समैन ने कोशिश की मिड विकेट एरिया में इसको पुट ऑन करने की, मगर अच्छी पेस थी जिससे थोड़ा सा बैट्समैन मुझे लेट लग गए। अब तक बड़ी अच्छी बॉलिंग की। ये एक आखिरी बॉल जो इस पे 4 रन हासिल किए। फील्डर थोड़ा आगे आए, कैच ले ना ले, लेकिन कंप्लीटली मिस जज किया और इन दी एंड 4 रन कंसीड कर गए। ये आमिर फील्डर लगे मुझे, आमिर जो फास्ट बॉलर है, और कैच के लिए कोशिश की थी, मगर मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा लेट मूव किया। पुल करने की कोशिश, लेकिन अलोंग द ग्राउंड इन दी एंड एक रन बनेगा। और बड़ी उम्दा बॉलिंग अरशदुल्ला की, आप देखिए मिड ऑफ और मिड ऑन सर्किल के अंदर है, तो कोई भी उन्होंने ओवर पिच बॉल नहीं की। उन्होंने बाउंसर ही रखी, शॉर्ट पिच स्टफ उनकी तरफ से, कि कोई भी मौका ना मिले। अब बैट्समैन के ऊपर है कि वो रूम बना के ओवर मिड ऑफ या ओवर लॉन्ग ऑन खेल सकते हैं, लेकिन अब तक एज पर फील्ड प्लेसमेंट उन्होंने बड़ी बॉलिंग की और बहुत ही डिसिप्लिन बॉलिंग। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और कहीं ना कहीं ये स्कोर कार्ड आप देख रहे होंगे, यासिर जिनका एक कैच ड्रॉप हुआ था, अनफॉर्चुनेट वो भी 23 बॉलों पे 14 रन बना के आउट हुए, जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। पुल करने गए, फील्डर वहां पे मौजूद, कुछ नहीं कर पाएंगे, बॉल गई बाउंड्री के बाहर। अंपायर का इशारा देखना होगा, और 4 रन के साथ 100 रन मुकम्मल हुए। जी बिल्कुल, ताहा ने अच्छा शॉर्ट पिच बॉल को अटैम्प्ट किया, और एम्पायर कंफर्म करते हुए मुझे ऐसा लगा ये देखें आप, शॉर्ट पिच बॉल और अच्छा कनेक्ट हुआ शॉट। फील्ड प्लेसमेंट थोड़ी सी मुझे लगा आगे पीछे हुई है, जिसकी वजह से जो कैच हो सकता, देखें आप, ये देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बाउंड्री है। एम्पायर कंफर्म करते हुए, मगर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए अरशदुल्ला का प्लान वाज़े है। दोनों बैट्समैनों को हर ओवर में 1 से 2 बाउंसर ट्राई कर रहे हैं, और ये बॉल अरशदुल्ला, सॉरी,
एम्पायर का फैसला देखेंगे क्या है। और अभी तक फैसला आया नहीं है, मेरे ख्याल से अभी शायद कोई एक आध एंगल और अगर मिले कि बॉल जो है डायरेक्ट पैडिंग पे लगी है या फिर ग्राउंड पे पर वो कांटेक्ट ऐसा हुआ लग है। रहा है कि जैसे मिट्टी उड़ी है, मुझे लग रहा है कि पहले बॉल बाउंड्री से पहले टप्पा खा गया ग्राउंड के अंदर। तो अगर जिस तरह आपने जिक्र किया, अगर एक और एंगल दिख जाए तो उसमें क्लियर हो जाएगी पिक्चर। 4 हो या 6, लेकिन बहुत ही उम्दा शॉट। ये देखें इसमें बॉल का बाउंस कहाँ हुआ है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। 2 रन का सवाल है और एक रन से जो है मैच पलट जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा वक्त लेते हुए। जी बिल्कुल, देखते हैं एम्पायर का क्या फैसला होगा। ये देखें बॉल जा रही एयर में और फ्रेम बाय फ्रेम जाते हुए ऐसा लग रहा है कि बाउंड्री है इस कैमरे के एंगल से। तो लेट्स सी कि जो थर्ड एम्पायर है वो क्या फैसला देते। और ये एम्पायर का फैसला बाउंड्री। अच्छा शॉट ताहा का, बाउंड्री में उन्होंने 4 रन हासिल किए और 100 भी मुकम्मल हुए इस चौके के साथ। 103 पे 4, बहुत ही उम्दा शॉट। जी हाँ, जो मिट्टी उड़ी थी उससे आसानी हो गई थर्ड एम्पायर को फैसला करने में। एक और अच्छी शॉर्ट पिच बॉल थोड़ी सी बॉडी से अवे थी ताकि बैट्समैन दोबारा अटैम्प्ट करे तो मिस टाइम हो और डीप स्क्वायर लेग वाले के हाथ में जाए। मगर ताहा सेंसिबल खेलते हुए स्ट्राइक को रोटेट किया डीप थर्ड मैन। डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद, उनके लिए चांस नहीं था क्योंकि वो थोड़ा बैकवर्ड की तरफ, बैकवर्ड डीप स्क्वायर लेग पे खड़े थे। लेकिन कोशिश अच्छी है कि आप शॉर्ट पिच कराएं और पुल शॉट अटैम्प्ट करवाएं बैट्समैन से। बिल्कुल बाउंड्री के एज पर फील्डर मौजूद। अब वो राइट हैंड बैट्समैन के लिए डीप बैकवर्ड पॉइंट पर तैमूर। एक और अच्छी बॉल और बहुत ही ज़बरदस्त लाइन और लाइन पे बॉल कर रहे हैं, बैट्समैन को टीज कर रहे हैं कि वो बड़ी हिट मारें अननेसेसरी, जिससे आउट होने का चांस क्रिएट हो। और ऑलमोस्ट आधे ओवर हो चुके हैं और कहीं ना कहीं प्रेशर जहन में है कि अब जाके 104 रन हुए हैं टीम का टोटल, और हमें अगर बड़ा टोटल करना है या डिसेंट टोटल करना है तो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज़ का या स्ट्राइक रोटेट आपको एटलीस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉलिंग लाइन जो है वो आपको मौका दे नहीं रही है। एक दफ़ा फिर मोहतात अंदाज से खेले तैमूर। 34 गेंदें खेल चुके हैं, काफ़ी वॉचफुल हैं और स्कॉट डॉट बॉल के साथ ओवर मुकम्मल हुआ 26 ओवर्स के बाद 104 पर 4। तो 4 पे 4 26 ओवर्स के बाद अब स्टेप अप करना पड़ेगा तैमूर को, और स्पेशली काफ़ी बॉल्स कंज्यूम कर चुके हैं। ताहा लेफ्ट हैंड बैट्समैन अब स्ट्राइक पर हैं, आसिफ आफरीदी कंटिन्यू करेंगे। ये जो डॉट बॉल है ये इजी सिंगल बन सकता था मिड ऑन पे, और कहीं ना कहीं डॉट बॉल का प्रेशर जो होता है वो आपको मजबूर करता है कि आप बाउंड्री मारने जाएं, वहाँ आप मिस्टेक करते हैं। तो ये इनको सोचना पड़ेगा बैट्समैनों को, स्पेशली ताहा को, क्योंकि आसिफ को ज़्यादातर वही फेस कर रहे हैं। लो फुल टॉस पहुंचा दिया वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, डाइविंग एफर्ट थी। जैसे पहले भी जो बॉल पीछे गिरी हुई गेम थी उसको आराम से गैप पे भी सिंगल निकाल सकते थे, तो बहुत सी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ दोनों बैट्समैनों ने मिस की हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये बॉल देखें आप, लो फुल टॉस बॉल थी, अच्छी एफर्ट फील्डर की, मगर ये दोनों बैट्समैन को थोड़ा रियलाइज़ करना पड़ेगा कि पार्टनरशिप बड़ी करनी है तो उसके लिए स्ट्राइक रोटेशन ज़रूरी है। ये देखें आप, एक और सिंपल बॉल और सीधा शॉट फील्डर के हाथों में। बॉल में कोई ऐसा टर्न एंड बाउंस नहीं है, विद इन स्टम्प बॉल हो रही है। एक होता है पिच में प्रॉब्लम हो रही है, बॉल ग्रिप हो रहा हो, इजी है खेलने के लिए, मगर ऐसा कुछ दिख नहीं रही इम्प्रोवाइजेशन। स्लॉग स्वीप के लिए गए, गैप ढूंढने में कामयाब, इस दफा 4 रन मिलेंगे। बहुत बड़ा गैप, बॉल बड़े आराम से स्लोली जो है बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए 4 रन और एक इम्पॉर्टेंट बाउंड्री पीटीवी के लिए। देखिए जिस तरह हमारा बात कर रहे थे, ये देखें आप, इस शॉट में साफ दिखा है ये प्री प्लान था, और ये सिर्फ इसीलिए था कि डॉट बॉल्स बहुत हो रही थी।
और ये प्रेशर क्रिएट हो रहा था, 4 रन मिले हैं इन्हें। आई होप कि ये नेक्स्ट जो बॉल्स हैं इनकी उनको स्ट्राइक रोटेट पे रहें, क्योंकि प्रेशर इन पर डेवलप इसलिए हो रहा है कि डॉट बॉल ज़्यादा हो रही हैं। एक और डॉट बॉल, बाउंड्री के बाहर डॉट बॉल। तो सब बैट्समैनों को आपस में एक चीज़ देखने को मिल रही है कि दोनों बैट्समैन आपस में इतनी कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे हैं कि कोई मिस्टेक हो रही है कि हमें क्या करना चाहिए। काफ़ी फुल बॉल थी ये और तेज़ बॉल कवर की जानिब खेले और एक और डॉट बॉल के साथ ओवर मुकम्मल। आसिफ आफरीदी की शानदार बॉलिंग फिगर्स जो हमारे सामने। 27 ओवर्स के बाद 109 पे 4। है ना? नहीं, आदिल अमीन। 109 पे 4। 27 ओवर्स के बाद ताहा और तैमूर पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन जी ओवरऑल स्ट्राइक रेट को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। अरशदुल्ला को अब बॉलिंग से रिमूव किया गया है। आदिल अमीन जो कैप्टन है वो खुद बॉलिंग के लिए आए हैं। बोल्ड डिसीजन लिया है और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आदिल अमीन जो है स्पेशली ताहा के लिए आए हैं। एक और सिंगल, अच्छा सिंगल। इसी सिंगल डबल की ज़रूरत है बैट्समैनों को। स्ट्राइक रोटेट करनी है, मिड ऑन मिड ऑफ दोनों पीछे हैं। बॉल ऐसा कोई ख़ास ब्रेक नहीं हो रहा, मगर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तैमूर ने फैसला कर लिया है कि अब मैं कहीं ना कहीं हिट मारने की सोच रहे हैं। तो देखते हैं अभी तैमूर का अगेंस्ट आदिल अमीन क्या प्लान है। फील्डर को अंदर लेकर आए। आदिल अमीन कवर को डीप पॉइंट को सर्कल के अंदर किया है और डीप मिड ऑन, मिड विकेट, वाइड स्क्वायर। 3 फील्डर दायरे से बाहर हैं, चौथा जो है वो मिड ऑन मिड ऑफ। एक और सिंगल तैमूर की तरफ से स्क्वायर लेग पे खेलते हुए। आदिल अमीन की बॉल इतना कोई ख़ास ब्रेक नहीं लग रहा, कोई गेंद इतना कोई ग्रिप नहीं हो रहा है। विद इन स्टंप कोशिश कर रहे हैं और बैट्समैनों को कहीं ना कहीं चाहिए इनके ऊपर स्ट्राइक रोटेट करें ताकि इनकी पोजीशन और मुस्तहकम हो। जी, किसी बॉलर को टारगेट तो करना पड़ेगा और आदिल अमीन गोल्डन आर्म के तौर पे भी साबित हो सकते हैं कि क्या पता पार्टनरशिप ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन इस जो पेयर के लिए ज़रूरी है कि इनको टारगेट किया जाए और मैक्सिमाइज करें इनकी इस ओवर को। अच्छा शॉट, ताहा का कट खेल के उन्होंने एक सिंगल लिया। देखते हैं कि अभी आदिल अमीन 4 बॉलों पे 3 रन दे चुके हैं और वो कोशिश कर रहे हैं विद इन स्टंप बैट्समैनों को बॉल करें ताकि कोई बड़ी हिट ना मारे। सिर्फ 3 रन दिए खुर्रम। आदिल खुद आए अपने और काफ़ी इकोनॉमिकल साबित हुए। 2 ही बॉल बाकी अब तक, देखते हैं कि किस नो एंड पे ख़त्म करते हैं। और डॉट बॉल एक दफ़ा फिर एक और डॉट बॉल, जिसका हम मुस्तकिल जिक्र कर रहे हैं कि डॉट बॉल से अवॉइड करना चाहिए जब पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। तो इस तरह थोड़ा सा बैट्समैन में प्रेशर होता है। कदमों का इस्तेमाल किया लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, लेकिन फील्डर वहाँ पे मौजूद। 1 ही रन मिलेगा। तो बहुत ही डिसेंट ओवर आदिल का। 4 रन दिए अपने पहले ओवर में। 28 ओवर्स के बाद 113 पर 4 PTV। और इस ओवर के साथ कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली। कमेंट्री बॉक्स में आपको ज्वाइन करेंगे कासिम शेख और जिशान खालिद। Thank you, Farooq Riaz and Khurram Manzoor. Nice to be joined in the comms box for the first time. Zishan, how are you? I'm great, Qasim. I hope you are well and you're enjoying your time out here in Karachi specifically. Wonderful, wonderful. Loving Karachi. I normally visit Lahore, but I am slowly but surely falling in love with Karachi. Yeah, there are a lot of differences when you talk about the two cities, Lahore and Karachi, but you got to love your stay here. I mean, there are so many different things that you can experience, especially in this part of the country. I think it's the sheer size of the city. It's such a massive city. But PTV are 113 for 4 here off 28 overs, and just listening to the last commentary stint, they really need to start rotating the strike a lot more.
Yeah, so a double bowling change now from OGDCL. We saw the captain bringing on himself from the other end, and now the experienced Danish Aziz, the left-arm orthodox, he is brought in. So we usually talk about matchups when you talk about modern day cricket. They must have brought the captain because there is a left-hander at one end, Taha. Down the wicket he comes. That is huge. Long on field, it will just be a spectator because that has gone way over the boundary ropes. Sikandar Bakht will be very happy in the commentary box. He's been calling for the batters to use their feet against the spinners, which we've not seen up until now. But that is beautifully struck by Taimur. A much needed maximum for PTV takes the tally to 119 for 4 now, and pressure on Danish. Beautiful use of the feet. Kept his head in line, allowed the ball to come on to him, held his position, bang. Straight for 6. Goes again, this time over mid-wicket, consecutive 6s. And this time that has been sent towards the mid-wicket region into the stands. Lovely counter-attack here by Taimur. Danish has come into the attack. He's not going to allow him to settle, and I think that had to be the plan. Asif Afridi was allowed to bowl and bowl and bowl, whereas Danish now is suffering because of that, and they're not letting him settle back-to-back maximums. Yeah, it's really good thinking from Taimur's point of view. They have taken the attack to the cleaners as far as Danish Aziz is concerned. The first ball came down the wicket. Might have not have got closer to the pitch of the ball, but still got the elevation and the distance. And the other one, where he had to fetch that ball from outside the off stump, he was able to find that gap towards vacant mid-wicket region. And tell you what, it had more distance behind that. Yeah, I think he hit the second one sweeter than he struck the first one where he came down the wicket. But the pressure is right back on the bowler now. It'll be interesting to see if Danish tries to bowl it a bit quicker now, if the batter will just be happy with the back-to-back 6s, or he will continue to try and attack. I think right now is the time that the batter need to be a little more aggressive, as we have seen from Taimur. Umpires, after just having a look at the condition of that ball, because that went way into the stand, so as standard procedure, the umpires usually look at the ball before they hand it over to the bowler so that they can get ready. Tough conditions out here, Qasim. You could see that Taimur is slightly getting exhausted. He has been out there for 44 deliveries now. Yeah, but for you Pakistanis, you keep telling me just now, everyone I bump into tells me it's freezing at the moment. I get a little bit confused by this. Last night I was at a venue and they were all shivering, and I'm thinking, this is perfect temperature. Feels like summer holidays for me in Scotland. Absolutely. I mean, as the day progresses, you'll see the temperatures going down a bit. It's going to get a little more colder and slightly more pleasant as far as the temperatures are concerned. But these are ideal conditions for the game of cricket, and a very crucial time for PTV to make sure that they just improve their run rate a bit, which is still hovering around at 4.3, 4.4. They need a partnership. Remember, during the round stages, these two were the batters who took them out of trouble when they were at 75 for 4 at one stage. Sensible batting. After getting 2 consecutive 6s, he's now making sure that they rotate the strike as well. Perfect, perfect. What else do you need? Back-to-back 6s followed by a couple of singles, and your over is made. Don't really need to take any more risks in this over now, I don't think. Let's see how Taha operates against Danish Aziz. That has been his style of play, Taha. He's pretty lean. You don't usually see him using his feet a lot often. He usually tries that scoop over fine leg towards deep fine leg. We have seen that earlier on in his innings when he attempted that stroke against Asif Afridi. That's the end of the over, but a productive one for PTV. 13 runs came off it. 29 done. They are 126 for 4.
Well, the physio has come in just to give some assistance to Taimur. Well, I covered their previous match against State Bank of Pakistan, and he wasn't a part of the playing 11 in that match. And when I asked them why Taimur wasn't playing, they told me that he is not feeling well, Taimur, but he has been included in the playing 11 because it's a big match and it's against a side that he has scored runs against. So it was important for him to be a part of playing 11. Sounds like the 1992 World Cup. Inzamam ul-Haq had a dodgy stomach the night before the match, but special request was made that Inzamam ul-Haq has got to be on the pitch, and we all saw what happened there in that semi-final. Yeah, PTV will be hoping that Taimur can replicate that performance. Although it was a semi-final, it's a semi-final here again today. And Taimur holds the key now for PTV, so does Taha. They've showed a lot of maturity. They came together at the crease at a very difficult time, maybe 70 for 4, 74 for 4 at that point. 2 set batters gone. They both came to the crease, completely new batters. So they had to take some time to rebuild. But I think they're into their innings now, and they're going to start to look to accelerate now in the next 5 to 10 overs to give the back end of the innings the momentum it needs. Oh, it caught an edge. It's gone down fine. No chance for short third to get that one off. Some boundaries are coming thick and fast now for PTV in the last couple of overs. Yeah, lovely shot there by Taimur. Bowled very quickly by Adil, which allowed Taimur to just guide it, use the pace of the ball. And he managed to get it fine enough to take it all the way to the boundary. Lovely shots. Played it very, very late. Yeah, not a big tenor of the ball, Adil Amin. Although he has been very effective for OGDCL. He has picked up 13 wickets so far in this tournament. I was a little surprised when he introduced himself very late into the attack, because we have seen him bowling in the power play as well for his team. But I guess the way Arshad and Amir Khan began with the new ball, it was a right decision to give them an extended spell in search of more wickets. Yeah, I think the Seamers did a good job. Nicely stopped in his follow through. Now this is what he does, Adil. He do realize that he's not a big tenor of the ball, so he looks to keep it straight. Taha, on the other hand, can find that vacant mid-wicket region. Imam ul Haq has been very busy at short mid-wicket. Man full of runs in this tournament, Imam ul Haq. Couple of centuries for him at the top of the order for OGDCL, and he'll hold the key for the men in blue today. Slightly short, pulls that one away, gets it in the gap. That's the vacant mid-wicket region we were talking about, and Taha has managed to find it for a boundary. Yeah, this is really good counter-attacking batting by PTV. Both of them have spent a fair amount of time at the crease. They're now accelerating. Short pitch, rocked back onto the back foot, beat mid-wicket Imam ul Haq, and all the way to that deep mid-wicket boundary for 4. Couple of boundaries in this over, couple of maximums in the over before. PTV are really starting to get some momentum now. They needed that as well, because they were just blocking everything when Asif Afridi was operating. Nicely getting on the front foot and driving it towards long on. Another productive over comes to an end for PTV. 10 runs coming off it. 30 done with 20 more to go. PTV are 136 for 4. All right, 6 bowling options have been used by Adil Amin today. Amir and Arshad were absolutely brilliant with the new ball. Amir getting that wicket of Yasir, and Arshadullah dismissing the opposition skipper Shamil Hussain. And then we saw Imran Randhawa also getting a wicket when a wonderful catch was taken at mid-wicket. Asif Afridi, as you expect, has been very economical and has got a wicket as well. Adil Amin, on the other hand, has been slightly expensive. It's just bowled a couple of overs, whereas Danish Aziz in his solitary over went for a couple of sixes and has given away 13 runs. What a beautiful view. Where is this, Zishan? I want to go there. Yeah, it's a part of the city, but it is far away from here, that's for sure. Towards the coastal end of the city. But that's what you get when you visit this part of the country, Karachi. There are a lot of skyscrapers, and then you get
an opportunity to go and relax at the beach if you want. Meanwhile, another change in the bowling attack. Imran Randhawa has been brought in, scoops it. Improvisation working beautifully from Taha. A boundary of the first ball. Very good start to the over. Wasn't a bad ball, but Taha preempted the shot. It's such a popular shot now in the shorter form one-day cricket. I mean, they play it in Test cricket as well now, the scoop shot. Wouldn't have played that in the 90s, but nowadays it's a different era of cricket and put a lot of pressure on Imran now to go for a boundary off the first ball of the over. Yeah, we have seen that, trying that a stroke on a number of occasions, but that was against spinners, and to execute this shot with such conviction shows how much talent Taha possesses. Now they brought in Danish Aziz from this end, from the combox end, but they have straight away taken him off the attack. They have once again relied on the pacer. I think the ball is slightly getting older, so as the modern day rules suggest that after 35 overs you just get to play with one ball from both ends, thus making sure that the fast bowlers get warmed up. Very good quick single there. Good awareness by both batters. They really have got that momentum going now. They're finding the boundaries. They're taking the quick singles, not allowing any of the bowlers to settle. Dot balls that we've seen between 20 and 30 overs, which was a lot, has kind of calmed down now. Strike rotation has increased, and these two batters are going along very nicely. Tamur on 37 off 47 now, Taha 28 off 33, but they need to go on for their team. And once again, it's that partnership between Tamur and Taha that has come to the rescue for PTV. Middling almost everything now, Tamur. 68 now is the partnership between these two. The thing is, though, is this worrying signs? Because the wicket looks to be getting flatter and flatter as the day goes on. OGDCL are in pretty fine form with the bat, so you'd think PTV need to try to push towards that 270 kind of target. Absolutely, you're spot on, because the pitch does get a little flatter as the match progresses. Slightly slower, driven, but there's protection out there in the deep, and they'll get a single. Now it's very important that PTV, after getting themselves into this position, they capitalize the remaining overs, because anything less than 240, 250 won't be that easy to defend, considering the fact that you have got Imamul Haq and Mas Sadakat in the opposition team, who open the batting, are in the form of their life, and also the dew factor, because it's not going to be easy for PTV to bowl in the second innings as well. Absolutely. Plays that one fine. There is a fielder that is shot fine, but since it was Asif Afridi, so they got the opportunity of getting another quick single. So 31 done. PTV are in the recovery phase. They are 144 for 4, and it's time for a drinks break.
Players back from a nice refreshment. Much needed refreshment, I'd imagine. We're all set for a very interesting passage of play here. PTV have got themselves into a really good position after a tough first 25 overs or so. Both these batters have shown a lot of maturity in building a partnership, and now they're in a good position here to attack. 144 for 4, PTV. Single off the first ball of this over after the drinks break, out to that deep mid-wicket boundary. Yep, remember, it's a day and night match here, the first semi-final between OGDCL and PTV, so not a lot of time remains where you're going to see these newly installed floodlights are going to be in action, in operation. Another single taken by Taha, and I think it's good batting now. They do realize, and they must have received a message as well from the dugout during that drinks break, that now is not the time to face dot deliveries. Make sure that if a bad ball comes, you put away for a boundary, and if not, then at least try to go for that single so that you can rotate the strike. Well, now that stayed low. He did a pretty decent job by keeping the bat down at the right time. Yeah, Dio bowled that one a bit quicker, and yes, very low. And he goes for the sweep shot. It's in the end. Opportunity for mid-wicket, and he takes... Oh, he puts it down, does he? He's put it down. He juggled it a couple of times. He's smiling a little bit. I think that's more through embarrassment. I don't think he should look towards his captain at the moment, because that catch could be costly, and just when they needed a wicket. Absolutely. They've added 72 runs now for the 5th wicket. They needed that wicket badly. They do realize how dangerous Taimur can be. But it was an opportunity created by the bowler. Should have been taken. There you see, it was a premeditated stroke, but he had already made up his mind. But that should have been taken at least at this level. Yeah, both hands to the ball, straight down his throat. Although we all drop catches from time to time, but yeah, this is as easy as you'll get. And it's hit the turf. And the batter lives to fight another day. 147 for 4 off 32 overs. There you see the man, the culprit, Mohammad Amir Khan. We saw a catch being put down of his own bowling when Maaz Sadakat was feeling at first slip of Yasir Khan. There you see. Pachara, the cameraman is giving him no respite, making sure the camera is right on him. First ball of this Imran over, dot ball into the onside. He's done a good job for his team so far, Imran. He's not the quickest, but he's ran in from both ends and done a job for his captain so far. Yeah, he's a very useful all-rounder, Imran Randhawa. Very powerful hitter down the order. Brings in a lot of energy whenever he's bowling or batting. He's got that action where he can reverse the ball if there is some. Most probably both the teams had received some sort of strategy of how they're going to be operating in the next 18 overs. But it's important that PTV just hold their composure and don't lose their concentration. Because see, there are still 7 overs to go after this one, where you get just 4 fielders outside the inner ring, and that's where you can capitalize. Yeah, I completely agree. I would just look to keep rotating the strike just now, wait for to get the bad ball, put it away, otherwise just keep it ticking over for now. Outside edge! The wicketkeeper was wrong-footed. He was initially moving towards the leg side, had to move towards his right, couldn't do it in the end. And Taimur collects another boundary. Oh, it's a cruel game sometimes. Beautiful delivery by Imran, and you spotted that beautifully, Zishan. The keeper had already started to go down the onside. There was no way he was going to get back towards that. Otherwise, it would have been quite a straightforward catch. But I won't blame the wicketkeeper either. His momentum was taking him down the onside. The ball just held up on the batter. Took the outside edge, and it says in the book, 4 runs. Yep,
Only who have seen it we can describe how close they were to pick up another wicket. And the way Rohil Nazir has kept today in fact, when he took an excellent catch to get rid of the batter. Had he stayed in that position, would have gone for it, but unfortunately he went towards the leg side initially and there was no chance for him to recover. But 150 meanwhile was raised for PTV, and now they must consider themselves in a very decent position. One of the two giant screens that were installed at National Bank Stadium, Karachi, earlier this year, before the Champions Trophy that took place in Pakistan. And you could see all the actions on that giant screen as well. Bowling at a decent pace. Yeah, he's bowled a very good over here, Imran. Even the boundary was very, very harsh on him. Found the outside edge. He just looks like the kind of guy you want in your team. You mentioned he's a hard-hitting batter as well. He gets around in the field, he puts his energy into everything. Every team needs an Imran. Yeah, or maybe you can say the name Imran has been very lucky in terms of cricket. Very much so. Fuller driven towards long on for an easy single. He moves on to 46, and PTV after 33 moves to 152 for the loss of 4 wickets. PTV 152 for 4 off 33 overs, going at a current rate of 4.61. The game is very interestingly poised. Set up nicely for a late order dash here for PTV, but a wicket or two would pull things back in favour of OGDCL in an instance. Once again, a single taken of the very first ball of this over. So good stuff this from Taimur. He knows that he is inching towards his personal milestone, another list day half century if he gets those 3 runs. So he might be a little watchful for the next few deliveries. Whereas Taha, who has been slightly off strike in the last couple of overs, where he's been watching all the action from the other end, now gets to face Adil Amin. Goes for the sweep shot. Gets it over the mid-wicket fielder, gets it in the gap, and Taha collects another boundary. Really good batting by Taha there. Single off the first ball of the over, and Taha has put the pressure again back onto Adil, putting him away over that mid-wicket boundary for 4. Still 4 balls left in this over now, and an opportunity to make this another big over for PTV. And if you compare his performance from the other matches, Taha has batted brilliantly so far, because in previous matches when I was looking at him, his strike rate was on the lowest side. He was striking at 60 or 70 per 100 ball. But if you look at his innings today, he was a little slow to start off with today as well. But now he's striking at nearly 90, which is pretty ideal for PTV's point of view. That he's scoring runs, he's making sure that he is not facing a lot of dot deliveries right now. Yeah, and taking into consideration when these two batters came together at 70 odd for 4. 2 new batters at the crease, pretty much both on 0. I've been very impressed with how much maturity they've shown in this innings. He's gone straight this time, it's gone straight up in the air. Long on has parried it, and another catch goes down. I think that might be the 3rd drop catch if you take into consideration the slip catch dropped earlier. How costly is that going to be? And once again, it's the captain Adil Amin at the receiving end. Previously we saw Amir Khan putting down a dolly, and now Arshadullah, who had to cover a lot of ground towards his left from long on, just couldn't hold on to it. He never really seemed that confident, like he really wanted the catch. Maybe the legs are just getting a bit stiff after his bowling overs. Take it, this time it's not going to be put down as Imran Randhawa picks up an easy catch. Oh Taha, what have you done? After a wonderful partnership, Taha just losing his concentration a bit. It was pitched up, it was outside the off stump, he was going for that drive, just couldn't keep it down.
And Imran Randhawa at backward point takes an absolute dolly. I understand they had to start getting the momentum into the innings, but they were going along nicely. Both set batters. I don't think that shot was needed. I think if he had rotated the strike for a couple more overs, hit the bad ball away, they were in a good position. But now there'll be a new batter coming to the crease. He's played a good hand for his team. Mohammad Taha, 35 off 38. Caught Imran, bowled the deal, but I think he should have gone on a bit further there. He'll be kicking himself when he gets back to the dugout. Jahandad Khan comes to the crease. Seemed to bring himself a little smoothie along with him. It's all right. It's a nice way to start your innings, a nice little orange juice. Yep. Wanted to get hydrated, in fact, before he starts off his innings, Jahandad Khan. Well, he's been promoted up the order today, Jahandad. You've got Ahmad Butt in your playing 11. He's got a lot of experience, and I think would have been much better if Ahmad had walked in, but I think they need someone to just put the pressure back on the bowling side. I think they should still be a little bit careful here not to overdo it. I think they need to look to go for another 5-6 overs. A decent run rate so they can go hard in the last 10. What they don't want is to go too hard just now, lose a couple of more wickets and then struggle to bat the 50 overs. Yeah, Hassan rightly pointed out, Taha will be absolutely kicking himself. I mean, you saw a catch being put down on the previous delivery. It was pitched up, it was outside the off stump. The invitation, yeah, was there, but he should have looked to play it all across the ground instead of hitting it in the air. And Taha just losing that concentration and losing his wicket in the process. Comes down the pitch, chance and taken. Wow, what an extraordinary catch that is from Sadakat. This man can do no wrong. He's good with the bat. He's excellent in the field. What's the panic? I don't understand what the panic is here at the moment. They were going along perfectly well. There is still over 15 overs left. I appreciate you want to get as big a total as possible in a semi-final, but they're putting themselves in dangerous territory now to even bat the 50 overs. And now the two new batters are going to need to start again, rebuild again. So I'm sorry, but both set batters have not done their team a favour there, getting out back-to-back like this. Yep, coming down the wicket, thick outside edge and a good catch. He was treading very close at backward point, and normally you don't usually have that much reaction time, but look at how comfortably he took it. Taimur Khan, unfortunately, will be walking back just a couple of runs shy of what would have been another half century. Couple of sixes and 3 boundaries included. It's 159 for 6. New batter walks in, Ahmad Butt. Tons of experience for Ahmad. He has been passed out domestic cricket for a very long time now. Initially he was the skipper of PTV, but then missed a few matches. That allowed Shamil Hussain to step in. Did a pretty decent job. Ahmad once again making a comeback in this playing 11 for his team, and now they need his performance. Very much so. Ahmed and Jahandad neither yet to face a delivery, and the game has turned on its head again. Just when PTV were looking like getting in a reasonably strong position, OGDCL have taken back-to-back wickets
And pressure is back on PTV now. Solid in defense. It's not the first time we have witnessed one brick, it brings the other. We saw the openers going in quick succession, then wicket number 3 and 4 when they were 74, and now straight away when Taha was dismissed, Temur looking to use his feet, couldn't control that stroke. The bat might have turned in his hands because he was looking to drive it towards extra cover, but in the end ended up giving a simple chance towards Maaz Sadakat. So Imran Randhawa, as we expected, contributes with the bat, contributes with the ball. He has been excellent in the field, and now he has picked up a couple of wickets as well. Yeah, I've been really impressed with Imran today. He just stuck to his task, and he's doing a job for his captain and his team. He's bowled very well. Nicely driven, but once again it's Maaz Sadakat. He's having a time of his life, Maaz Sadakat. Recently was a part of the emerging Pakistan team that won the Emerging Asia Cup, and he was amongst the runs. There you see, the newly installed floodlights are shining bright here at National Stadium. They look pretty good. We'll be able to see the full effect once the Karachi light completely goes down. Good pressure being maintained now on these two new batters. Fielders up close are making sure that they are not allowing or giving any opportunity for them to pick up quick singles. And once again, PTV are finding themselves in a position where they'll have to do that rebuilding job all over again. Well, what will happen now most likely for the next 3, 4, 5 overs is the two new batters will need to rebuild. Of course, the run rate will drop a little bit in that period. So just a bit of lack of game awareness by both set batters. That's the time when you need to, you're set, you shouldn't give your wicket away, you should bat deep into the innings. Another dot delivery, so brilliant over from Imran Randhawa comes to an end. It's a wicket maiden. 35 overs done and dusted. PTV are 159 for 6. And with that, it's going to be a time in the change in the commentary box as Farooq Riaz and Sikandar Bakht will be taking over. बहुत बहुत शुक्रिया निशान खालिद और कासिम शेख। 159 पर 6 दोनों नए बैट्समैन क्रीज पर मौजूद और विकेटें गिरती हुई पिछले चंद ओवर्स में। जहादाद 0 पे और अम्माद वो भी 0 पे बैटिंग कर रहे हैं। इमरान 2 पर 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं और आर्टिफिशियल लाइट्स जो ऑन हो चुकी हैं और ग्रेजुअली अपना इफेक्ट लेंगी इस नेशनल बैंक स्टेडियम में। ओवर नंबर 36 स्लॉग स्वीप के लिए गए और इतना खास मेडल नहीं कर पाए, 1 रन का इजाफा। और कमेंट्री बॉक्स में मैं खुशामदीद कहूँगा सिकंदर बख्श साहब को। थोड़ी सी मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई है हमारे जो स्टैंडर्ड देख रहा हूँ बैटिंग का, वो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों ने ना जो T20 के वाली जो स्ट्रेटजी है वो अडॉप्ट की हुई है हर एक ने। वो जो प्रॉपर क्रिकेट होती है, जैसे हम स्पिनर्स पे कह रहे थे फुटवर्क, ये कोई किसी ने नहीं करके दिखाया। और इतना अच्छा सेट थे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितने ओवर हैं आखिरी ओवर तक जाएँ, वो दोनों ने अपनी विकेटें लूज़ कर दी हैं। जी हाँ बिल्कुल, और कदमों का इस्तेमाल भी इस तरह से नहीं देखने में आया। देखिए क्रिकेट के अंदर फुटवर्क अगर आपका नहीं है तो आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सकते। पर मगर आजकल इस बॉल के बाद बात करते हैं, आजकल T20 क्रिकेट की वजह से ना लोग फुटवर्क पे ज़्यादा जोर नहीं देते, वो इंतज़ार करते हैं कि कोई शॉट गेंद। कई उन्होंने अच्छे शॉट्स खेले मगर वो सारे T20 वाले थे। मगर जो क्रिकेटिंग शॉट होता है कि निकल के कवर ड्राइव, वो कोई नहीं खेला। अब जैसे ये बैट्समैन खेल रहा है अम्माद जो हैं, अब ये कोशिश करें कि इसको सिंगल ले ले। डॉट बॉल्स खेलने से कोई फ़ायदा नहीं। वैसे ओवर्स तो अभी भी 15 पड़े हुए, कोशिश करनी चाहिए। ये किसी में मैंने क्वालिटी नहीं देखी। आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड। ये हमारे फर्स्ट क्लास के सारे अच्छे लड़के हैं और मैं बहुत अरसे के बाद इनको देख रहा हूँ इस तरह लाइव खेलते हुए। किसी में वो क्लास नहीं है कि रिस्ट को रोल करके कुछ सिंगल पिक कर ले। जी हाँ बिल्कुल, एक दफ़ा फिर सीधे बैट के साथ वापस बॉलर के पास और कोई कलाइयों का इस्तेमाल नहीं कि टैप करके उसको ऑन साइड पर सिंगल निकालें। ये तो ऐसा खेल रहे हैं जैसे टेस्ट क्रिकेट है, उसको तो खेल सकते हैं। कवर कितने पीछे खड़ा हुआ है। Oh yes boy, yes boy.
विकेट टू विकेट बॉलिंग की और ओवर मुकम्मल किया। 1 रन आया इस ओवर में। 160 पर 6, 36 ओवर्स के बाद पीटीवी। फॉलो विकेट्स 74 रन पे चौथी विकेट गिरी थी। उसके बाद 5वीं और छठी विकेट 159 के स्कोर पे गिरी। पार्टनरशिप जैसे ही डेवलप होना शुरू हुई वहां पे इन्होंने अपना एक मोमेंटम लूज किया बैटिंग साइड ने। कराची का खूबसूरत मंजर है, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और इलाके हैं। बहुत ही खूबसूरत ये व्यू है कराची का। कासिम जो है वो कराची के बारे में पूछना चाह रहे थे, तो ये देखें आकर, मगर अफसोस के ग्राउंड में कोई नहीं है। आमिर 7वें ओवर के साथ। देखिए जहांदार जो हैं उनको बहुत हाईली रेट किया गया हुआ है। हम सब उनको बहुत टैलेंटेड, मैं उनको अच्छा टैलेंटेड प्लेयर समझता हूँ। उनको न्यूजीलैंड भी भेजा गया था, उन्होंने वहाँ इतनी ज़बरदस्त गेंदें नहीं की। इनमें टैलेंट है, मगर ये वक्त होता है टीवी के सामने अच्छी बैटिंग करके दिखाना कि मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, क्या गुड ऑलराउंडर। तो उनको अपनी बैटिंग को भी थोड़ा दिखाना पड़ेगा, मगर वही चीज़ कि हर बॉल को वो डेड स्टॉप किए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा सिंगल के लिए कोशिश तो करें। फील्डर भी मिड ऑफ के पास है और जी हाँ बिल्कुल कदमों का इस्तेमाल ना फास्टर बॉलर्स पे देखा ना स्पिनर्स पे, और इस तरह की बॉल पे चार्ज करके ऊपर से भी खेला जा सकता है। लेकिन जायदाद को भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ इसलिए, लेकिन यही फीचर रहा है थ्रू आउट द इनिंग्स। डॉट बॉल्स आ रही हैं या फिर बाउंड्रीज आ रही हैं। 6 मैचों में जहांदाद ने सिर्फ 80 रन किए हुए। उनकी जो एवरेज है वो 20 की है, जो इतनी मज़ेदार नहीं है। अच्छी बॉल आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, एक्स्ट्रा बाउंस के साथ आमिर बहुत इंप्रेसिव रहे, बहुत इकोनॉमिकल 1 for 19 और अपने 7वां ओवर कर रहे हैं। एक और चीज़ जो मुझे बॉलर्स में, जैसे कि आमिर ने शूट स्पेल बहुत अच्छा किया, नया गेंद था, गेंद स्विंग हो रहा था, अच्छी लेंथ पे गेंद कर रहे थे, हाइट भी पकड़ रही थी, मूव भी हो रहा था। अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं ना, कि क्या लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ गेम, इसलिए कि 50 ओवर हैं, अभी भी 14 ओवर बाकी हैं। 14.3 ओवर्स वो अच्छे खासे होते हैं T20 के अंदर, उसमें तकरीबन 140 रन बनते हैं। मगर विकेटें लूज़ कर गए, जो टॉप बैट्समैन है वो निकल गए, और जो बैट्समैन की मैंने आपको कमज़ोरी बताई, नो फुटवर्क, जो मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। फुटवर्क ना डाउन द ग्राउंड है ना, कोई इन्होंने अपना रूम बनाया है कोई कि बॉल को आउटसाइड दी ऑफ स्टंप खेलें या कोई कट करने की कोशिश करें। मुझे लगता है अगर उनको ये कह दिया जाए ना कि जॉब 14 ओवर है मारो, तो शायद वो बेहतर खेलना शुरू हो जाए, और वो जो स्टाइल है T20 क्रिकेट का वो अडॉप्ट कर लें, इधर से उधर मारें, उधर से इधर मारें, स्कूप शॉट, रैम शॉट, पता नहीं क्या क्या शॉट्स आ चुके हैं। मगर इसलिए कि उनको कह दिया गया कि आराम से खेलो, पूरे ओवर खेलो, तो बिल्कुल फंस गए हैं ये। लेकिन डाउन द लेग साइड आउट नहीं होंगे, और शायद यही मैसेज है कि बस आउट नहीं होना, विकेट पे रहो। तो इस बात को इतना उन्होंने बात को मानी है कि अब तक डॉट बॉल्स की भरपूर भरमार है यहाँ पर। ये ओवर भी मैडन जा रहा है। हाँ, वही बात है कि वो देखें, ये डाउन द लेग साइड था, वो पिच भी आउटसाइड ऑफ स्टंप, आउटसाइड लेग स्टंप था, तो लेग बिफोर का कोई चांस नहीं। और वो आमिर को जो शार्पनेस नज़र आ रही थी ना, पढ़ के गेंद जाना, और जो इस वक्त वो नज़र नहीं आ रही है। गेंद भी पुराना हो चुका है, नया गेंद तो नया गेंद होता है, उसमें वो नज़र आ रहा था। और काफ़ी बाहर थी गेंद, मौका था उसको कट करते, लेकिन बॉल को जाने दिया हैरत अंगेज तौर पे। मैडन ओवर, इस स्टेज पे मैडन ओवर। जहांदाद खान ने 6 की 6 बॉलें डॉट बॉल खेली। 37 के बाद 160 पर 6 पीटीवी। कॉन्फिडेंस की भी काफ़ी कमी लग रही है, जिस तरह से उन्होंने कदमों का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत सी लूज़ बॉल, जैसे पिछली बॉल थी, उसको स्कोरिंग बॉल के तौर पे कन्वर्ट करना चाहते, लेकिन बॉल को जाने दिया। लेकिन सिंगल्स के बगैर जो है आप नहीं इतना प्रोग्रेस कर सकते किसी भी फॉर्मेट में।
देखिए दोनों लोअर ऑर्डर के बैट्समैन नज़र आते हैं। अमाद बट ने 5 मैचों में 4 इनिंग्स में सिर्फ 50 रन किए हुए हैं और उनकी औसत जो है वो 12.50 है। तो उसका मतलब है वो इतने अच्छे बैट्समैन नहीं हैं। जहांदाद ने सिर्फ 80 रन किए हुए। लेग बिफोर की अपील, रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट किया, बिल्कुल भी, और आउट दे दिया अंपायर ने। जी हाँ, इन फ्रंट ऑफ द स्टंप्स, और अमाद बट को वापस लौटना होगा। ओवर की पहली बॉल और अमाद बट लेग बिफोर आउट। देखें ये मुझे लगता है कि ही इज़ अ टेल एंडर। जिस तरह वो शू का ओवर खेले थे, कोई हर बॉल डॉट, यहाँ पे उन्होंने रिवर्स स्वीप खेला। यार सीधा गेंद खेल लो। मैंने कहा ना कि इनकी इलीगल बॉल है। इनकी सब की जो है ट्रेंड जो है वो T20 में हो गई है। तो मेरे ख्याल से अब उनको चाहिए, देखें बिल्कुल सीधा गेंद था, रिवर्स स्वीप मार दिया और ऑब्वियसली गेंद स्टंप्स के दरमियान था। उनको चाहिए कि सीधा तो खेलो। ये लगता है सारे अब T20 की तरफ चले गए हैं। अमाद बट 0 पे आउट हो गए हैं, 180 पे 7, सॉरी 160 पे 7। एक 160 पर 7, 37 ओवर्स और एक बॉल का खेल मुकम्मल। अमाद बट आउट होने वाले बैट्समैन। और वही बात कर रहे थे कि डॉट बॉल्स 0 बनाए, 10 गेंदों का सामना किया। अली उस्मान जो है नए बैट्समैन हैं। अब देखते हैं कि इनकी क्या परफॉर्मेंस है। अगर मैं देखूं तो इन्होंने 6 इनिंग्स खेली हैं और उसमें सिर्फ 46 रन किए हैं। तो ये भी टेल, हम इनको कह सकते हैं कि ही इज़ अ टेल एंडर। इन्होंने 7 मैच खेले हैं, 6 इनिंग्स में इन्होंने सिर्फ 46 रन किए, 7 की इनकी औसत है। तो लुक्स लाइक ही इज़ आल्सो अ टेल एंडर। और अभी भी 13 ओवर बचे हुए हैं और उनके पास सिर्फ 3 विकेटें रह गई हैं। और जो विकेटें, मुझे लगता है कि अब टेल शुरू हो गई। जिस तरह ये बैट्समैन पिछले 2 में खेला और ये खेल रहे हैं, मुझे तो यही लगता है कि अब इनकी टेल शुरू हो गई। ये हिम्मत हार गए या ये कोशिश नहीं करना चाह रहे। स्पेशलिस्ट बैट्समैन जो थे उन्होंने भी खास कदमों का इस्तेमाल नहीं किया, न फास्ट बॉलर्स पे न स्पिनर्स पे। और कोई भी बैट्समैन उतना प्रोमिनेंस हासिल नहीं कर सकता अनलेस कि वो सिंगल्स पे निसार न करे। ये आउट होने वाला का मंजर। ऑर्थोडॉक्स शॉट्स नहीं खेले जा रहे थे इनसे और काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे अमाद बट, लेकिन रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट किया जब आप ऑफ द मार्क नहीं हुए और आपसे जो है वो टैप करके कलाइयों का इस्तेमाल करके आप सिंगल्स भी नहीं ले पा रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। और रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट किया और कीमत अदा की स्ट्रेट अवे। और जहादात के साथ अली जो है उन्होंने अभी अपना अकाउंट ओपन किया। डीप मिड विकेट पे बाउंड्री पे फिल्टर मौजूद, फाइन लेग पे बॉल को जाने दिया। देखिए जहादात के लिए कहा गया है कि बहुत अच्छा ओवर हो चुका है। सॉरी 161 for 7। फाइनल ठीक है, राइट आर्म ओवर। 161 पर 7, 38 ओवर्स के बाद और रन्स की तलाश में। ये वो फेज़ है इनिंग्स का जो काफ़ी तकलीफ दे बैटिंग साइड के लिए। बिल्कुल रन्स भी नहीं आ रहे और विकेटें गिरती जा रही हैं। 159 के स्कोर पे 2 विकेटें गिरी, उसके बाद 160 पे एक और 7वीं विकेट गिरी और रन्स मिलेंगे। डेलिब्रेट खेलने में कामयाब हुए, अच्छा शॉट स्टेयर किया इसको विकेट कीपर के दाएं जानिब, 4 रन्स। देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत खूबसूरत शॉट, मगर ये कि बहुत यूज़फुल शॉट। ये ऐसा शॉट जिससे 4 रन उनको मिल गए।
शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद की थी। इनको चाहिए बीच बीच में गेंद करें। ये देखें गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ और उन्होंने इसको स्लिप के बीच के ऊपर से खेल दिया। अगर उन्होंने डेलिब्रेट खेला है तो मैं कहूँगा वाकई इट्स अ वेरी गुड शॉट। अगर कहेंगे हाँ जी मैंने ये शॉट माना है बनाकर तो बिल्कुल, अदरवाइज़ मेरे ख्याल से वो कट खेलने गए थे मगर खेल गए अच्छा और 4 रन मिल गए जो कि बहुत यूज़फुल है। थर्ड मैन काफ़ी फाइन है लेकिन विकेट कीपर के बिल्कुल दाएं जानिब कोई मौका नहीं, स्लिप के जो है उनको ले लिया गया है, फर्स्ट स्लिप पोजीशन। अली जो है लगता है वो उनका बल्ला जो है थोड़ा सा खुल जाता है इसलिए कि वो स्लिप से जो मारा और ये जो आखिरी गेंद खेली है ये भी उनका बल्ला जब खेला है तो थोड़ा सा खुल गया, जैसे कि वो कई प्लेयर खोल देते हैं टुवर्ड्स द थर्ड मैन, और वैसे ही लगा पॉइंट की तरफ गेंद गया था। तो देखते हैं कि अब भी कैसा खेलते हैं। ये भी टेल एंडर हैं और उनका मैं स्कोर निकालता हूँ कि इन्होंने कितना स्कोर किया है अब तक। इकोनॉमिकल बॉलिंग आमिर की, विकेट उनको इतनी नहीं मिली जितनी अच्छी उन्होंने बॉल की है और अपना 10 ओवर्स का कोटा मुकम्मल करेंगे। 8वें ओवर्स में है, एक चौका अब तक आ चुका है तो अभी भी 11-12 ओवर बाकी और उसमें अगर थोड़ी सी डिसेंट पार्टनरशिप आ जाती है टेल एंडर्स के दरमियान जो कि काफ़ी टीजिंग होता है बॉलिंग साइड के लिए, तो 225-220 का स्कोर इतना नामुमकिन नहीं है। जैसे आप अभी कह रहे हो ना कि अभी भी 10 ओवर बाकी हैं, इस तरह खेलने तो कोई फ़ायदा नहीं। मतलब है कि बॉलें भी ज़ाया हो रही हैं, रन भी नहीं कर रहे। ये आखिरी बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ उन्होंने डक किया, डक किस तरह नहीं करना चाहिए, गलत किया। इनको कोच सिखाए कि किस तरह डक करना चाहिए, बिल्कुल आंखें बंद करके नहीं करना चाहिए। अगर खेलना है तो फिर खुलकर खेल दें ताकि कुछ रन्स तो बन जाए। अगर इसी तरह खेलते रहे टुक टुक और उसके बाद आउट हो जाए तो फिर बिल्कुल बेमकसद हो जाता है। ये चांस तो लेना ही चाहिए। ड्राइव करने में कामयाब हुए, एक ही रन बनेगा और गैप्स मौजूद हैं। आप देखें पूरा लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पूरा खाली है और कदमों का इस्तेमाल करके एग्रेशन के साथ रन्स आ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मोहतात हैं दोनों बैट्समैन। देखिए ये लोग टेल हैं, अब टेल को हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो खूबसूरत शॉट खेलें, गैप्स ढूंढें। ये टेल एंडर्स हैं, यानी कि 9वें नंबर का बैट्समैन है, तो टेल को हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। मगर मैं जहादात पे मुझे वो थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि इनको थोड़ा सा अपनी क्लास दिखानी चाहिए, कोई अपने शॉट्स वगैरह दिखाने चाहिए। इनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है कि ये बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, तो उसको क्लास शो करेंगे तो फिर सेलेक्टर्स की नज़र में आएंगे और ये बड़ा अच्छा मौका है कि एक अच्छे से 30-35 रन करें तो फिर मज़ा आए। जी बिल्कुल, बैटिंग एबिलिटी तो है लेकिन यहाँ बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स। जहादार सिर्फ एक ही रन बनाया, 9 बॉलें खेल चुके हैं, कंप्लीटली स्ट्रगल करते हुए इस डॉट बॉल के साथ ओवर मुकम्मल 39 ओवर्स के बाद 166 पर 7। आदिल 2 for 26 अपना 7 ओवर करेंगे। आप कोई हिकमत अमली में तब्दीली आती है नहीं इस ओवर में? अब तक आदिल को भी टारगेट नहीं किया पीटीवी की टीम ने। कदमों का इस्तेमाल करके इसको टैप किया, 1 रन का इजाफा। जी इस तरह से अगर कदमों का इस्तेमाल करके टैप करे तो रन आते रहेंगे सिंगल की फॉर्म में। ये चीज़ जो है ना शुरू के जो टॉप प्लेयर्स थे उनको करनी चाहिए, कदमों का इस्तेमाल सिंगल्स पिक करें। देखिए जब आप लंबे फॉर्मेट की क्रिकेट खेलते हैं, ये थोड़ी सी लंबी है, T20 की हमें इतनी आदत हो चुकी है तो ये थोड़ा बहुत लंबा लग रहा है कि जी 50 ओवर खेलना है, तो इस किस्म की क्रिकेट बैटिंग करना बहुत ज़रूरी है। आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद थी, उसको खेल दिया ऑन साइड पे, बाउंड्री ढूंढने में कामयाब हुए जहादात खान, गैप निकाला और कीमती 4 रन और पहला चौका जहादात के लिए। देखिए इसी तरह इनको खेलना चाहिए। अगर अब 2 विकेटें तो रह गई हैं, 2-3 विकेटें रह गई, अगर ये टुक टुक करते रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर आउट होके चले जाएंगे। फिर खुलकर खेल लें, अभी आखिरी ओवर्स रह गए हैं, अभी भी उनके पास चांस है कि कुछ रन्स कर लें। ये छक्के वाला बॉल था, फुल टॉस था, ये मिड विकेट पे उसको ज़ोरदार हिट लगनी चाहिए थी, मगर लगता है कि वो उस फ्रेम ऑफ माइंड में है कि मैं आराम से खेलूँ। ये वो स्वीप शॉट है, स्मैश किया डाउन द ग्राउंड, फील्डर मौजूद, कुछ नहीं कर पाएंगे, इनके सर को क्लियर किया।
बहुत ही अच्छा शॉट, अच्छा कनेक्शन, और 4 के बाद 6 रन हासिल किए लेफ्ट हैंडेड जहादाद ने। क्या ये हमारी बातें सुन रहे हैं? लगता है वो ये कमेंट्री सुन रहे हैं कि जो हम कह रहे थे, पर अब खेलो, अब T20 वाली क्रिकेट जो भी खेलें, जितने भी रन बन जाए इनके लिए काफ़ी है। ये चौके के बाद उन्होंने छक्का लगाया और ये बहुत अच्छा खेल सकते हैं, इस तरह वो खेलना चाहिए उन्हें। वाइड होगी ये, और अंपायर का इशारा वाइड, जी हाँ बिल्कुल। और दोनों चौके और छक्के जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसी बॉल थी, फ्लाइटेड बॉल आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। एक को मिड विकेट बाउंड्री का कॉर्नर की तरफ 4 के लिए खेला, एक को स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेले, और बीच में एक फुल टॉस थी, लूज फुल टॉस, उसको डॉट बॉल खेल गए। बहरहाल रन तो आए, जहादाद डबल फिगर्स में पहुंच चुके हैं 11 पे, और उसको ड्राइव किया 1 रन के लिए। तो अच्छा ओवर और महंगा ओवर आदिल का। ओवरऑल इनकी काफ़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग फिगर्स रही हैं। मैं भी हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि अगर आपने 2 अच्छे बड़े शॉट्स खेल लिए हैं तो अभी ओवर्स काफ़ी बाकी हैं, अभी भी 10 ओवर बाकी हैं, तो अभी सिंगल ले लो। उन्होंने बहुत अच्छा किया, जहादाद ने सिंगल लेकर स्ट्राइक उनके हाथ में आ जाएगी नेक्स्ट ओवर में। और रिस्ट को रोल करते हुए ऑन साइड पर 1 रन का इजाफा, और अली जो है वो स्ट्राइक रिटेन करेंगे 40 ओवर्स के बाद 180 फॉर 7। पावर प्ले का सिग्नल, थर्ड पावर प्ले 180 फॉर 7। कुछ शॉट्स आना शुरू हैं, तो पार्टनरशिप जो है अब यहाँ से लगनी चाहिए, अच्छी पार्टनरशिप, तो 230-40 के करीब स्कोर जा सकता है। देखिए मैंने कहा ना कि जहादाद में टैलेंट है, हमने इनको खेलते हुए देखा है PSL में, और मैं तो उनको अच्छा टैलेंटेड मानता हूँ, मगर इन्हें जब टैलेंट हो ना तो उसका दिखाना पड़ता है आपको। जब तक आप वो टैलेंट को दिखाएंगे नहीं तो वो आपकी पहचान नहीं होगी। निक था और बॉल आगे गिरा, विकेट कीपर से कोशिश अच्छी की रोहेल ने, लेकिन काफ़ी आगे। रोहेल ने जो पहला कैच पकड़ा था बहुत अमेजिंग कैच पकड़ा था, और ये तो खैर काफ़ी पहले गिर गया गेंद के ग्राउंड पे उनके, और हालांकि वो चले गए थे, वो पहुंच गए थे रीच में, वो उस बॉल के तक पहुंच चुके थे, मगर वेरी गुड ट्राई, मगर थोड़ा सा पहले गिर गया। वेल डन। शायद 2 कदम आगे आ जाए क्योंकि बॉलर के पेस को देखते हुए। अर्शदुल्लाह भाई बहुत ही उम्दा बॉलिंग की, इंप्रेसिव बॉलिंग की, लेकिन सिर्फ एक ही विकेट इनको मिली। ये है बैटिंग कार्ड, और कोई 50 नहीं आया अब तक, कोई इंडिविजुअल 50। 48 के साथ तैमूर टॉप स्कोरर रहे, 25 और 20 के कुछ रन, 35 के ताहा ने, और अभी सारा दारोमदार है अली के ऊपर, अली और जहादाद। जल्दी से अगर ये स्कोर बोर्ड रखें, देखिए जो मिडिल ऑर्डर में 25, 20, 35, 38, ये अच्छे स्कोर है। इन बैट्समैनों को चाहिए था कि वो लेके 50 तक जाते। ड्राइव करने में कामयाब हुए 1 रन। जी हाँ, ये कन्वर्जन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टार्ट मिल जाए तो उसको आप 70s और 80s में कन्वर्ट करें, तो फिर जो एक फाउंडेशन आपको मिलती है, और फिर आखिरी के जो 4-5 बैट्समैन है उनके लिए मौका होता है। हमारे दौर में हमारे जो बड़े प्लेयर थे वो ये कहते थे कि शुरू के 20 रन करना मुश्किल होते हैं, फिर उसके बाद फिर कोई आउट नहीं कर सकता ये। मगर हमारे अभी मैं ये देख रहा हूँ जो ये चीज़ अब हमने देखी, जो फिनिशिंग टच जिसे कहते हैं कि आखिरी तक ले जाना, ये मिसिंग थी PTV में। हालांकि मिडिल ऑर्डर में आप देखें, मिडिल जो लाइनअप है, अच्छे खासे 35-35 रन हो जाना, और अच्छे खासे रन होते हैं। अब उसको उन्होंने कन्वर्ट नहीं कर सके बड़े स्कोर में। बड़े ही दिलचस्प मूड में देखें, ये स्कोर कार्ड आप देखें कि शुरू के जो 2, 11 और 14 ठीक है, मगर उसके बाद 25, 20, 35, 38 रन, ये इट्स अ गुड स्कोर। जब आप ये स्कोर कर लेते हैं तो फिर इसको लेके जाएं लंबे स्कोर के लिए, ये क्वालिटी होती है बैट्समैन की, यहीं से आप बनते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। खैर जहादाद अभी मौजूद हैं 12 रन पे, देखते हैं कोई अपनी कोई झलक दिखाएं। 1 ओवर में तो दिखा दिए, मगर बहुत कामली खेल रहे हैं, अभी भी 10 ओवर बाकी है, 10 ओवर।
फॉर डॉट बॉल, फिर से जो है वो मोहतात मोड में यहाँ पर जहादात, लेकिन कोई ख़ास मौका नहीं, कोई ख़ास फिट नहीं, तो बहुत ही दिफाई अंदाज से खेलते हुए। जितना मैंने उनको देखा है, जितना जहादात का, वो बहुत ही डिफरेंट मूड में खेल रहे हैं और उन्होंने ये फैसला किया, ही नोज़ कि वो छक्का भी मार सकते हैं, चौका भी मार सकते हैं, तो वो शायद कह रहे हैं कि मैं खेलता रहूं, आखिरी में जाके करूं, तो वो अल्लाह करे वहां तक पहुंच जाएं, बस बीच में विकेटें ना गिरें, अदरवाइज फिर वो ज़ाया हो जाएंगी जो ओवर्स हैं। पुल कर दिया इसको, पीछे गिरा हुआ गेंद और डिसमैच कर दिया इसको बाउंड्री होर्डिंग से बाहर। उम्दा शॉट, अच्छा कनेक्शन, 6 रन। देखिए मैंने पहले कहा है कि इनमें वो टैलेंट है, अब इन्होंने दिखाना है। ये गेंद शॉट ऑफ लेंथ था, बहुत खूबसूरत पुल किया, बहुत अच्छी टाइमिंग के साथ किया स्क्वायर लेग पे। तो जहादात देखिए ये बहुत अच्छा शॉट मारा है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, और गेंद का देखें, जब अच्छा गेंद आप शॉट मारते हैं तो उसको फॉलो भी करते हैं और वो फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं क्या वो कहते हैं ना हम अपनी ज़ुबान में, अच्छा ये ओवर हो गया है शायद, ये देखें, और गेंद को उन्होंने देखा है, फॉलो किया है, विच इज़ साइन ऑफ अ गुड बैट्समैन। जी बहुत ही अच्छा पनिश किया। 41 ओवर्स के बाद 187 पर 7 अरशदुल्ला का ये एक शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन काफ़ी वक्त है इनके पास, जहादात के पास, पीछे गिरी हुई गेंद, अच्छा पनिश किया। तो 2-3 शॉट्स इनके पास है जहां उनकी रेंज में आ रही है, तो वहां उन्होंने शॉट्स खेले हैं, वरना उनके पास डॉट बॉल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अच्छी बात है कि पार्टनरशिप यहाँ पे थोड़ी सी डेवलप होती हुई 8वीं विकेट के लिए। नॉर्मली शॉर्ट पे डिलीवरी बहुत अच्छी की अरशदुल्ला ने, लेकिन थोड़ा ये पे कम पेस के साथ यहाँ पे मौका मिला जहादात को, रेंज में आई गेंद, अच्छा लंबा छक्का लगाया, बाउंड्री होर्डिंग्स को क्लियर किया। अली 9 पर खेल रहे हैं, उनको भी कुछ शॉट्स अभी खेलने होंगे साथ देने के लिए। 9 ओवर से खेल बाकी। आदिल 8वें ओवर के लिए कदमों का इस्तेमाल किया, 1 रन के लिए नहीं, लेकिन फिल्टर मौजूद। अभी मैं तो यही कहूँगा अली को कि बिल्कुल ना खेलें, वो सिर्फ सिंगल्स दे के खेलने दें जहादात को। जहादात अगर आखिरी ओवर तक चले गए तो हो सकता है कि ये 230, 35 या 40 तक रन्स पहुँच जाएं, तो इनको वैसे ही खेलने दें जिस तरह खेल रहे हैं, तो इनको बिल्कुल हिंट ना दें आप कि वो मारे, वो लेट हिम प्ले इसी तरह, लेकिन गैप में खेलने की कोशिश होनी चाहिए, और दोनों बॉल जो है वो दोनों दफ़ा फील्डर के हाथ में। हाँ 250 का एक हिस्सा जो है इनके जहन में दोनों बैट्समैनों के होगा, एक डिसेंट स्कोर होगा अगर 250 तक पहुंचते हैं यहाँ से। अच्छा शॉट, अच्छी प्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेट बैट, बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ ही इसने सिंगल लिया, आपने देखा, बड़ा सीधे बल्ले के साथ खेलते हुए, मतलब ये कि जो पहले बैट्समैन खेल रहे थे उनसे ज़्यादा बेहतर उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ ये शॉट खेला है। अब इसी तरह खड़े रहें और जहादात जो है वो कोशिश करेंगे रन बनाने की, देखते हैं। अभी तक तो वो काफ़ी कामयाब रहे हैं, 16 गेंदों पे 18 रन कर चुके हैं, मगर आराम से कोशिश करें कि ये 48 ओवर तक तो पहुंच जाएं, तो फिर अच्छा स्कोर हमें मिल जाएगा देखने को। तो डिफाइन अंदाज से खेले, इसको भी थोड़ा फोर्सफुली डाउन द ग्राउंड खेल सकते थे, लेकिन जहादात ने इससे पहले आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंदों को जो चौके और छक्के के लिए पहुंचाया था, जो पिछला ओवर था आदिल का। एक और रन। वो जो आप कह रहे हो ना कि उन्होंने आराम से खेल के जो रन बनाया, तो उनको ये शायद जहादात को ये कॉन्फिडेंस है कि मैं खड़ा रहूँगा तो मैं कर दूंगा, मैं मार सकूंगा, तो हो सकता है ये वजह से कि वो हल्का हल्का पुश करके रन्स ले रहे हैं। बड़े पुरतमाद अंदाज से सिंगल लिया, और अच्छा साइन है कि इस पार्टनरशिप में जो है स्ट्राइक रोटेशन आती रहे। तो बाउंड्रीज बिल्कुल ब्लॉक नहीं हुई हैं, लेकिन रन्स भी आ रहे हैं, बाउंड्रीज भी आ रही है। 42 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं, 190 पर 7, और कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली इनिंग्स के आखिर तक आपका साथ देंगे ज़िशान खालिद और कासिम शेख। Thank you very much, Farouk Riaz and Sikandar Bakht. As we come to the back end of this innings, PTV at 190 for 7. Just a little graph there on the comparison of pace and spin. Once again, a good probing line and length from
Arshadullah, he's into his last over. He managed to induce an outside edge in the previous over as well when it didn't carry towards Ruhail Nazir. And once again, a delivery that was slightly straighter. Just drawn onto that front foot, Ali Osman. Lucky that there was no nick involved, otherwise Arshadullah would have got another one. But yeah, Qasim, it's a very important passage of play for both these teams. OGDCL will be hoping that they can wrap up the innings as early as possible. Beautiful bowling by Arshadullah. Corridor of uncertainty. And the batter is definitely uncertain. Beating the outside edge, back-to-back deliveries now, straight through to the keeper. And keeping the pressure on this PTV batting lineup. 190 for 7. They'll want to get somewhere in the range of between 230 to 250 if they can. That was the first delivery, and the very next ball, almost identical. Lucky enough, Ali Usman. I think he was just looking to turn it down towards third man. This time he's just getting on top of the bounce and taking a single towards Amir Khan, who was a deep third man. PTV will be hoping that they at least bat their full 50 overs and try to get as close as possible to that 240, 250 mark to give their bowlers to something to play with. Yeah, absolutely, Zishan. They have to bat the overs. There's nothing worse than finishing your innings with a couple of balls still left out there, especially when they've not quite got to the total they probably planned to get to. But if they can get in range of 230, 240, around there, they'll certainly have a fighting chance in this first semi-final of the President's Cup. Nicely turned away towards a deep square leg by Jahandad. Now he has been in decent form with the bat, Jahandad. Even in the previous match when they were up against State Bank of Pakistan, he was promoted up the order at number 7 I guess, and he did score a valuable 41 of just 23 deliveries, although the situation was a little different. He had the set batter at the other end. Today he has lost wickets. Now he needs to make sure that he stays out there till the end of the innings for PTV, and so far Ali Usman has done a pretty decent job. Well, played into the offside just for another single. Good bowling again though by Arshadullah. After his first over that he bowled today, where he sprayed the ball around a little bit, he's been consistent throughout his spell, and his figures back it up. 1 for 49 off 9.5 now. He'll want to finish well, but yes, good spell of bowling by him. Yeah, always an edge when you have a left arm spinner, seaman, especially of his height, because you do get a bit of more bounce. We saw that when he got that wicket of Shamil Hussain. Giving all respect back towards Arshadullah. Pretty decent last over from Arshad comes to an end. He finishes his spell with 1 for 49 after 43. PTV are 193 for 7. Adil Amin has been very decent with the ball. Came out very late to bowl here today, but once again getting a couple of wickets, being the captain. Not a big turner of the ball, but his line and length has been immaculate. Commentators curse. As soon as you are praising his line and length, he delivered a wide one outside the off stump.
Going for the quick single, but I think the batter is safe. Imam Haq moved well at mid-wicket there. Quick release. The batter who called the single was well on his way, the non-striker. He delayed a little bit, which made him have to sprint a little bit at the end, but I think he's comfortably home. It was always going to be a risky single, especially knowing the fact that you had Imam ul Haq very close to the bat at short mid-wicket. Ali Usman was looking to use his feet, whereas it was Jahdat Khan who was running towards the danger end. Good effort this from Imam ul Haq nevertheless, making sure that he threw at the right end. It was Jahdat Khan. Initially he had a look at the ball. A direct hit was gone by some distance, but the fact that the keeper's hands had to retrieve the ball from quite a bit of distance behind the stumps, he's managed, and good, well done by the batter. Look at that stretch. For any youngsters watching, slide your bat in. Absolutely. Now he had his gloves in one hand and his bat at the other. He still did the right thing, that he scratched and made sure that he slid his bat in instead of just putting it inside the crease. He was getting into that position where he wanted to go for that big stroke. Might have got an inside edge. Once again, Danish Aziz at short third had to retrieve that ball, but he was eyeing himself for a boundary towards the leg side. Yes, he was not holding back there. That was the attempted big stroke there. You see, just covering the line of the stumps and massive inside edge. Yeah, if there wasn't an inside edge, it was definitely hitting middle stump, I think. But saved by that big edge, thankfully. Yep, definitely would have been a candidate for leg before Jahdat Khan. Quicker one. He's rushing through his overs, Adil Amin. Another one comes to an end. 44 done. It's 196 for 7. The lights are taking their full effect now here at Karachi National Bank Stadium. Very soon the skies will get fully dark, and then we'll really get to see how good these new lights are at National Stadium. But they look pretty bright to me. Yep, around about 20 to 25 minutes remain in the sunset. As we speak, we are going to witness another change in the bowling attack from the Combox end, since Arshadullah was done and dusted with his quota of 10 overs today. Imran Randhawa has been brought back, and he has bowled well. Imran has got wickets at crucial intervals for his team, especially that wicket of Taimur, who was looking so good out there. It's a full toss. Hits it towards the offside, does Jahdat, but will just get a run. Now there was an opportunity for him to straight away put the pressure back on the new bowler, but he missed it. Yeah, I think he missed out there. He could have done with playing it a little bit later. All he had to do was beat the backward point, and he probably would have got it away for 4. But he ended up mistiming it, and deep cover was able to get round. Ali now on 14 off 27. Jahdat 22 off 22, going well. 197 for 7 off 44.1. Worked onto the onside for a single.
I feel like Imran has been bowling all day, but he's only been bowling 8 overs. I think it's because he's bowled from both ends. He's really done a job for his team here today. 2 for 38 off his 8.2. Absolutely. In modern day cricket, if your economy stays low to around 5, I think it's a job well done from the bowler. And especially to go 2 wickets to go with them. He's been putting in that energy. He's been bowling at tight line and lengths, Imran Randhawa. And that's a slower delivery, smacked over the bowler's head. That's a brutal hit from Jahdad as he collects another boundary towards long on. Ooh, he hit that hard. Imran had to take quick, evasive action there to avoid that strike back by Jahdad. 26 off 23 now. You can see why they sent him in when they did. He was sent in, I think, with a purpose to give some momentum to this innings. He struck that very well. And can he take confidence from that and build on that now? This is exactly what the PTV will be hoping. 200 also comes up for PTV with that boundary straight down the ground. Just changing the field a bit. The short third man has been moved a little finer. They've got deep backward point in place. Low full toss driven. Imam ul Haq decided not to throw this time. Yeah, probably a wise choice. I think the batter was going to make it home safely, and the fielder backing up was scurrying round. So probably a safer option rather than risking overthrows at this stage of the innings. Ali Usman, who is more known for his bowling, is involved in this decent partnership alongside Jahdad. It looks a good shot. It looks a very good shot, and the finger eventually goes up as Imran Randhawa gets his 3rd of the day. Well deserved. He's a real fighter. He just keeps running in, keeps trying different things, keeping the pressure on the batter. And he's got his team another wicket now. 3 for 43 now, Imran, off 8.5 overs. Let's just have a look at this. Yeah, the heel is well behind that front line. And we can have a look at the front on in a second. Yeah, I think that's the leg stump, I think. Probably clipping leg stump. Good decision by the umpire. Ali Usman is gone. Another big wicket. And PTV are Ali Usman 15 off 29, LBW to Imran. PTV are in dangerous territory now. A couple more wickets and they're in a big risk of not batting their full 50 overs. Jahdad will be the man that they're relying on now. He's set at the crease. Not a lot of wickets now remain for PTV. Their lowest score in this President's Cup one-day tournament was 207 during the round stages. They still have just over 5 overs remaining in their innings, and even a runner ball from here on can take them to 240. Although if Jahdad connects some deliveries out of the middle of his blade, they can get few more, but it's important for him to stay out there in the middle. Yeah, sometimes in a situation like this, maybe what you need is just a couple of overs of just rotating the strike. Israr Hussain, left-handed batter, comes to the crease at number 10 for PTV. You know, sometimes just a couple of overs just to tick the score along a little bit, get to around 215, push towards 220, and then launch again with maybe 2 to 3 overs to go. Israr is not known a lot for his batting. Have another look at this one. Yeah, just probably clipping leg stump, I would say. Played across the line, which got the umpire's interest. And he's put the finger up. Beautiful view of Karachi National Bank Stadium. Yep, wonderful drone shot being captured of this iconic National Bank Stadium, Karachi. Now have a look at the bowling performance of all the bowlers of OGDCL. 6 bowlers being used, Imran Randhawa being the most successful of them.
3 for 43 so far for the fast bowler. Adil Amin, the skipper, has chipped in with a couple of wickets. And a wicket apiece for Arshad, Amir and Asif Afridi. Captain coming in to bowl the last over. It's a full swing of the bat from Jadad, but he denies that single. Now he's come towards that territory where he cannot really rely on his partner, because Isar is not known for his batting. He's hit that down the ground towards long on. Fielder's coming round. He'll take the single this time. I think if I was him, I'd be having a word with my partner just now and saying, look, we've still got just over 4.5 overs left here. Don't give your wicket away. I'm set. I'm on 28 off 25. Look for a single and then let me attack. Because what would be the worst outcome here would be that this new batter, Israr, tries to take it on, gives his wicket away and puts even further pressure on the team. And that's what tailenders usually do when they see spinners operating towards the back end of the innings. They look to go for those boundaries, but right now all he needs to do is to just get that single and get Jadad on strike. Well bowled, shabash. It's going to be really interesting to see who Adil Amin introduces from his end, because it's his last over of the day. Goes for the big hit. Now it's an opportunity. Mas Sadakat underneath that, and he's not going to miss this time. Another wicket to fall for PTV. It's the third of the day for the skipper Adil Amin, as Mas Sadakat takes an easy one. Couple of dot balls to a tail ender, and the brain cells started to go into overdrive, and he went downtown. Not downtown enough. Let's have a look at this one. Yes, it's definitely not a no ball. Jahandad standing at the other end. Yeah. Straight up in the air. Fielder's set himself and taking the catch very, very comfortably. And now 9 wickets down. Jahandad Khan. It is not Jahandad. It's Israr who's lost his wicket. The sun is about to set down here at Karachi, and the sun is setting down for PTV as well, because now they have lost 9 wickets with just 205 on the board, and they are in a danger of not even batting their full 50 overs as Faisal Akram walks in, the last man for PTV. More known for his wonderful left arm spin. Mystery. Very talented, very, very talented spinner. Made his debut recently for Pakistan. One more ball remaining for Adil Amin. He's been very good with the ball today. Slower through the air, well defended by Faisal Akram. Another successful over comes to an end from the skipper Adil Amin. He finishes off with 3 for 48 in his spell of 10 overs, as after 46, PTV are 205 for 9. Seems like Mohammad Amir Khan has been introduced in the attack again, now replacing Imran Randhawa from the combox end. Slightly short, now that has gone way up in the air. Backward point getting underneath it, and they made a meal of it.
There were no calling whatsoever from Imamul Haq, who was running in from backward point, and then Asif Afridi, who was running in. In the end, it dropped very closer to Asif Afridi, so you can expect it was his catch to be taken. No man's land. We'll give the benefit of the doubt. But yes, I think he could have made an effort for that. He's not a spring chicken anymore. Let's give him a bit of a leeway. Once again goes up in the air, this time over short third. He's gonna get a boundary. A valuable indeed for PTV. I think this is how Jandad needs to play now. 9 wickets down. He should be given the free license. Play your shots. If he comes off, he can get his team up to a decent total. But there's no point trying to rotate the strike now and risk number 11 getting out. He deserves the right to have a go here. Yep, he made a blunder by trusting his partner in the previous over, and we all saw what Israr did. After facing a couple of dots, he went for that big shot, the glory shot, but was holed out in the deep. Now, field has been changed. Third man goes back. Looking to drive that one now. Amir Khan is doing the right thing by trying to bowl it outside the off stump to stay away from that hedging zone of Jandad. We all know what he can do when he is presented with length deliveries. He has already gone down the ground. He is very good with his pull shots. It's important that OGDCL get him out as early as possible, because valuable 25 or 30 runs from here on can be very crucial. Now he goes up. It's another slower delivery. Mas Sadakat running in from long gone. Will he take it? Oh, he puts it down. Might have misjudged it, because Harun Arshad was walking in towards his direction. Got some good hang time on this. It went very high into the Karachi sky. Fielder came round, didn't quite set himself underneath it. Thickish edge. It goes fine, and third man will cut around. Keeper got gloves to it. Wasn't able to hold on to it. Jahandad is riding his luck here. Good on him. Plenty of opportunities have been presented in this over by Jandad. They see it was a regulation chance. He has already taken a good one. Dive towards his left, got a bit of glove to it as well. I think he could have gone two hands there, to be honest. I don't think it needed the one hand. But with all these cameras there, and you've already taken a splendid catch early on, and you want to take another one-handed one? Make the highlights package? Yeah, he's been very good behind the stumps, Ruhail Nazir. He's been part of domestic circuit for a very long time now. Represented Pakistan in the under-19 as well. Good over this from Amir Khan. Having a decent time with the gloves. Can't really get any closer to those floodlights. Spectacular view being captured by Mr. Farhan. Beautiful. 211 for 9 here. PTV off their 47 overs. Jahandad 35 off 31, and Fesso is 0 off 2. And Imran is back again from the other end again. He's a workhorse for this OGDCL team. He'll do anything his captain needs. Starts off with a full toss, and he lets that go to the keeper. There's Jahandad. Wide given by the umpire. Very late reaction, very late call, but it's a wide nevertheless. Might be the change of light. Umpire's still getting his eyes used to the lighting coming on. Maybe just giving a bit of a length. Touch and go. Touch and go. But what a night, what a day it has been for Imran Randhawa. 3 wickets for 44. It's a full toss, driven powerfully, but couldn't get it through Adil Amin, the skipper at extra cover. Very disciplined bowling effort as well from
Imran Randhawa as well as from the other bowlers. Just 9 extra runs conceded today. Very good, right in that block hole and outside the off stump. So 3 for 44 today for Imran Randhawa. That's how he got his first wicket, courtesy of a very good catch by that fielder at mid-wicket. Then Taimur coming down the pitch and Masud Aga taking a catch. And this one, well, can argue that it might have been angling down the leg side, but since he was looking to play across the line and the length was so full, the umpire raised his finger. As a player, you always want to contribute towards your team's performance in the knockout matches, and Imran Randhawa has done exactly that today. It's a full toss, powerfully driven. They have covered the angles very well. Imamul Haq at deep backward point. Just there was opportunity for a single, but once again he denied. I just feel PTV will be kicking themselves a little bit in regards to players not going on today. I think that could be maybe the difference at the end. Any batters that got themselves in were not able to kick on to score a big formidable score, and it's showing in their total now. Poor Jahandad, he's a sole survivor and he continues to fight. Excellent bowling from Jahandad, although they will come back with a second run as well, because it went right in the gap between mid-wicket and long on. But Imran Randhawa has been absolutely special today. He has been running in from both ends. He has been making sure that he bowls at a decent pace. We never really saw his pace going down at any stage of his spell. And he has been regularly bowling at that attacking line and length. He's got a couple of more deliveries left to wrap up this innings and add another wicket to his tally. Driven towards the offside, and this time Jahandad decides to get a single. And he's going to let his partner face the last ball of the over. We'll be hoping his partner can play it out and gives him another chance to go big in the next over. Faisal will take guard for his third delivery. Imran will bowl his final ball of what has been a very, very good spell so far. And he finishes with a dot. 3 for 47 off his 10 overs, and PTV 215 for 9 with 2 overs to go. It's that time of the day when sun starts setting down and the temperatures drop to early 20s. Still, it's been a very, very good performance from OGDCL. Amir Khan coming into bowl his last over. Outside edge, and once again put down by Ruhail Nazir. And this time the fielder at third man was pretty square, so Jahandad will collect a boundary for himself. I feel for Mohammad Amir. He's had a drop catch at slip today. I feel Ruhail should have taken this. Let's have another look at it now. Maybe a little bit harsh. The one previous he should have taken, but this was a tougher chance. He was at full stretch trying to take it one-handed. He's gone high up in the air here, Jahandad. I think he's got enough of it. All the way for 6. Yeah, the sound of the bat suggested that it's just going to go one way, and that is over the boundary ropes and over that fielder at long off. He has been trying to play that stroke for the last couple of overs as Jahandad Khan
This time getting the length and the connection. And that went sailing over that fielder at long off. A huge hit indeed. And another 6 for PTV. Yeah, he picked up that slower ball. Mohamed Amir, I think, realised that Jahandad was going to go for him. Tried to take the pace off the ball a little bit, but Jahandad spotted it quickly and timed it sweetly over that kind of wide mid-off area. Valuable contribution towards the end of the innings from Jahandad. 48 of just 38 deliveries. That's going to be a wide. Had to reach for that one. Luckily didn't get any bat to it. One more run added to the total. Just trying to keep the length full enough and the line wide enough to stay away from that hitting arc of Jahandad, but might have overcompensated and delivered a wide. 11 runs of this over already with 4 balls still left. Once again, bottom edge. Once again, it goes fine, and it's going to be another boundary for Jahandad. And what a brilliant innings this has been down the order from the big left-hander. Very well played, Jahandad. He's played a really important hand for his team. 52, look at the rate as well of 39 balls. 230 for 9 now. And if Jahandad keeps going, I don't want to curse him as a commentator, but if Jahandad can keep going, it could still get close to that 250, which is a very, very challenging total under lights and a big semi-final fixture. Absolutely, Qasim. Another swing and a miss. It's never easy for someone like Jahandad to bat lower down the order, knowing the fact that you do not have enough batters to play around. And you can't really pick up a single and trust your partner at the other end. He tried to do that once with Israr. Israr lost his wicket. Since then, we have been witnessing him denying those singles so that he can stay on strike. He has calculated his innings perfectly. Not many batters have been able to play with a decent strike rate. But look at him now, 52 of just 40 balls. Yeah, he'll probably walk into the dugout and just say, what's wrong with you guys? Well, it was easy out there. Should have let me go higher. Seems like he's batting on a completely different pitch today. But one big innings or one special knock can prove to be enough in the knockout matches especially. He gets a Dinkish outside, a third man. He comes around that one, Danish Aziz. Single taken by Jahandad. They're going at each other here. The bowler has been having a word. Can understand his frustration. He started well. He's hit it all around the ground. That was pulled. That was a lovely shot. He hit that very, very clean. Yep, he has been special today, Jahandad. Let's hope Faisal Akram survives this last ball of the over. And he does. No offering any stroke whatsoever. A very good over comes to an end for PTV. Mohamed Amir done with his spell for today. 1 for 47 in his 10. After 49, PTV 231 for 9. Heading into the last over of this PTV innings and this first innings of a must-win semi-final of this President's Cup 2025. I think they're bringing back Afridi to bowl left-arm spin in the last over of the innings. I don't think I would be very happy with having to come and do that stint. And he's bowling to the left-hander as well. So there is an opportunity here for Jahandad to try and get him away for a few big hits.
and really get PTV up to a pretty competitive total. All the fast bowlers were done, so I guess that's the best option they had. They could have gone for Danish Aziz, or they could have gone for Mas Sadakat as well. I'm very surprised that he didn't get an opportunity to bowl in this match today, but Asif Afridi, let's see what he can do in the last over. Start with a very good Yorker. Well bowled. Yeah, one thing is for sure, he's not going to give the ball much air, considering the fact that it's the last over of the innings and Jahandad can use that long handle. I'm not sure about his tactics here. It's not Waqar Yunus bowling and swinging Yorker here. I don't think he needs to dig it out that much. He needs to try and take him on here now. Standing deep inside the crease, Jahandad gets a low full toss, gets it in the gap, will get a boundary as well. This is the length he was after, and when he got it, he made sure that he puts that one away for a 4. Yeah, he's got some momentum now, and he needs to keep going. 3 balls left. What can Jahandad get his team's total up to? 240 plus they will take after the position they found themselves in. That was an attempted Yorker that turned out to be a low full toss, and he was able to put that away. Now, one thing Jahandad Khan can do is that he can come down the pitch. Since Asif Afridi is just looking to bowl it in the block hole. Now they have bridged that gap between long on and deep mid wicket by putting in a fielder at short mid wicket. He's a clever bowler, Asif Afridi. Look at his figures as well, 1 for 32 off 8.4. He really should have bowled his 10 overs considering his economy rate and the way he's bowled so far in this match. But yeah, to come back on and bowl the last over of the innings, it's some effort to do this. Another full toss, hits it hard and long and handsome, does Jahandad. Fantastic shot from Jahandad. He's seeing it big now, 63 off 46, and he's taken PTV above 240 now, 241 for 9. Can he finish with one big hit to get them close to that 250 mark? A lot of sixes in his innings today. Comes down the pit, takes it as a full toss, opportunity for the fielder at long on, and Mas Sadakat takes another catch for himself. So they lose another wicket, their last wicket of the last ball of the innings, and that wraps up the 50 overs for PTV. They have been bowled out for 241. Asif Afridi gets another wicket. No problems there. Everything behind the line. He decided to use his feet. It was a low full toss. Couldn't really bring any strength behind that stroke. And Mas Sadakat, who might have dropped a dolly early on at the slip cordon, takes another catch. But not before Jahandad Khan entertained us thoroughly with his wonderful knock. He scored a valuable 63 runs for his team today. And now they are in a position where they can definitely put up a fight in the second innings against OGDCL. Although it's not going to be easy, but at least the heroic effort of Jahandad Khan have given some chance, some respect to the score that PTV have got in their 50 overs. Remember, it was OGDCL skipper Adil Amin who won the toss, and they chose to bowl first. First 6 came of the bat of captain Shamil Hussain, then he mistimed one. Sarwar Afridi took a good catch, short fine. Then Rohil Nazir took an absolute beauty. Then we saw a partnership between the two batters. Imran Randhawa picks up his first wicket courtesy of another good catch. Taimur walked in. He made sure that he got a few boundaries. He's in good form, Taimur. But unfortunately, the partnership was broken by the captain Adil Amin. Then Taimur also lost his wicket. Imran Randhawa once again in action. That's how Ahmad Bas lost his wicket without even troubling the scorers. And then walked in Jahandad Khan. Imran Randhawa got his third of the day. Adil Amin got another one when Israr was looking to go downtown, and an easy catch was taken by Mas Sadakat. Then we saw a few edges going towards the keeper, a few edges going towards third man. This time the ball came right up the middle, and Jahandad Khan just losing his wicket of the last ball of the innings. So 241 is what PTV managed in their allotted 50 overs in the first semi-finals of this President's Cup. Shamil Hussain and Yasir Khan came out to open the innings. Shamil was the first batter to be dismissed, scoring 11. Yasir scored 14. Mohsin scoring 25. Suleiman stayed out there when he scored 20. Then a big partnership between Taha and Taimur.
Taha went on to score 35, whereas Taimur just fell short couple of runs of what would have been another half century. Jahandar was promoted up the order. He was the top scorer of the innings, scoring 63 of 47, losing his wicket on the last ball of the innings, and he was given some sort of support and resistance by Ali Usman, scored 15 of 29 balls. Just 10 extra runs conceded today by OGDCL bowlers, who I think bowl exceptionally well today. Amir was very lethal with the new ball, gave away just 47, got a wicket. So was Arshadullah. He got a wicket for 49 in his spell of 10 overs. Imran Randhawa, the pick of the bowlers, 3 for 47 today in his 10. Asif getting couple of wickets, and the skipper Adil Amin also chipping in, getting 3 crucial wickets for 47 in his 10 overs. Danish Aziz just bowling one solitary over where he went for 13. So 241 is what PTV have managed in their first innings. 242 will be the target for OGDCL when they will come out to bat in the second innings of the first semi-final in this President's Cup. And as soon as the openers are ready, we'll join you once again after the innings break.
अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एक बार फिर आपको कहेंगे नेशनल बैंक स्टेडियम कराची से, जहां आज प्रेसिडेंट्स कप वनडे टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है OGDCL और PTV के दरमियान। और अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि आज PTV ने पहले बैटिंग करते हुए 241 रन अपने मुकर्ररा 50 ओवर से बनाए और शानदार इनिंग्स जहादात खान की, जिसके बदौलत एक वक्त पे 170 पे 7 आउट हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद 240 इनफैक्ट 241 रन बनाने में कामयाब हुई PTV की टीम। मुझे ज्वाइन किया कॉम बॉक्स में टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर ने। खुर्रम, कैसे देखते हैं स्कोर को? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक अच्छा और डिसेंट टोटल हो गया है, और एक टाइम पे बिल्कुल नहीं लग रहा था, एक टाइम में ऐसा लग रहा था कि 200 ये रैप अप हो जाएंगे, मगर जिस तरह की एक अच्छी एफर्ट की और उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, जिस तरह की उन्होंने एक अच्छी डिसेंट इनिंग खेली, जिसकी वजह से इतना स्कोर हो गया कि ये फाइट बैक कर सकते हैं। विकेट से कामयाब रहे आज ODCL के बॉलर्स। इमरान रंधावा कामयाब तरीन बॉलर रहे, जब 3 विकेट्स इन्होंने अपने नाम की, और कप्तान आदिल अमीन भी 3 विकेट्स लेने में कामयाब हुए, और इन 3 विकेट्स के साथ अब वो दूसरे नंबर पे मौजूद हैं हाईएस्ट विकेट टेकर्स की कैटेगरी में। अगर हम प्रेसिडेंट्स कप वनडे टूर्नामेंट का जिक्र करें, एक अच्छी पार्टनरशिप लगी ज़रूर थी तैमूर और ताहा के दरमियान, लेकिन उसके बाद हमने देखा मुसलसल विकेट्स गंवाते रहे, और फिर जहादात खान आए जिन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली, एक कीमती 63 रन बनाए अपनी टीम के लिए, जिसकी बदौलत 241 रन से बना सकी आज PTV की टीम अपने मुकर्ररा 50 ओवर्स में। लेकिन आसान नहीं होगा, क्योंकि अब सामने होंगे 2 ओपनर्स जिन्होंने शानदार बैटिंग का मुजाहिरा किया है अब तक इस टूर्नामेंट में। एक एंड पे मास सदाकत है, दूसरे एंड पे इमाम उल हक है, और अगर इनकी विकेट जल्द लेने में कामयाब होती है PTV की टीम, तो जल्द ही मैच में वापसी आ सकेगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जिस तरह की सदाकत के बारे में एक हाइप क्रिएट हुई हुई है कि बहुत फेयरलेस क्रिकेट खेलने के लिए मशहूर हैं, और जिस तरह की इनकी शॉट्स हैं, बड़ी बड़ी शॉट्स मारने पे ये ज़्यादा बोलते हैं कि ये ट्रस्ट करते हैं। और इमाम ये वो प्लेयर हैं जिसकी थ्रू आउट पूरा ईयर एक फॉर्म रही है, ख़ासतौर जिस तरह इन्होंने काउंटी में हिस्सा परफॉर्म किया है, बड़े अरसे के बाद कोई पाकिस्तानी प्लेयर बैट्समैन काउंटी में इतना कंसिस्टेंट और इतने बड़े बड़े रन्स किए, फिर वापसी आए पाकिस्तान, डोमेस्टिक में इन्होंने किए, ट्रिपल सेंचुरी की, फिर उस फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए टेस्ट में गए, वहाँ 100 किया, फिर उसके बाद यहाँ डोमेस्टिक में अभी भी इस टीम को लीड कर रहे हैं, इस टूर्नामेंट को लीड कर रहे हैं लीडिंग स्कोरर्स में। तो बड़ी अच्छी फॉर्म है इन दोनों प्लेयर्स की, और ये टीम जो है बेसिकली तो एक ये कह लें कि ये दो इस टीम के 2 पिलर हैं जिस पे ये टीम डिपेंड कर रही है बैटिंग। तो देखते हैं कि आई होप कि ये आज अच्छा परफॉर्म करें अपनी टीम के लिए एक बार फिर। या बिल्कुल शानदार परफॉर्मेंस दोनों ही बैटर्स की तरफ से देखने को मिली थी। जब OGDCL ने अपना पिछला मुकाबला जीता था गनी ग्लास लिमिटेड के खिलाफ 182 रन के हदफ में, बगैर कोई विकेट गंवाए वो टोटल चेस करने में कामयाब हुई थी, जिसमें एक बार फिर मरकजी किरदार अदा किया था मास सदाकत ने, और सिर्फ 64 गेंदों पे 100 रन मुकम्मल किए थे। तो अब 242 रन की ताकुब में तैयार हैं माज और इमाम। जहादात खान पहली गेंद करते हुए पहली गेंद पे कदमों का इस्तेमाल किया, और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेले मास सदाकत। एक ठप्पा खाने के बाद गेंद गई बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। क्या बात है भाई, व्हाट अ स्टार्ट, बहुत ही खूबसूरत शॉट, कॉन्फिडेंस उनका साफ दिख रहा है। पहली शॉट में उन्होंने फीट को यूज़ किया, प्री प्लान था शायद, उन्होंने जज किया हुआ था कि, या ये भी होता है अक्सरियत में कि ज़्यादा प्रैक्टिस साथ में की हो तो आइडिया होता है कि पहला बॉल कहाँ पिच होगा और बॉलर के जहन में क्या होता है। और एक अच्छा स्टार्ट, और देखते हैं जहादात के ऊपर अगली 5 गेंदों का क्या प्रेशर होगा, क्योंकि प्रेशर तो डेवलप कर दिया पहली शॉट पे ही। दिफाई हिकमत अमली के साथ इसको पुश किया पॉइंट की जानिब, कोई रन हासिल हो सकेगा। उमूमन हम देखते हैं फ्लड लाइट्स के अंदर फास्ट बॉलर्स को कुछ ना कुछ हद तक मदद मिलती है, और अगर पहली गेंद का भी जिक्र करें, इतनी रफ्तार नहीं थी लेकिन एक शेप मिल रहा था जहादात खान को, लेकिन अपने आप को रूम बनाते हुए कदमों का इस्तेमाल करते हुए इसको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेले, और इसी अंदाज से बैटिंग करते हैं मास सदाकत। चाहे फास्ट बॉलर्स हों या स्पिनर्स हों, 2 कदम आगे आते हैं और कोशिश करते हैं कि दायरे का फ़ायदा उठाया जाए इब्तदाई 10 ओवर्स में। मुझे तो लगा सारा फ़ायदा है पहले ओवर में उठाने के चक्कर में मास सदाकत, मगर अच्छी चीज़ है, अटैकिंग प्लेयर है, फेयरलेस क्रिकेट खेलने के शौकीन है। जिस तरह ये शॉट खेला है, बहुत ही खूबसूरत शॉट, और उनके लिए पहली वाइड पॉइंट लिया हुआ था जिसकी वजह से ये बाउंड्री सेव हुई। और कहीं ना कहीं बॉलर को भी आइडिया था, जो मैंने आपको कहा कि साथ खेलने के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, तो उनको भी आइडिया था कि कट शॉट जो है इनका शायद फेवरेट है, और उसके लिए उन्होंने पॉइंट पे फील्डर पीछे लिया हुआ था इमाम, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, लीडिंग स्कोरर। और बड़ी अच्छी फॉर्म है इनकी, और उम्मीद करती होगी ये टीम आज कि ये एक बार फिर अच्छी इनिंग खेलें और अपने इस डिपार्टमेंट को OGDCL को फाइनल में रसाई पहुँचाएँ। और मुझे ऐसा लगता है कि
इमाम जो हैं पहले इमाम कोशिश करते हैं सेटल हों और उसके बाद इनिंग को लंबा करें, और ये एंकर रोल होता है और इससे हेल्प होती है दूसरे हैंड पे जो बैट्समैन है मां सदाकत, वो चाहें तो बड़ी हिटें खेल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा कॉम्बो लग रहा है इन दोनों का। या बिल्कुल दोनों बाएं हाथ के बैटर हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि एक जगह आपको मां सदाकत नज़र आते हैं जो जारहाना मिजाज से बैटिंग करते हैं, जबकि दूसरी जानिब इमामुल हक हैं जो काफ़ी कंपोज हैं, वक्त लेते हैं, इनिंग्स को बिल्ड करते हैं। दिफाई अंदाज से खेले इमामुल हक और एक्शन में दिखाई दिए ताहा जो मौजूद थे पॉइंट पे। जी, ये ताहा वो हैं जो एक अच्छी इनिंग इन्होंने बिल्ड कर ली थी मगर अच्छा फिनिश नहीं कर पाए। इन्हीं की एक वो पार्टनरशिप थी जिसकी वजह से थोड़ा सा बीच में स्टेबिलिटी मिली थी टीम को, मगर ये कह लें कि जहादात की तारीफ़ करनी पड़ेगी जिस तरह उन्होंने फिनिश किया सिंगल हैंड अपनी उस कंट्रीब्यूट से अपनी टीम का अच्छा और डिसेंट टोटल करने में कामयाब हुए। और ये वो स्टैट्स जो आपका जिक्र भी कर रहे थे खुर्रम, दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग पिलर हैं अपनी बैटिंग लाइनअप के लिए। तकरीबन 700 के करीब रन किए दोनों ने पार्टनरशिप के साथ, और एक अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल जहादात की, और इमाम मिस कर गए बॉल को। अर्ली ऑन थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि 2 से 3 ओवर बॉलर के पास चांस होता है अर्ली ऑन, स्पेशली नया बॉल आपको शॉर्ट सिलेक्शन। ये बॉल देखें, अवे बॉल थी, ड्राइव लेंथ पे इमाम गए और स्विंग से मिस हुए, तो एक अच्छी बॉल थी, मगर ये कह सकते हैं थोड़ा इमाम को ख्याल करना पड़ेगा, अर्ली स्टेज है। हरगिज़ कहने का मकसद ये नहीं है कि माँ सदाकत को देख के आप वे ऑफ, हर किसी के अपने वे ऑफ प्ले होता है खेलने का, तो इमाम एक कंप्लीट ऐसे प्लेयर हैं जिन पर टीम डिपेंड करती है, ग्राफ्ट करते हैं, इनिंग को बिल्ड करते हैं। ज़रान बैकफुट पे जाके इसको पंच किया लेकिन गैप ना तलाश कर सकेंगे इमामुल हक। तो पहला ओवर हुआ इख्तिताम पजीर। पहले ओवर के बाद OGDCL पहुंचा 5 बगैर किसी नुकसान के। बाबा ठीक है कोई मसला नहीं स्कूल का इतना यार। हाँ थोड़ा स्कोर बोर्ड देख लेना, स्कोर बोर्ड देख लेना। आज जो प्लेइंग 11 में चेंजेस किए थे PTV ने, हमने देखा अमाद बट को एक बार फिर प्लेइंग 11 में इंक्लूड किया गया, तो इनके पास 3 फास्ट बॉलिंग के ऑप्शंस मौजूद हैं। हमने देखा जहादात खान ने पहला ओवर कराया, इसरार ने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्सिटी रोड एंड से इसरार को ही मौका दिया जाएगा नई गेंद से गेंदबाजी करने का। और फिर इनके पास अमाद बट भी एक ऑप्शन के तौर पे मौजूद है। स्पिन अटैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है PTV की टीम का, और वो कोशिश करेंगे कि अगर नई गेंद से विकेट्स हासिल नहीं होती तो वो जल्द से जल्द अपने स्पिनर्स को लेके आएँ। इसरार हुसैन बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, दराज कद के हैं, बाउंस उनको एक्स्ट्रा मिलता है, बिल्कुल उसी अंदाज से गेंदबाजी करने की कोशिश करेंगे जैसे हमने अरशद को देखा था OGDCL के लिए। बिल्कुल सही कहा, और थोड़ा सरप्राइजिंग देखा लगेगा आपको जो फील्ड सेटअप है। स्टार्ट हार्ड लेंथ को हिट करते हुए, बहुत ज़बरदस्त पहला बॉल, और फील्ड प्लेसमेंट को देख के थोड़ा सा मैं सरप्राइज़ हुआ हूँ कि इन्होंने फाइन लेग नहीं रखा है, शॉर्ट मिड विकेट रखा हुआ है, मिड ऑन है, बाकी डीप पॉइंट वाइट पॉइंट रखा हुआ है इन्होंने, शॉर्ट कवर रखा हुआ है, एक्स्ट्रा कवर है, मिड ऑफ है, एक स्लिप के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। कोई ख़ास प्लानिंग है इस फील्ड प्लेसमेंट से, ऐसा लग रहा है कि इनका आउट स्विंग लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को अच्छे शेप में बाहर बॉल निकलेगा। तो स्टार्ट तो बड़ा अच्छा लिया है, लेट्स सी देखते हैं आगे कैसा रहते हैं। इस दौरान कदमों का इस्तेमाल किया, इसको खेला मिड ऑफ की जानिब। खुशकिस्मत रहे यहाँ पे इसरार के गैप तलाश ना कर सके माज, वरना जिस अंदाज से टाइम किया था यकीनी 4 रन हासिल हो सकते थे। काफ़ी एग्रेसिव मूड में लग रहे हैं मां सदाकत, आज कुछ ज़्यादा ऐसा लग रहा है गुस्से में बैटिंग कर रहे हैं। अब इतना ऐसा लग रहा है कि शायद सोच के आए हुए हैं कि मैंने सर्किल का भरपूर फ़ायदा लेना है, और इतना क्लियर इंटेंट जो है बहुत कम प्लेयरों में देखने में आया, ख़ास तौर 50 ओवर गेम में, जबकि टोटल भी इतना बड़ा नहीं है। 242 50 ओवर इतना कोई मुश्किल टारगेट नहीं लगता, ख़ास तौर जब आप चेस कर रहे हो, कंडीशंस आपके सामने होती है, बैटिंग पैराडाइज विकेट है, जैसे मैंने बताया था पहली इनिंग में थोड़ा सा बॉल टाइम देगा आपको स्लो, उसके बाद आसान लगेगा बैटिंग में।
शॉर्ट पिच गेंद इसको पुल करना चाहते थे, लेकिन जैसा आपने फरमाया था कोई फील्डर स्क्वायर लेग या फाइन लेग पे मौजूद नहीं, इसीलिए विकेट कीपर को दौड़ के जाना पड़ा तैमूर, और इस दौरान 2 रन्स दौड़ के हासिल करने का मौका मिला मां सदाकत को। सरप्राइज बाउंसर किया था, मगर इस बाउंसर की तुक बन रही थी क्योंकि पीछे स्क्वायर लेग नहीं था, फाइन लेग नहीं था। अगर ये शॉट कनेक्ट होता और इवन हाफ हार्टेड भी होता तो वो बाउंड्री में कन्वर्ट होता। तो ये कोई स्ट्रेटजी है या क्या, कुछ समझ नहीं आया, मगर लेट्स सी, देखते हैं, कोई ना कोई प्लान तो होगा जहन में। और ट्रैप करने की कोशिश की गई है क्योंकि जिस तरह का हार्ड हैंड से खेलने की कोशिश कर रहे हैं मां सदाकत। लेट्स सी, देखते हैं कि बॉलर जीतता है या बैटर जीतता है। इस दौरान पुल किया और गेंद को फेंका छत के ऊपर 6 रन्स के लिए मां सदाकत ने। जैसा मैंने आपको कहा था कि ये अननेसेसरी कोई फील्ड प्लेसमेंट लग रही है और बॉलिंग ने ये साबित कर दिया है। ये मुझे ऐसा लगा ये ट्रैप करने की कोशिश की थी कि सरप्राइज बाउंसर करेंगे और वो डिसीव हो जाएंगे। पहला तो मिस रीड हो गया। ये देखें, खूबसूरत शॉट, इसको सीधे लफ्ज़ों में कहा जाए तो अच्छा पिकअप शॉट विद गुड बैलेंस। क्या बात है, ब्यूटीफुल। और रूफ टॉप पे गई है बॉल, बहुत बड़ा छक्का, बहुत बड़ा छक्का। ये नहीं सिर्फ रूफ टॉप पे, बल्कि अभी अभी हमको बताया गया है कि शायद ग्राउंड से भी बाहर जाके ये गेंद गिरी हो। बहुत खूबसूरत शॉट था, बड़ी ज़बरदस्त एग्जीक्यूशन। मुझे ऐसा लगा मां सदाकत जो थे इस दफ़ा शायद पहले से रेडी थे कि ये हार्ड हैंड हार्ड पिच पे बॉल करेंगे और वहाँ से मैंने पिकअप शॉट खेलना है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा इस बॉल के लिए वो तैयार खड़े थे, जिसकी वजह से उनको आसानी हुई ये एग्जीक्यूशन करते हुए। ये वो स्टार्ट जिसका आप जिक्र कर रहे थे खुर्रम जी, इमाम और मास की ये 776 रन की इन दोनों की रन की शराकत है। 77 की इनकी जो है वो एवरेज बन रही है। 4 सेंचुरियाँ की इन लोगों ने 115 के स्ट्राइक रेट के साथ, 27 छक्के। बहुत ये मेन जो चीज़ है वो 27 जो सिक्सेस हैं, यहाँ पता चलता है कि दोनों किस लेवल की क्रिकेट खेलते हैं एज ए पार्टनर। तो मेन आज ख़ासतौर सदाकत की बात अगर हम करें एक बार फिर, आज उनका जो इंटेंट है वो बड़ा क्लियर है और कहीं ना कहीं गुस्से में खेल रहे हैं या सोच के आए हुए हैं कि टोटल अटैकिंग अप्रोच से मैंने कैश करना है पूरा सर्किल, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। एब्सोल्युटली। और आज ऑल्दो इतना अच्छा आगाज़ नहीं था मां सदाकत का, खुर्रम आपको याद हो पहली स्लिप पे जब एक आसान कैच गिरा दिया था, ऑल्दो उसके बाद उन्होंने 2 से 3 कैचेस ज़रूर लिए और इनिंग्स के ख़िताम पे भी एक और कैच गिराया था। और आज कप्तान इनको बॉलिंग भी नहीं दी गई, लेकिन इसके बावजूद जिस अंदाज से इन्होंने इनिंग्स का आगाज़ लिया है और जिस तरह के स्टैट्स अभी आप जिक्र कर रहे थे, अगर ये ज़रा देर तक क्रीज पे खड़े रहे तो काफ़ी आसान बना देंगे इस हदफ को। ये बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर ये सर्किल खेल गया और जिस टोन में ये खेल रहे हैं आज, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई 10 से कम की एवरेज पे खेलेंगे। जिस ख़तरनाक मूड में आए हैं मां सदाकत, पता नहीं, मुझे लग नहीं रहा कि वो बैट जो है वो स्लो करेंगे। और एक मोमेंटम के तौर पे जिस तरह उन्होंने अभी एक शॉट खेला और बहुत ही खूबसूरत एग्जीक्यूशन थी, और इस तरह के शॉट के बाद एक बैट्समैन का कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही हो जाता है। और अब बैटर बॉलर की जो जंग है फ़िलहाल तो मां सदाकत की तरफ जा रही है। और ये आपके सामने बहुत ही आला कंट्रोल, बैलेंस अच्छा था, पिकअप शॉट, और आप शॉट बॉल को देख सकते हैं ग्राउंड से बाहर, बहुत बड़ा छक्का। मुझे ऐसा लगता है 100 मीटर से ऊपर का छक्का ही। बिल्कुल, काफ़ी बड़ी बाउंड्रीज हैं अगर स्क्वायर ऑफ द विकेट बात करें, चाहे ऑफ साइड हो या लेग साइड हो। और हमने काफ़ी हद तक छक्के देखे थे पिछली इनिंग्स में भी, जब जहादात खान बैटिंग कर रहे थे या जब तैमूर ने स्पिनर्स को आड़े हाथों लिया, लेकिन इस छक्के ने काफ़ी लंबा फासला तय किया खुर्रम। बहुत ज़बरदस्त पिकअप शॉट था, लेंथ बॉल थी, ज़्यादा पीछे भी नहीं थी। एक बार फिर बॉलर चले, ऑस्ट्रम के काफ़ी बाहर गेंद, एक और मौका ज़रूर था लेकिन अंपायर का इशारा वाइड। एक और फाजिल रन यहाँ पे OGDCL के स्कोर में जुड़ता हुआ। इसरार थोड़ा सा ये बॉल मिस हो गई है। जिस तरह की बॉल थी मुझे लग रहा था इस पर कट लगता, तो मुझे नहीं लग रहा था कि पॉइंट वाला भी इसको रोक पाता, क्योंकि वाइड पॉइंट फील्डर इन्होंने प्लेस किया हुआ है। और थोड़ा सा ऑफलाइन होते हुए इसरार, क्योंकि वो मां सदाकत से या तो कोई प्लान के तहत चाह रहे थे कि कट खाएं और डीप पॉइंट पे कैच हो जाए। तो लेट्स सी, देखते हैं। अभी तो फिलहाल प्रेशर में लग रहा है बॉलर, इसरार जो है वो टोटल प्रेशर में लग रहे हैं। या डीप पॉइंट का आपने जिक्र किया, वो बाउंड्री पे मौजूद है, जबकि थर्ड मैन दायरे के अंदर, और अब डीप स्क्वायर लेग भी बाउंड्री पे तैनात है।
अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर की जानिब आई और कुछ मुश्किल में दिखाई दी है इस गेंद को सामना करते हुए। जी बिल्कुल, गेंद हल्का सा सीम होके अंदर आया है और उनके लगा है रिब केज एरिया में, शायद हिट हुआ है बॉल, और एक अच्छा इन कटर बॉल, और जी हाँ इनके रिब केज में लगा, और इस टाइम हल्की हल्की ठंड भी है तो काफ़ी ज़ोर से लगी होगी, शायद एज लगा है बैट का, तो आई होप कि इनको कुछ इंजरी ना हुई हो। डॉक्टर या तिब्बी इमदाद ज़रूर यहाँ हासिल करेंगे माँ सदाकत, और ज़रूरी भी है क्योंकि इनका क्रीज पे खड़े रहना काफ़ी ज़रूरी OGDCL के लिए। आज याद रहे पहला सेमीफाइनल है प्रेसिडेंट्स कप वनडे टूर्नामेंट का, और बज़ाहिर जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि इनकी दाएं जानिब रिब केज में गेंद शार्पली आके लगी और फ़ौरन ही हमने देखा कि इनने बल्ला भी छोड़ा और अपने ग्लव्स भी उतार दिए, और ये वो मैजिक स्प्रे है जो बड़ी बड़ी बीमारियां और बड़ी बड़ी इंजरीज को दूर कर देता है। खुर्रम बाकियों का तो पता नहीं, वक्ती सुकून मिल जाता है जब जोर से बॉल लगती है इस ठंड के अंदर, तो आई होप कि सदाकत सही हो, और स्प्रे के बाद थोड़ी सही लग रहा है सदाकत की बॉडी लैंग्वेज वैसी बहुत एग्रेसिव है, अब इस बॉल के लगने के बाद वो शायद ज़्यादा एग्रेसिव ना हो जाए। ये वो गेंद थी जो इनके रिब केज को जा लगी और फ़ौरन ही उन्होंने फिजियो को इशारा किया था कि इनको कुछ अटेंशन, कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ये अच्छी लेंथ पे गेंद पड़ी थी और सीम होते हुए अंदर की जानिब आई थी। बैकफुट पे थे माँ सदाकत, इतना दराज कद नहीं है माँ सदाकत का, लेकिन एक अच्छा कमबैक इसरार का। देखना होगा कि बैकफुट पे जो अब धकेला है माँ सदाकत को, उसका फ़ायदा उठा सकेंगे या नहीं। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया, बाहरी किनारा लिया, लेकिन थर्ड मैन दायरे के अंदर मौजूद थे और अगर बाउंड्री पे भी होते तो फायदा ना था क्योंकि गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। जी बिल्कुल, कोई उनका इरादा नहीं लग रहा बल्ले का फ्लो रोकने का, और जिस मोमेंटम वो खेल रहे हैं, मैंने आपको कहा था कि इस बॉल लगने के बाद वो मोमेंटम बढ़ ना जाए, और वही चीज़ हुई है। निकल के उन्होंने फीट को यूज़ किया अच्छे से, एज लगा, मगर डीप थर्ड मैन को उन्होंने अंदर सर्किल में बुला के वाइड स्क्वायर लिया था, और ये बाउंड्री ज़बरदस्त, ये कह सकते हैं कि प्रेशर में इस टाइम बॉलिंग लाइन को कर दिया है माँ सदाकत ने। रोशनियों के शहर कराची का एक खूबसूरत मंजर ड्रोन कैमरा के ज़रिए आपकी स्क्रीन पे, और काफ़ी बिजी इलाका कहा जाता है स्टेडियम्स के अतराफ में, अगर आप जिक्र करें कारसाज हो या फिर ख़ासतौर पर यूनिवर्सिटी रोड। काफ़ी तो छोटा लफ्ज़ है, बहुत ज़्यादा बिजी है कि अगर आप इस ट्रैफिक में फंस जाएं तो कभी कभार तो 1-1 घंटा भी लग जाता है। जहादात खान एक बार फिर तैयार, पीछे गिरी हुई गेंद थी जिसको पंच करना चाहते थे और अब तक अपना खाता ना खोल सके हैं इमामुल हक, लेकिन इतने ज़्यादा मौके भी नहीं मिले। जी बिल्कुल, 3 बॉलें ही खेली हैं असल में, तो सारा जो कैमरे की जो आँख को उन्होंने अपनी आँख बनाया हुआ है माँ सदाकत ने, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं, बाउंड्रीज मार रहे हैं, तो एक एंटरटेन भी कर रहे हैं, और इसी दौरान इमाम वो इस तरह की इनिंग खेल सकते हैं, जिस तरह बोलते हैं ना चोरी चोरी चुपके आप रन कर गए, तो वो वाला काम हो सकता है। इमाम को टाइम मिल रहा है, उन पर फोकस कम है, माँ सदाकत पे ज़्यादा फोकस हुआ हुआ है, तो इनिंग बिल्ड करने में अच्छा मिल सकता है चांस। इस दौरान बारी किनारा और कैच गिरा बैठे। जी इमामुल हक को चांस मिल गया है 0 पे, और सुलेमान से कैच ड्रॉप हुआ है। ये अच्छी बॉल थी, रिसीव किया था ड्राइव लेंथ पे, आउट स्विंग बॉल, अच्छी शेप में बॉल हो रहा था जहादात का, डिसअपॉइंट हुआ है बहुत ज़्यादा बॉलर। इस गेंद से कबल हमने देखा था शामिल हुसैन गुफ्तगू में मसरूफ़ थे जहादात खान के साथ, और यही जिक्र किया होगा कि आगे गेंद करें, गेंद को स्विंग कराएं, और काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए थे। बाहरी किनारा लिया था, जेन्युइन एज करार दी जाएगी, और मौका था यहाँ सुलेमान का अपने बाएं जानिब डाइव करते हुए कैच को हासिल करने का, लेकिन नाकाम रहे, और यहाँ ज़िंदगी मिली एक और इमामुल हक को। कुछ ऐसा ही आगाज़ पहली इनिंग्स में भी हमने देखा जब यासिर खान को मौका मिला था, माँ सदाकत ने कैच ड्रॉप किया, ऑल्दो इतना महंगा साबित ना हो सका, लेकिन क्या आज इमामुल हक इस चांस को अवेल करेंगे? देखें इमाम जितने मैच्योर प्लेयर हैं, जितना एक्सपीरियंस उनके पास, क्योंकि यासिर को जब मिला तो वो थोड़ा सा और शेल में चले गए थे, तो इमाम एक ऐसे प्लेयर हैं जो इनिंग को बिल्ड करते हैं, तो लेट्स ही देखते हैं कैच ड्रॉप हुआ है कि ये 0 से 100 की तरफ जाते हैं या कितना लेके जाते हैं अपनी इनिंग को। तो में आती हुई गेंद जिसको एक बार फिर मिड ऑन की जानिब खेले और रन हासिल ना हो सकेगा।
एक अच्छा कॉम्बिनेशन इमामुल हक का और मां सदाकत का एक जगह। इतने छोटे टोटल के अंदर फील्डिंग को चाहिए, फील्डिंग टीम को थोड़ा सा बॉलर को बैक के लिए कैचेस पकड़ने पड़ेंगे, बाउंड्रीज रोकनी पड़ेंगी। जैसे आपने थ्रू आउट पूरी फील्डिंग में दानिश अजीज़ को अगर हम यहाँ मेंशन ना करें तो ये ज़्यादती होगी। जिस तरह उन्होंने बाउंड्री पे बाउंड्रीज सेव की हैं, पेट्रोलिंग की है, तो कहीं ना कहीं अभी 242 टारगेट के अंदर अगर इस तरह के कैचेस ड्रॉप होंगे तो इस तरह इतने बड़े मैच को आप जीत नहीं सकते। फिर इसको बैकवर्ड पे जाके खेलना ज़रूर चाहते थे लेकिन मिडिल ना कर सके। और अब तक अपने पहले रन की तलाश में है यहाँ पे इमामुल हक। जबकि डगआउट का जिक्र करें OGDCL का तो काफ़ी रिलैक्स फील करेगा। इतना लंबा हदफ नहीं है, 2 इन फॉर्म बैटर्स आपके क्रीज पे मौजूद हैं और मां सदाकत अपने इरादे वैसे ही जाहिर कर चुके हैं। बिल्कुल ये कह लें कि फील्डिंग टीम को भी ये रियलाइज़ होगा कि हमने टॉप रन गेटर का जो है वो कैच ड्रॉप हो गया, वो भी 0 पे। ये हारून देख रहे होंगे 1 डाउन पैट किए हुए, ये भी ज़बरदस्त टैलेंट है। ज़बरदस्त, इन्होंने कायदम ट्रॉफी के फाइनल में सेंचुरी स्कोर की थी, बहुत ज़बरदस्त टैलेंट। मिडिल स्टंप पे पड़ी हुई गेंद जिसको मोड़ दिया लेग साइड पे, कोई फील्डर मौजूद नहीं, स्क्वायर लेग की जानिब और 4 रन्स के साथ खाता खोलने में कामयाब होंगे यहाँ पे इमामुल हक। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि जो ये फाइन लेग जो इन्होंने हटाया हुआ है, ये कोई फील्ड प्लेसमेंट मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि ये इन्होंने स्क्वायर लेग और मिड ऑन रख के और फाइन लेग के बगैर बॉल करना और फिर उस एरिया में बॉल को पिच करना कि कोई प्लानिंग हो, कुछ समझ में आ रहा हो। या तो पैड को टारगेट कर रहे हो, चेस्ट साइड वेस्ट साइड बॉल कर रहे हैं आप, और उस पर भी आप फाइन नहीं पीछे रखेंगे तो ये बाउंड्री तो बनती है। और इमाम जैसा प्लेयर जो बाउंड्री ढूंढ रहा हो, उस तरह कोई इस तरह का इजी रन मिल जाए। और सेम पिछले ओवर में जो रिपीट हुआ था वो इस ओवर में फिर रिपीट होते हुए दिख रहा है। फिर बाउंड्री के बाद जो है वो स्क्वायर लेग पीछे गया है, पॉइंट का फील्डर अंदर आया है, शॉर्ट कवर वाला मिड विकेट पे जा रहा है। या रिएक्टिव कैप्टनसी कहलाएगी या शामिल हुसैन की जाने से, जबकि बहुत प्रोएक्टिव होना पड़ेगा यहाँ पे उनको। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, जबकि आपका हमाद बट की सूरत में इतना ज़बरदस्त कैप्टन है जिसने सियालकोट को ट्रॉफी भी जितवाई थी अपनी कप्तानी में लास्ट ईयर। और फिर लेग स्टंप पे बाहर गेंद जिसको फ्लिक करना चाहते ज़रूर थे, लेकिन गेंद पैड को टकराती हुई विकेट कीपर के पास पहुंची। इमाम पूछ रहे हैं ये वाइड बॉल क्यों नहीं है। डॉट बॉल के साथ ओवर हुआ मुकम्मल, 3 के बाद OGDCL 23 बगैर किसी नुकसान के। खूबसूरत एक शॉट देख रहे हैं आप, ड्रोन शॉट, ज़बरदस्त कैमरा वर्क, खूबसूरत स्टेडियम। इस स्टेडियम की बड़ी यादें हैं पाकिस्तान की फतवात में। फिर उसी लेंथ पे गेंद की यहाँ इसरार ने, और कुछ ना कुछ हद तक मुश्किलात पेश आ रही हैं मां सदाकत को, ख़ास तौर पे जब लेंथ पे गेंद कर रहे हैं और शार्पली अंदर की जानिब लेके आ रहे हैं इसरार ने स्मार्टली मूव किया है अपनी बॉलिंग में। पहले वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप उनको ट्रैप करने की कोशिश किया था, विद इन स्टंप कोशिश कर रहे हैं उनको इन कटर बॉल या इन स्विंग बॉल उनको देखा है कि प्रॉब्लम कर रही है मां सदाकत को, और हार्ड लेंथ को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां बैट्समैन थोड़ा था स्ट्रगल करता है, क्योंकि वो ऐसा होता है कि हाफ कॉक वो फ्रंट फुट पे हाफ बैक फुट पे बीच में रहता है, तो कोशिश कर रहे हैं ट्रैप करने की, वहीं बैट्समैन मिस्टेक करे शायद। इस दौरान पुल करने गए, हवा में है गेंद, अम्माद बट दौड़ते हुए आ रहे हैं और कैच लेने में एक बार फिर रहे नाकाम। जी एक लाइफ और मिल गई है, और अब जिस प्लेयर को मिली है वो 17 रन पे खेल रहे थे मां सदाकत, और ये चांस बहुत भारी पड़ सकता है PTV को। इमाम का 0 पे 17 रन पे मां सदाकत का ये बॉल, मां सदाकत का शॉट एयर में गई, साइड ऑन भागने की कोशिश कर रहे थे, बॉल हाथ में आ गई थी, एक्सपेक्टेशन थी हमाद से क्योंकि अच्छे फील्डरों में इनका शुमार होता है, अनफॉर्चुनेट कैच हाथ में आने के बाद ड्रॉप हो गया। यहाँ काफ़ी तजुर्बेकार हैं अम्माद बट, काफ़ी फिट हैं अम्माद बट, और अपने बाएं जानिब काफ़ी फासला तय किया, अपने बाएं कांधे के ऊपर से इस कैच को मुकम्मल करने की कोशिश की थी, लेकिन इस दौरान मिड विकेट की जानिब खेला मां सदाकत ने, मिडल किया और गेंद को फेंका बाउंड्री से बाहर, एक और 6 रन के लिए।
क्या खूबसूरत शॉट खेला है, शॉर्ट पिच बॉल के लिए कह लें कि पहले से रेडी थे, माइंड सेट किया हुआ है कि थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल होगी, उसको किधर प्लेस करना है। मिड विकेट पे खूबसूरत छक्का, बहुत ही आला पिकअप शॉट, एक और मां सदाकत का, फुली कंट्रोल, अच्छे बैलेंस के साथ। बैट का फ्लो देखें आप, ये देखें, व्हाट एग्जीक्यूशन यार, बहुत आला, ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया छक्के को देख के। यहाँ पिछली गेंद पे कैच गिराया और अगली गेंद पे छक्का कंसीड किया यहाँ इसरार ने। यहाँ पे जख्मों में नमक के मुतरादिफ ये सिचुएशन पीटीवी के लिए। हमाद बट अपने आप को बोलते हुए कि काश ये कैच हो जाता तो मेन विकेट थी। दो कदम आगे ज़रूर आए थे लेकिन ऑस्ट्रम के काफ़ी गेंद बाहर कर बैठे यहाँ इसरार, और कुछ लफ्ज़ों का भी तबादला हुआ इसरार और मां सदाकत के दरमियान। ऑब्वियसली बात है, बॉलर एफर्ट कर रहा है, और मैंने आपको जैसे बताया था कि 242 टारगेट इतना बड़ा नहीं है वनडे क्रिकेट में ये बॉल, और ये अटैक करा आउटसाइड द ऑफ स्टंप, फीट यूज़ की थी। और जाहिर सी बात है जब बॉलर एफर्ट कर रहा होता है और कैच ड्रॉप हो जाए इस टोटल में, और उस प्लेयर का खास तौर जो इन फॉर्म हो, दोनों प्लेयर्स, तो आप ऑलरेडी एक स्टेप पीछे हो जाते हैं। तो बॉलर्स को कोशिश जो कर रहे हैं उसमें फील्डर्स का 100% होना चाहिए, एटलीस्ट कैच ड्रॉप ना हो। 2 ओवर में 2 कैच ड्रॉप हो चुके हैं। फुल पुल किया, गैप तलाश किया, ऑल अक्रॉस द ग्राउंड खेला इस दौरान मां सदाकत ने। ताबड़तोड़ हमले जारी मां सदाकत के। कोई रहमदिली की उम्मीद नहीं लग रही है मां सदाकत के बल्ले से, बिल्कुल वो अपने एक फ्लो में चल रहे हैं आज, और ख़ास तौर शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को तो बिल्कुल नहीं बख्श रहे हैं वो। व्हाट अ शॉट, गुड कंट्रोल शॉट। इसरार और मां सदाकत की बैटल में इस ओवर में पहली बॉल पे अगर हमाद आदम कैच पकड़ लेते तो ये बैटल बॉलर जीत गए थे, मगर फ़िलहाल वक्त मां सदाकत पूरी इनिंग में डोमिनेट करते हुए अलग दिख रहे हैं, अलग टून में हैं। इस दौरान गाइड करने में कामयाब हुए, शानदार प्लेसमेंट, फिनेस और टाइमिंग का मुजाहिरा किया मां सदाकत ने। गैप तलाश किया थर्ड मैन की जानिब और एक और 4 रन समेटे। खूबसूरत एग्जीक्यूशन, प्री प्लान, हल्का सा सोचा हुआ था कि ऑस्टम के ज़रा बाहर होगी तो लेट कट खेलेंगे, क्योंकि डीप थर्ड मैन नहीं है, वाइट पॉइंट रखा हुआ था जिसकी ब्यूटीफुल प्लान किया हुआ था, हल्का सा अपने आप को पीछे की तरफ उतारा और गैप में प्लेस किया बॉल को। ये प्रेसिडेंट्स कप 50 ओवर्स पे मुश्तमिल है, लेकिन अपना T20 मोड ऑन कर दिया है मां सदाकत ने, और जिस अंदाज से आसानी से गैप तलाश कर रहे हैं, 4 रन और 6 रन हासिल कर रहे हैं, ऐसा लगता नहीं ज़्यादा देर रह पाएगी, मतलब ज़्यादा देर तक ये मैच जाएगा। देखें फील्डर्स जो हैं वो उनको चाहिए थोड़ा सा बूस्ट हो, और जो भी अपॉर्चुनिटी मिले भले से वो मुश्किल हो उसको ग्रैब करें, और ख़ास तौर इन दोनों इनफॉर्म प्लेयर्स का जिस पे टीम बैंक कर रही है, और उनके कैचेस अगर ड्रॉप होंगे तो रिज़ल्ट फिर ऐसे ही आएगा। और जिस तरह के मूड में आज मां सदाकत आए हुए हैं, उनके दिल में कोई रहम नहीं है बॉलिंग लाइन के लिए कि मैं आराम से पूरे 50 ओवर खेल के ये टारगेट चेस करूँगा। एक बार फिर लेग स्टंप पे पड़ी हुई गेंद और बैट से काफ़ी नज़दीक से होती हुई पहुंची विकेट कीपर तैमूर के पास, और एक बार फिर इमामुल हक अंपायर की तरफ देखते हुए। ये वाली बॉल तो मुझे भी लग रही थी वाइट है, मगर जो पिछले ओवर में इमाम ने पूछा अंपायर से कि वाइट क्यों नहीं है, वो एक सवालिया निशान था थोड़ा। और अब क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट में आईसीसी के कवानीन के मुताबिक आप देखें तो स्टम्प्स के दाएं और बाएं जानिब आपको 2 मजीद एक्स्ट्रा लाइंस नज़र आती हैं, और थोड़ा मार्जिन अब दिया गया है बॉलर्स को कि जस्ट डाउन द लेग साइड अब वाइड नहीं करार दी जाती। ज़रान इसको डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की जानिब निकाला, गैप मौजूद था, फील्डर की भरपूर कोशिश और कामयाब भी हुए यहाँ फैसल अकरम, बाएं जानिब डाइव की, गेंद को रोका, लेकिन 2 रन हासिल हुए यहाँ इमामुल हक को। बहुत अच्छी फील्डिंग फैसल अकरम की, ज़बरदस्त, 4 रन को 2 रन में कन्वर्ट किया, और ऑफ लाइन बॉलिंग हो रही है जहाँ कैच ड्रॉप होने के बाद थोड़े से ऑफ कलर दिखे हैं, लग रहा है थोड़ा सा जैसे गिव अप कर गए हों, और यही टाइम होता है जब आप चाह रहे होते हैं अपनी टीम को कुछ एक्स्ट्रा करके देने के लिए, और वहाँ अगर आपकी बॉल पे कैच ड्रॉप हो जाए और लो स्कोरिंग मैच हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी डाउन होती हुई, वही चीज़ अभी जहादात में दिख रही है, क्योंकि इनकी इस इनिंग की वजह से ये मैच थोड़ा फाइटिंग मूड में आया है कि आप थोड़ा फाइट कर सकते हैं। अच्छा गेंद और तेज़ी के साथ यहाँ रन मुकम्मल किया। मिड ऑन पे फील्डर मौजूद ज़रूर थे अली उस्मान, लेकिन काफ़ी
वक्त लिया उन्होंने गेंद की तरफ आने का और इस दौरान एक रन बासानी हासिल किया इमामुल हक ने। ऐसा लग रहा है कि शायद कप्तान से उनकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी हो नहीं रही है जहादात की, जो जिस एंगल में, जिस लेंथ पे, जो एंगल क्रिएट कर रहे हैं वो, उसके मुझे ऐसा लगता है उसकी जो डायरेक्शन में वो मिड विकेट फील्डर एक बनता है, जो कि बात पूरी हो गई, स्लिप से निकल के मिड विकेट पे आ ही गया फील्डर आखिर। तब तक 43 रन पे पहुंच चुकी है OGDCL की टीम 242 रन के ताकुब में। तकरीबन 4.5 ओवर का गेम हो चुका है और जहादात ने फील्ड प्लेसमेंट चेंज करवाई थोड़ी सी। थर्ड मैन अंदर आया, डी पॉइंट गया पीछे। पीछे गिरी हुई गेंद थी, आउट होने का खतरा, फील्डर आ रहे हैं और शानदार कैच। इसरार ने कैच मुकम्मल करके मां सदाकत की इनिंग का खात्मा किया और जहादात खान ने दिलाई PTV को पहली विकेट। बहुत ही आला कैच। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था शायद वो लेट हो गए हों, मगर इसरार ने इन दी एंड अपने लंबे कदमों का फ़ायदा उठाया और हल्की डाइव मार के कैच पकड़ा और एक अच्छी और बड़ी विकेट हासिल की। और ये बड़ा डैमेज है OGDC को, ये और पाँव लकीर के अंदर है। बॉल लीगल बॉल है और बड़ा डैमेज ऑफ OGDC को। ये देखें आप, काफ़ी देर से ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे शॉर्ट पिच बॉल पे कहीं ना कहीं, और वो फाइनली कामयाब हो गई PTV की टीम। इसी अंदाज के एफर्ट की ज़रूरत भी थी PTV को। एक अच्छा कैच इसरार की जानिब से और मां सदाकत अब 35 रन बना के सिर्फ 16 गेंदों पे डगआउट में वापस जाते हुए 3 छक्के और 3 चौके इनकी इनिंग्स में शामिल। OGDCL 43 एक विकेट के नुकसान पे। PTV की टीम को थोड़ी सी सुकून की राह मिली होगी कि आउट हुआ है वो प्लेयर जो अटैक कर रहा था। अब इमाम और हारून, जी हारून ज़बरदस्त टैलेंट, और कायदम ट्रॉफी के फाइनल में भी उन्होंने सेकंड इनिंग में सेंचुरी की। ज़बरदस्त प्लेयर हैं, अंडर 19 से आए हैं, बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, शॉट सिलेक्शन बड़ी अच्छी है और फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, स्पेशली शॉर्ट वर्जन क्रिकेट। T20 में मैं इनके साथ खेला हूँ और ज़बरदस्त टैलेंट है, स्विच हिट, रिवर्स हिट, मतलब ये कह लें कि नए शॉट को खेलते हुए डरते नहीं हैं। अमूमन जब इस एज में होते हैं तो थोड़ा सा डर और खौफ होता है कि मैं आउट हो गया तो क्या होगा। इनमें ऐसी चीज़ कोई देखने में नहीं आई, तो एक अच्छा टैलेंट है और OGDC से भी परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं और कंसिस्टेंट कर रहे हैं। तो आई होप के देखते हैं कि अब ये मां सदाकत के जो विकेट गई है उसके बाद ये उस रोल को किस तरह पूरा करते हैं। जी हाँ, हारून अरशद दाएं हाथ के बल्लेबाज, जिनका आपने जिक्र किया कि काफ़ी अच्छी फॉर्म में भी हैं। अच्छी गेंद, एक अच्छी जगह पे गेंद गिराई, एक बार फिर जहादात खान ने एंगल किया और इसको जाने दिया विकेट कीपर तैमूर की जानिब। ये देखें आप, शॉर्ट पिच बॉल थी, थोड़ा सा मिस टाइम हुआ है, अच्छा कैच लिया है और ये क्रेडिट जाता है इसरार को। जहादात इजहार करते हुए, क्योंकि जिस तरह की प्लेयर थे वो, उनकी विकेट टीम को बहुत ज़रूरत थी इस टाइम PTV को, और मेन प्लेयर आउट हुआ है। तो अब ये देखने वाली बात है कि जो 4.5 ओवर में 43 रन तकरीबन बोर्ड पे हैं और इस मोमेंटम को ये रोक पाते हैं कि नहीं रोक पाते हैं जहादात। मजीद अटैकिंग फील्ड सेटिंग, अब 2 फील्डर स्लिप कॉर्नर में मौजूद। अच्छा गेंद पड़ने के बाद अंदर की जानिब आया, अच्छी कोशिश मिड ऑन की, फौरन गेंद की तरफ लपके और कोशिश की कि नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे स्टम्प्स को हिट किया जाए, लेकिन इस दौरान मौका मिला हारून अरशद को अपना खाता खोलने का सिंगल के साथ। तो कामयाब ओवर हुआ इख्तिताम पजीर। 5 ओवर्स के बाद OGDCL 44 एक विकेट के नुकसान पे। मां सदाकत के बाद अब देखते हैं हारून जो हैं वो, वैसे बज़ाहिर तो बड़ी ज़बरदस्त इनकी फॉर्म है और हंगर भी है काफ़ी बैटिंग को लेके, तो अब मां सदाकत की जो है कमी कह सकते हैं, जो मोमेंटम लेके चल रहे थे उस चीज़ की कमी लगेगी या नहीं, देखते हैं।
अच्छी गेंद, बारी किनारा, शानदार डिलीवरी इसरार की, और इसी अंदाज के आगाज की जरूरत भी थी यहाँ पे पीटीवी को। एक अच्छी लेंथ पे गेंद कराई, इसको हिट करना चाहते थे, पंच करना चाहते थे हारून अरशद, लेकिन बारी किनारा लिया और तैमूर ने कोई गलती नहीं की विकेट्स के पीछे। बहुत ही आला बॉल, सामने से डिसीव करवाया बैट्समैन को, हाफ कॉक गए थे, फ्रंट फुट पे जाते तो शायद और लीगल डिलीवरी, पाँव लकीर के पीछे था, बहुत ही अच्छा एंगल क्रिएट किया। ये देखें आप, फ्रंट फुट पे खेलते, हाफ कॉक गए और जिसकी वजह से इनको बॉल रीड होने, मुझे ऐसा लगा कि शायद बॉल हारून को रीड नहीं हुई, किस एरिया में बॉल पिच होगी, थोड़ा सा लेजी लगे। बैक टू बैक विकेट्स गंवाई हैं अब ओजीडीसीएल ने। हारून अरशद भी सिर्फ एक ही रन बना के डगआउट में मायूस कदमों के साथ अब वापस जाते हुए ओजीडीसीएल को मिला दूसरा नुकसान 44 के स्कोर पे। जैसे मैंने आपको नए आने वाले बैटर विकेट कीपर बैट्समैन रोहेल नज़ीर चौथे नंबर पे अब बैटिंग करने आए हैं, रिप्लेस कर रहे हैं हारून अरशद को। तो सिर्फ एक रन बना के पवेलियन में वापस लौटे और एक के बाद एक हमने देखा दूसरी विकेट गंवाई ओजीडीसीएल ने। और अच्छी गेंद, और दोनों ही जानिब अब हिलाने में कामयाब हो रहे हैं यहाँ पे इसरार। कॉन्फिडेंस तो आता है बॉलर को, मेन प्लेयर अगर आउट हो जाए और साथ में उसके बाद एक और जो अगला आने वाला हो वो भी आउट हो, फौरन बैक टू बैक, तो बॉलिंग लाइन में थोड़ा सा जान आती है और इसरार अच्छे एरियाज को हिट कर रहे हैं। ये आप बॉल चेक करें, बहुत ही आला, बेहतरीन, एयर में पिच होने से पहले आया, एंगल से बाहर गया और स्टंप्स के पीछे जाते हुए बॉल अंदर को आया, तो अच्छे लेंथ को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अगर एक पार्टनरशिप नहीं लगी तो थोड़ा मुश्किल हो सकती है पीटीवी को, स्टंप पार्टनरशिप रिक्वायर्ड है। और अच्छा गेंद, और एक बार फिर इसको जाने दिया विकेट कीपर तैमूर की जानिब। काफ़ी पम्प्ड अप नज़र आ रही है अब पीटीवी की टीम, क्योंकि उनका अंदाज़ा है कि 2 बड़ी विकेट्स हासिल कर चुके हैं और यहाँ पे कोशिश करना होगी कि मज़ीद विकेट्स लेने की तरफ जाएं। और हम देख रहे हैं कि स्लिप कॉर्डन पे रेगुलरली फील्डर्स मौजूद। इस अंदाज से आउट हुए हारून अरशद, बैकफुट पे जाना चाहते थे लेकिन भारी किनारा लिया और खुशी का ठिकाना नहीं पीटीवी के फील्डर्स का। इसी बात है, जिस तरह का ताबड़तोड़ हमला किया था वहाँ सदाकत ने आते ही, और जिस तरह की वो बल्लेबाजी के मूड में लग रहे थे, तो लग नहीं रहा था वो शेल में जाने के। तो उस तरह के प्लेयर का अगर आप एक कैच ड्रॉप हो जाए और वो सडन दोबारा आउट हो जाए तो उससे बूस्ट तो होती है बॉलिंग लाइन। बैकफुट पे जाके इसको कट किया, गैप तलाश किया, मौका नहीं थर्ड मैन पे जादाद खान के पास। 4 रन्स के साथ खाता खोला रोहेल नज़ीर ने। बहुत ही खूबसूरत शॉट, और देखा जाए तो रोहिल का ये फेवरेट एरिया है, कट शॉट बहुत शौक से खेलते हैं। देखा होगा आपने, बॉल इतना पीछे नहीं था मगर उनकी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी थी। देखें, ब्यूटीफुल, बैट का फेस खोला और पॉइंट, जबकि देखा जाए पॉइंट का फील्डर हिला भी नहीं और बॉल बाउंड्री के बाहर। बहुत ही अच्छा टाइम किया बॉल को उन्होंने। रोहेल नज़ीर राइट प्रोस्पेक्ट हैं, अच्छे विकेट कीपर बैटर हैं, एक शानदार कैच भी लिया था आज इन्होंने। दिफाई अंदाज से खेले और गेंद पहुंची पॉइंट के पास। याद रहे कि यही दोनों टीम जब आपस में मध्य मुकाबल थी राउंड स्टेजेस में, तो वो रोहेल नज़ीर ही थे जिनकी 81 रन की इनिंग्स के बदौलत 272 रन का हदफ हासिल किया था ओजीडीसीएल ने पीटीवी के खिलाफ, और उस दौरान इमामुल हक ने भी 63 कीमती रन स्कोर किए थे। तो आज एक बार फिर दोनों ही बैटर्स एक साथ क्रीज में मौजूद। जी बिल्कुल, और जिस तरह की इन दोनों की फॉर्म है, इनको चाहिए अभी थोड़ा सा, बैक टू बैक 2 विकेटें गिरी हैं, तो अभी एक छोटी पार्टनरशिप चाहिए जो रिक्वायर्ड है इनकी बैटिंग लाइन को, जिससे थोड़ा जो बॉलिंग लाइन का प्रेशर बिल्ड हो रहा है उस चीज़ को आसानी हो टैकल करने में। अच्छी लेंथ पे गेंद करा रहे हैं और अच्छा कैरी हो रहा है गेंद, अच्छा गैदर किया तैमूर ने विकेट के पीछे।
एक अच्छा ओवर इख्तिताम पजीर हुआ इसरार का, विकेट हासिल की इस दौरान 6 के बाद OGDCL 48 2 विकेट्स के नुकसान पे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आमिर खान जो OGDCL की नुमाइंदगी कर रहे हैं और एज अ फास्ट बॉलर अब तक सबसे ज़्यादा विकेट्स हासिल कर चुके हैं आमिर। आज किस तरह से, किस अंदाज से आपने पिच को रीड किया? हमने देखा कि काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी और दोनों ही जानिब आपको गेंद मूवमेंट भी मिल रही थी, कुछ अनलकी भी रहे कि अब कैच अर्ली ऑन गिर गया था, लेकिन अच्छी कमबैक किया आपने। बिल्कुल, शुरू में जब हमने विकेट देखी तो थोड़ा सा मॉइस्चर था, तो इस वजह से हम स्विंग पे गए और उसमें हमें मदद मिल रहा था काफ़ी। तो वही थी कि मैंने अपने वो बेसिक पे बॉलिंग की जिसमें अल्लाह ने इज़्ज़त दी। खैर है कैच 1-2 ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन बॉलिंग अच्छी जगह पे की तो विकेट अच्छी थी। शुरू के 10-12 ओवर हमें स्विंग मिल रहा था, तो अच्छी विकेट थी। आमिर, बैक एंड पे आके हमने देखा कि जहादात खान ने कुछ बड़ी हिट्स लगाने की कोशिश की और उस दौरान भी वो कुछ हद तक कामयाब भी हुए, लेकिन एक अच्छी गेंदबाजी आज आप तमाम फास्ट बॉलर्स की जानिब से काफ़ी हद तक आपने प्रेशर में रखा ऑपोजिशन को। बिल्कुल सही बात है। जब ऊपर से हम आउट कर लेते हैं टीम को तो आसान हो जाता है बाकी बॉलरों को। और आखिर में जानदाद ने 1-2-3 हिट लगाए, लेकिन उसके भी कैच ड्रॉप हो गए। तो एक अच्छा टोटल है, हम चेस कर लेंगे इंशाल्लाह आसानी के साथ। अगर विकेट पे इमाम भाई खड़ा हो, एक और अच्छा सा पार्टनरशिप लगता है तो इंशाल्लाह आसानी के साथ चेस कर लेंगे। 242 रन का हदफ है आज आमिर, और जिस तरह आपने कहा कि इमामुल हक अब तक क्रीज पे मौजूद हैं, तो कोई स्पेशल हिकमत अमली है क्योंकि बैक टू बैक विकेट्स गिर गई हैं अब आपकी? नहीं, बस मेरा तो उनको ये मैसेज होगा, या अगर नॉर्मल खेले बिल्कुल नॉर्मल क्रिकेट तो इंशाल्लाह ये आसानी के साथ चेज होंगे। बाकी हमारे जो बाकी लड़के वो भी पाम में अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रन्स कर रहे हैं, और ऊपर से माज और इमाम जिस तरह रन्स कर रहे हैं पूरे टूर्नामेंट ओवरऑल, तो ये टीम को अच्छा स्टार्ट भी देते हैं। यही है कि अच्छा खेले, नॉर्मल क्रिकेट खेले, इंशाल्लाह आसानी के साथ जीत जाएंगे इंशाल्लाह। चलें आमिर, आपकी शानदार गेंदबाजी थी, ना ही सिर्फ इस मैच में बल्कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर मैचेस। थैंक यू इंशाल्लाह। मिड विकेट की जाने मोड़ने में कामयाब हुए इमामुल हक, और गेंद जाएगी एक बार फिर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट, एक्सीलेंट एग्जीक्यूशन, प्योर टाइमिंग। ये इमाम की क्लास है। इनकमिंग बॉल को जिस तरह उन्होंने, ये देखें आप, ब्यूटीफुल प्योर टाइमिंग, कंट्रोल के साथ उन्होंने बॉल को खेला। और उनको आइडिया था कि डीप स्क्वायर लेग नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि डीप स्क्वायर लेग लेके शॉर्ट मिड विकेट लेके अगर इस एंगल पे बॉल हो तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी बैट्समैन को। क्या यही इमामुल हक का खासा है कि काफ़ी लेट गेंद को खेलते हैं और गेंद को नज़दीक आने देते हैं, और नज़रों के नीचे जब गेंद आती है तो उसको टाइम करते हैं। कलाइयों का शानदार इस्तेमाल करते हैं इमामुल हक, और आज एक बार फिर आगाज़ इनको मिल चुका है। देखना होगा कि इसको बड़े स्कोर में तब्दील करते हैं या नहीं। याद रहे जब ये कोई रन ना बना सके थे तो सुलेमान ने पहली स्लिपिंग का कैच गिराया था। दौरान बैकफुट पे गए, कट किया, एक बार फिर गैप तलाश करने में कामयाब हुए इमामुल हक, मुसलसल दूसरा चौका हासिल किया। जी बिल्कुल, और काफ़ी दूर बॉडी से बॉल थी और काफ़ी दूर थी, कट खेलने में आसान रहा। देखें ये पिच देखें, शॉर्ट एंड वाइड, बहुत ही ज़बरदस्त। कट के लिए मुझे ऐसा लगा तैयार थे कि ऑफ स्टंप के बाहर अगर बॉल होगी तो कट मारूंगा, और वही चीज़ हुई। और बेहतरीन कंट्रोल बैलेंस के साथ खेला है इमाम ने, और 2 मेन शॉट जो हैं उनके, और उन दोनों को इस ओवर में बैक टू बैक वो खेल चुके हैं। ये कॉन्फिडेंस की निशानी होती है, और अगर बॉलर बार बार इस तरह करेगा तो मुश्किल हो जाएगी बॉलिंग के लिए। एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, एक बार फिर गैप तलाश किया। गलती करते हुए नजर आ रहे हैं जहादात खान, लेकिन उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं इमामुल हक। 3 लगातार 4 रन हासिल किए। टोटल ऑफलाइन हो चुके हैं जहादात, बैक टू बैक बाउंड्रीज पड़ रही हैं, प्रेशर डेवलप हो रहा है, इमाम का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। आप देखें सेम पिछली बॉल वाली गलती, शॉर्ट वाइड, जिससे कट खेलने में आसानी हुई इमाम को। थोड़ा सा रियलाइज़ करना पड़ेगा, कप्तान को बात करनी पड़ेगी जहादात से, या फील्ड प्लेसमेंट ऐसी लें अगर इस तरह की बॉल हो तो वहाँ पे फील्डर मौजूद हो। और एक बार फिर फाइन लेग सर्कल के अंदर आते हुए डीप कवर डीप पॉइंट लिया है, और ये और अमूमन देखने में यह आया है जब पॉइंट का फील्डर पीछे गया है इस इनिंग में तो बॉडी के अंदर बॉल की गई है। बैकफुट पे गए लेकिन गैप ना तलाश कर सके, पॉइंट पे मौजूद थे ताहा, तो डॉट बॉल के साथ किया ओवर का इख्तिताम। 7 ओवर्स के बाद OGDCL पहुंचा 60
2 विकेट्स के नुकसान पे। और इसी के साथ साथ अब कॉम बॉक्स में होगी तब्दीली और आपको ज्वाइन करेंगे फरूक रियाज और उनके साथ होंगे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त। Thank you very much, Khurram Manzoor and Zishan Khalid. 60 for 2, OGDCL. They're chasing 242. A modest score here in National Bank Stadium, Karachi. The first semi-final is going in full swing here. This Rohail Nazir, the exciting batsman, is new to the crease. 4 of 5. And Imamul Haq, very watchful, played some lovely shots in the previous over, 19 of 18. A couple of slips for Israr. 2 slips in a traditional position, very close to each other. Well bowled. So in the com box, I have been joined by Sikandar Bakht. Welcome. Well, initially I'm a bit disappointed with the field placement and the bowling. They didn't bowl to a proper line. They were bowling towards the body and they were getting hit. And really surprised that player like Jahandad is the international experience. He should have been bowling on outside the off stump. And when he tried to bowl outside the off stump, that was short. So initially, for the first 7 overs, they got 2 wickets. But still, I believe that their line of attack was not proper. And Israr is bowling better now. He's attacking the off stump. That's good line. A little bit extra bounce as well. Very watchful Rohail, right behind the line. PTV did well. They came back well in the last 15 overs or so. They were watchful and then it got to score of 241. There's another disappointment for me. I've never seen Ma Sadakat batting earlier. I heard a lot about him. He has been performing well for emerging and all. He scored 339 runs of 6 matches and he has an average of 67.80. But he disappointed me. I'm telling you honestly, because he was playing like a slogger. He was not playing like a batsman. He was playing like a slogger. Good for T20. That's quite right. His strike rate is around 140 and it's a 50 overs game. Plenty overs are in hand. He was in some sort of hurry. So as a player, as a top order player, he needs to be a little more responsible. See, we saw it yesterday. This is the last ball, left alone. Oh, the ball kept low to the wicket keeper. Yesterday we saw the Indian batsman. I don't remember his name. He was trying to score runs on every ball. He scored 20 runs in the first over of Ali Raza. Then he got out because he was playing too many shots. Drives well, beautiful shot, glorious. He doesn't need to run for that. Rohail Nazir at his absolute best. Oh, Rohail Nazir is impressing me. This was a very good shot. He was right on the top of the ball, drived it very well. Lovely timing. I think, just watch him. That's a very good shot. Very, very good shot. See, this is what I was missing from Ma Sadakat. Ma Sadakat was trying to hit every ball towards the mid-wicket. That's why he was I am a little bit disappointed. Absolutely, that is something straight out from the coaching manual. The square drive at his best, 3 dots followed by boundary. The batsman you're talking about, I think, is Suryavanshi from India. The young kid, obviously he just got too excited. He was trying to attack on every ball. If I am a captain and if somebody start hitting you like this in a 50-over match, I will be very happy. Because then he will give a chance. Like Ma Sadakat played that pull shot, which went outside the stadium, was amazingly timed. But he was playing every ball. He was trying to hit every ball. You don't do that. Against good teams, against good bowlers, you cannot hit them all the time. You have a better fielders over there in the international. You have faster bowlers, smarter bowlers, and you have good fielders in the field. So you cannot hit every ball. So you have to play like a batsman. Try to pull it, didn't quite time it. Yes, quite right. Sikandar, as a batsman, as an emerging talent, you need to respect the format of the game. 8 gone now. OGDCL 2 for 64. Bowling change.
Right arm over. 64 for 2. They are scoring with a run rate of exactly 8 runs per over. They are at the driving seat, but the PTV, they can pick up a couple of quick wickets. Now Ahmad Butt comes on, the right arm medium fast bowler. We will start from the medium, from the pavilion end. Experienced campaigner. He could not contribute much with the bat, but certainly he's good enough bowler to make the difference. Yes, he's a very experienced bowler. I've seen him many times. The theory for the new bowlers that you should bowl as per your field. Like Jahandad was bowling on the leg side and he had a fielders on the offside. That's wrong. And then you have to pitch up. The length has to be good. Line and the length. What is line? Line is where you're attacking, length where you drop the ball. Once again, leg side, Imam-ul Haq, not for the first time he caught the ball in that region, not happy with himself. He wanted to make more of it. Well, Imam is a very experienced player, and he's a very good batsman. Without any doubt, he has proved it in Test cricket and everywhere around the world. He's a very good player. If he stays there, it will be a danger for PTV because if you have to stay there, you have 50 overs to play. You're not in a hurry. Why are you in a hurry? So Mahad Sadakat was trying to hit every ball outside the stadium. You can't do that. So Imam can be a danger man for PTV. That's quite right. Imam has got tons of experience. He's a genuine one-day international player. One-day cricket suits him. Going for the quick single. The steal of a run. Good running by both the batsmen. Well, you can say not one day. He's a good for the longer format. In Test cricket too, he plays very solidly. He plays like a cricketer, which is a good sign. And let's see. He just have to stay there because he has that thing. Chance for a now? No. He jumped. That could be a danger. And when you jump in the crease and the ball hits, there is a chance of getting out. We just talked about his experience, and this is something not recommended. He didn't ground his bat, and he could have been dismissed if the throw was perfect. And the idea is absolutely not right. You must ground your bat. Must ground your bat. You have to be swift between the stumps as well. Royal back on strike now. Right behind the line, Rohel looks like a good batsman, I'm telling you. With the way I like to see the cricket, Rohel Nazir is a good batsman. It seems to be a good batsman. He also has to stay there. He can play shots. He can give a good stand with Imam, and they can build up a very good score. And Pakistan is looking at it, and we have been discussing him, Rohel Nazir, for some time, and he's taken to one good catch. And he dropped two. the fact is that he dropped two and he took a very good catch. I think he has a strong right hand. The wicket keepers sometimes have a very good right hand, weak left hand. So I think he has a weak left hand. That's why he dropped two, but he took a brilliant catch. His batting seems to be very good. He's a good, perfect batsman. Looks like so far. Yes, that catch was a superb one to his right. It was low to his right, and one of the best catches of the tournament. He has been hanging around for quite a while, for quite a few years in domestic cricket. A star performer for sure. Wait on the leg side. He has to reload. Imad, as a senior player, should understand because he has played so much cricket. I've seen him so many. They just have to bowl within the line. The ball is moving a little bit. That's down the leg side, no use. The ball is moving a little bit. The pitch is hard. If you try to hit the pitch, the ball is going to come quick. So he just have to bowl within the line and length, within the batsman, within the stumps. It's quite right, Rohel Nazir. It's the run rate is already the higher side, so they don't need to rush for the run rate.
Sadakat provided some sort of start, but he wasted the opportunity as well. As Sikandar Baksh just mentioned, he was trying to slog everyone. So in the one-day cricket, he just did not build his innings as he should have. He has already got some runs, but now his job all depends on Rohail and Imam. So shaped away from outside the off stump. Well left, 9 gone. 66 for 2 on the board. .66 for 2 on the board. 9 overs have been bowled as Imam and Rohail. They are building the partnership for the third wicket stand. And Israr will continue from the far end. He has been just a touch expensive. Got some dose from Sadakat, but he has picked up an important wicket as well. So PTV, if they can't contain the batting side, they have to pick up wickets on regular basis. Imam is one of the key wickets. Will face the first ball. Oh, has he nicked it? Has he nicked it? He has gone. Definite sound we heard. Imam has walked. Wicket falls. Israr has got the breakthrough. Very well bowled. Very good line, very good length, and he made Imam ul Haq to go for the ball after the ball, and he got an edge, and I think that was one of the best ball he bowled in this match. It's a legal ball. Yes, it is. And you see the bounce. There was a little bounce in the ball, and Imam could not play it properly and got the edge straight to the wicket keeper. Another wicket gone. Imam is out for 20 of 21 balls, 66 for 3. So 66 for 3. Imam ul Haq, the latest departure. Little bit extra bounce from Israr outside the off stump. He went for the cut shot and he has walked back to the pavilion. Big wicket. Now Adil Amin, the captain, has come out of the middle. Well, it was a very important wicket for PTV. And Imam could have been a very dangerous batsman because he know how to play the longer version. He could have stayed there for a longer version. But it's a very good wicket. Very well bowled by Israr. Now, it's a very good captaincy, keeping 2 slips here. Let's see where he bowls. Not bad, not bad. This is the good line because he has 2 slips there, wicketkeeper and 2 slips. So he should bowl on the same line. Let the batsman make the mistake. Well, that's the extra bounce we were talking about to Imam. Israr did his best. Very well done. Well bowled. Excellent delivery. Extra bounce that did the trick. Enticing the batsman for the cut shot, and Imam didn't judge the bounce, and wicketkeeper finishes off the job. So very good breakthrough.
So PTV certainly in the game. Oh, down the leg side, misdirected. That's a bonus. That's the curse of the commentators. Well, it's a wide ball. I think Israr is getting a little bit excited. At this time, the captain or the senior player should be at mid-off or mid-on, should talk to the bowler. This is a very important thing, that you should talk to the bowler, especially if you are a captain or a senior player. You must feel at mid-off like somebody is going towards his, I don't know, is he captain or not. You have to talk to the batsman. Relax, easy, just bowl to your line. Bowl to outside the off stump, you have 2 slips, just attack there. He can get another wicket. Outside the off stump, well left, good bowling. Couple of wickets picked up by Israr, 2 for 40 bowling figures. See, both the line, both the wickets, outside the off stump, that should be the line. Shamal is the captain. He's not the captain, right? So the captain should be, this is, I always believe the captain or the senior player should be at mid-off or mid-on. Talk to the bowlers, relax. Just keep on bowling at one line. Oh, good work at Gully. It was struck hard, that hurt his finger. But single has been taken in the process. But still, I believe the direction was good towards the offside. The length was a little bit shorter, otherwise the direction was good. And the weather is getting a little bit cold, so he got hit. I can see a lot of bandages on the fingers. I don't know, what should I say? Everybody's having 3 or 4 bandages on their fingers. Such a tough position, the Gully and backward point. The ball really races off the bat, and one of the best fielders we see still is in pain. And is he going off the field or what? I think he's going towards the deeper field. I think he's going towards the deep square leg, deep point. The physio is coming there for the magic, what do you call it? Magic spray. Magic spray. So physio covered a lot of ground and towards the backward point boundary, outside the boundary. So he is giving some medical assistance. He struck hard. So hopefully he will come back in a few minutes. So will magic spray work over the bandage, or will he remove it? You were right. Round the wicket, good line, well played, right behind the line. Rohil Nazir very watchful. He just lost his partner Imamul Haq, the senior campaigner. See the bowling figures, 2 for 41 of 5 overs. Runs are too much. When in 5 overs, 41 mean 8 balls, 5 8s of 40, right? 8 runs per over, which is not that good. But right now he's bowling very well. Initially he didn't bowl well. The first 2 overs, 3 overs. Now he's bowling pretty well. He's bowling to a very good line, and he should keep that line. Now he's bowling around the wicket, right? Pulls it well, and that's gonna be 4 runs. Well connected by Rohil. That's the curse of the bowlers. That's the bad ball. 72 for 3. That could have been saved as well, but sort of absolute gift for Rohil. The signal of power play, number 2.
Ahmad Butt, who just considered 2 in the first over, will continue. So new power play, so power play number 2. So 4 fielders can be sent outside the 30-yard circle. The slip is on for Ahmad Butt. There's a man at deep fine leg, you can see. Nobody is deep square leg. There is wait for the quick single here. Good running. Good running. Yes, good running between the wicket, which was missing from the PTV batsmen when they were batting. And if we can show the field again, it's a very good defensive field. This is the quick single we were talking about. When the PTV was batting, they were not picking up quick singles. They should have done it. Now they are doing it. If you see the field, it's a very defensive field. In this field, you cannot afford to bowl loose ball. They have 6 fielders on the offside, 5. 1, 2, 3, 4, 5 fielders on the offside and a slip. 6 fielder on the offside. That's the highlights of the first 10 overs. Master Dakat was in aggressive mode. Came down the track on the first ball. And then a pickup shot. The grand hit. Imam Ulaq in conventional fashion. Risky work from him and that's an interesting shot. Open the face of the blade for a boundary. Then the miss hit from and a good catch. Back live. Well, Hamad is bowling with his full experience. As you can see, there's 4 fielders on the offside. One is the slip, which is and a third man. So 6 fielder on the offside. As you can see now, the mid-off cover, extra cover, and a point area. Third man and a slip fielder. That is a very good defensive field. And this is the onside, mid-on, mid-wicket, and a fine leg. Yes, and a fine leg. So no square leg. So Hamad has to bowl within the stump with discipline. Not bad, but still he's bowling towards the leg, which is not good. If he flicks it properly, it can go towards the boundary. So he must bowl within the stump towards the offside a little bit. That's quite right. He's got away with that because there is a vacant space at deep square leg. He just has to time it with a wristy work. So Ahmad has to bowl something around 4th and 5th stump. Drives well. He has found the gap. Yes. And it's a chase is on, but ball wins the race. Well played, Ruhail. Just timed it well. Boundary picked up by Ruhail and score moves to 77 now. See, if you're bowling up to the batsman and the batsman can drive, then you must have a cover fielder deep. Otherwise, he was bowling with a very, see, it's a very so simple. He didn't do anything, just a little push through the gap towards the boundary line. So if you want to bowl like this, because he doesn't have the pace, so he should keep a deep fielder. Well, they have maintained a run rate very well, finding boundaries. And dot balls won't matter much. So over gone, 11 gone exactly. 77 on the board for the loss of 3 wickets. That's the comparison we have after 11 overs. They were 45 at this stage of the game, whereas as far as run rate is concerned, OGDCL is far ahead.
Ali Usman, the left arm spinner, comes on from the far end. Now spinners have to make some difference. Shamil Hussain, the skipper of PTV, he needs wickets here. He needs to make a difference in the middle phase of the innings. Ali Usman has the highest wicket for the PTV. 12 wickets and with an average of 27, which is not bad, and the economy is 4.75. So he's supposed to be, as per Huram Manzoor, that he's one of the best bowlers. So let's see. I've never seen him, so I cannot give my comments right now. So I have to wait and see how he bowls. I think if he's a good bowler, he's a highest wicket taker, you should take a slip. There's no harm taking a slip, putting a pressure on it, because you need wickets. If you take wickets, you have a good chance. You just cannot stop the runs and win the match. That's quite right, especially in the first few overs. The batsmen tend to be a little hesitant against the new spinners. So there is always a chance to get the outside edge. They've got the short third, backward point, cover, long off, deep cover as well for left arm spinner. Down the pitch. Finger taken. Tossed up, he played with the line, just tapped the ball for one. That's good cricket. We saw in the first innings when PTV was batting, and we didn't see much footwork to convert dot balls into ones and ones into twos. They were very cautious. Ali is bowling to a very good line. Khurram Manzoor was right. He has been playing with them. He's still playing, so he shouldn't. So he was very upset to say that he's retired. No, he's not retired. He's still playing. Well bowled. I think he's bowling to a good line, and that's why. But I still believe if he gets a little bit of turn, he must bring in a slip. Let's wait and see. Some movement behind the side screen. And Adil is, the skipper is out there on 3, is not happy. So Ali is one of the spinners. Faisal Akram as well. We will see him shortly in action as well. Going for the quick single there straight to the fielder and using his feet. But so far so good. Ali, just 2 conceded by him so far. Well, Ali is bowling to a very good line and keeping the batsmen in check, as we call it. Not letting them hit. So this is the last ball of the first over. Big shot for leg before, big shout, and given by the umpire. Yes, leg before. Adil tried to attempt that, missed it altogether, and the ball would have hit the stumps for sure. The best thing about this ball is that ball was within the stumps, right? Within the stump, little bit of flight deceived it, and he was trying to play towards the square leg, a sweep shot, and missed it. And the ball was not quick. It's a fair delivery. And the ball was little bit, has a loop in it. Just watch it, just a little bit of loop. And he went for it. It's not leg before, but it's body before the wicket. The whole body was in front of the wicket. Yes, ribs before the wicket, to be exact. It's 79 for 4 as captain has to walk back for 3. 79 for 4 on the board.
12 gone, 4 wickets have gone down as Rohil Nazir is out there. The captain Adil has just been dismissed while attempting the sweep shot. And umpiring has been spot on as well, that the ball would have hit the stump for sure. Ahmad Butt continues. He has been very decent in bowling, but the spinner have started to make an impact. The Ali in this first over got the breakthrough. Oh, is he gone? Is he gone? Yes, definitely gone. He did carry. Ahmad got the breakthrough. Rohil Nazir has to walk back. He's still out there, but the celebration is on in the middle from PTV. Very well done. See, I told you that Ahmad is an experienced player, experienced bowler. He just have to keep the ball within the stumps. And I think he's out. So far, we have seen it in a very, what you can say, in a flash, that he has taken the catch. Let's wait and see. And Ahmad is done what a senior bowler should do. Bowl through a good line, keep the batsman in check. Let's see. It's a legal ball. No, let's see the catch. Yes, it's a catch. There is no doubt about it. Yes. It's a good catch. And very well done. And PTV is started controlling the match right now. Well, the third umpire is still struggling to find out about the catch. Different angle. Now he's landed on the ground, so I think he's out without any doubt. Okay. Well, I think the front angle is quite evident, but they want to confirm from the side-on angle. Rohil Nazir is a key wicket and he was unmoved. But umpires will check, will evaluate every possible angle. Well, it's a clean catch. Just watch it. It's a clean catch. Come on, third umpire. That's a very, very important wicket. Very well done, Ahmad. Ahmad Butt. Very well done. He used his experience. Rohil Nazir was playing very well. He looked like a very good batsman, a dangerous batsman. He was not a, kind of a slogger. He was a proper batsman. And he edged it because it was right in the outside the off stump, and the wicketkeeper took a very good catch. So another wicket for. And where is the score? We can't find the score. Anyway, 4 wickets are gone.
Of the side has been dismissed. So PTV right on top, right on song at the moment. Forget the run rate at the moment. Just see the wicket column. 5 wickets have been dismissed. Ahmad Butt, who has just joined the party. The wicketkeeper Taimur is in good form. Just got a good catch. Did you see the little swing? There was a little swing like a reverse. Is it reverse swinging over there? I don't know, because this ball, look, watch it. Yeah, there is a reversing. That's the wicket took of Ruhail Nazir. A good catch by the wicketkeeper. Excellent catch by Taimur. Well bowled, extra bounce. He just got away with that. See the reverse swing? You call it a reverse swing or it's a swing. It's moving away. And also a loose shot from Ruhail Nazir as well. A half-hearted shot outside the off stump, and wicketkeeper had the opportunity. He grabbed it. You can see he's carrying a really good movement off the surface. That's the last ball. It's still moving away. It's a very good sign for the PTV. Shamil Hussain, the skipper in the first slip, must be a very pleased man at the moment. But the job is not over yet. Two men in the slip cordon. They are applying the pressure on OGDCL. That's good captaincy, bringing in another slip. Great exhibition of seam bowling from Ahmad Butt. So things are getting tighter for the man in blue, OGDCL. They were cruising at one stage. The 79 for 5 you can see, and Ahmad Butt very impressive into his third over and is turning out to be a wicket maiden. Yes, very impressive bowling right now. Till now, he's bowling very well, using his experience right now. This is his third over and he's already got a wicket for 7 runs only. And the ball is moving. That's the best part. Let's see. Dot again. Ahmad Butt, who has been so impressive with the ball. He is known as a bowling all-rounder. He wasn't impressive enough. He got naught of 10 deliveries at the bat. It was very disappointing. But as a bowler, he was doing a terrific job. And that is how he has been bowling in this over. A couple of occasions, ball shaped away off the pitch. And also getting some extra bounce. Last ball of the over. Terrific bowling. 7 for 1 after 3 Ahmad. 13 gone, 79 for 5. Danish, who has played for Pakistan as well, experienced campaigner. He has been a match winner on a few occasions. Danish Aziz here. So they need a partnership, a miraculous partnership. They are still in the game for sure. Ali will continue 1 for 2. Who picked up Adil in this previous over. Well bowled. They still have Faisal Akram. Yeah, Faisal Akram is a very good bowler. I like him. And then he has to... This is the onside field, along on mid-wicket, square leg, short mid-wicket. Oh, the work. It's a good footwork from Danish. Yes, Ali Usman is also very impressive now. You're right, Faisal Akram will be in action very shortly. That will be very interesting. They are building up the pressure on OGDCL. And he's bowling very well. We don't get a chance to see these unknown cricketers. For me, he's unknown. I'm watching him for the first time.
You have to watch it. I believe in watching the play. I don't believe in stats. If the people says, well bowled. If somebody says he's done so much, wow, wow, wow. He has a striking rate. He has such a average. I want to see that play. I always argue with people. No, I want to see it with my own eyes. Does he deserve that or not? That's my way of selecting the team or analyzing a player. That's quite right. The stats give you some sort of idea, but you have to see the player on a ground, what kind of situation he is playing in, and how he has got the breakthroughs. Just one of the overs so far. Off the back foot, still didn't manage to get one. Someone was talking to me about the data. The data is very important in things like that. I said, I have been a banker. I have done banking. Still you have audits. Why? Physical check. Off the back foot, dot ball again. Excellent over. PTV on top, 80 for 5, OGDCL after 14 overs. And now for the time for the change in commentary. Khurram Manzoor and Zashan Khalid will pick up the commentary now. बहुत बहुत शुक्रिया फ़र्रुख और सिकंदर। 242 रन के जवाब में ये अब तक OGDCL की कारकर्दगी का अच्छा आगाज़ महज सदाकत और इमाम उल हक का, लेकिन एक वक्त पे 43 बगैर किसी नुकसान पे दोनों ही बैटर्स बैटिंग कर रहे थे और अब 80 रन पे 5 विकेट्स गंवा चुके हैं। जानेहाना मिजाज से बैटिंग करते हुए नजर आए महज सदाकत, लेकिन इनके जाने के बाद ही हमने देखा विकेट का सिलसिला ना रुक सका और अब एक मुश्किल पोजीशन पे नज़र आती है हमें OGDCL की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप। हम्माद भट्ट अपने स्पेल को जारी रखते हुए और कमेंट्री बॉक्स एंड से एक बार फिर उन्होंने दौड़ना शुरू किया। बैकवर्ड पे जाके सीधे बल्ले के साथ खेला, कोई रन हासिल ना हो सकेगा। काफ़ी तजुर्बा क्रीज पे मौजूद और काफ़ी तजुर्बेकार बैटर मेरे साथ मौजूद, खुर्रम मंजूर कॉम बॉक्स में। जी, दानिश अजीज़ के कंधों पे काफ़ी भारी जिम्मेदारियां और इस सिचुएशन में विकेटें ज़्यादा गिर गई हैं। 5 आउट हो गए हैं, बोर्ड सही चल रहा है, 14 ओवर में 80 रन है, मगर दानिश अजीज़ एक ऐसे प्लेयर हैं जिनका भी सीज़न में बड़े अच्छे रन्स किए हैं, आउट भी किए हैं और इस टीम के लिए कंट्रीब्यूशन बड़ी अच्छी रही हैं। तो एज ए सीनियर इनको लीड करना है भी। अंदर आती हुई गेंद को ड्राइव किया मिड ऑन की जानिब। ने पिछले ओवर में भी देखा था जब हम्माद भट्ट गेंदबाजी कर रहे थे और दोनों ही जानिब गेंद को हिलाने में कामयाब हो रहे थे। और उमूमन हम देखते हैं अंडर फ्लडलाइट्स गेंद ज़्यादा मूव करता है, ख़ास तौर पे साल के इस वक्त जब मौसम भी आपको कुछ ना कुछ मदद फराहम करता है। जी बिल्कुल, हम्माद भट्ट वैसे भी स्विंग करने में थोड़ा सा उनको कंट्रोल है और ज़्यादा पेस का ये देखें 107 ओवर में 16 विकेटें और 41 की एवरेज बैटरी है और स्पिन पे 217 ओवर 32 विकेटें 32 की एवरेज से, तो ये फ़र्क दिख रहा है साफ वाजे। और ये हम्माद भट्ट की एक और अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल, अच्छा स्विंग इनकमिंग बॉल कर रहे हैं, दानिश को डिसीव करवाना चाह रहे हैं, पाँव पे मारना चाह रहे हैं बॉल, लेग भी 4 का चांस ले रहे हैं। जितना अच्छा उनका बॉल स्विंग हो रहा है तो दानिश अजीज़ कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा मिडिल ऑफ द बैट खेलें, टाइम लें और उसके बाद इनिंग को बिल्ड करें। अच्छा, बिल्कुल काफ़ी तजुर्बा है दानिश अजीज़ के पास और उनका खड़ा रहना बहुत ज़रूरी अब OGDCL के लिए। अमूमन हम देखते हैं बड़े टूर्नामेंट्स में टीम्स जिनकी विनिंग स्ट्रीक बरकरार होती है, नॉकआउट मैचेस में कहीं ना कहीं उनको मुश्किलात से दो चार करती है टीम्स, और आज बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिला जब PTV ने एक तगड़ा मुकाबला किया है। ऑस्टम के काफ़ी भार गेंद इसको जाने दिया और अंपायर का इशारा होगा वाइड का। जी बिल्कुल, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा दानिश अजीज़ एक्साइटेड थे कट शॉट खेलने के लिए, मगर आखिरी टाइम पे उन्होंने अपना फैसला बदला और बॉल को जाने दिया जो वाइड की सूरत में बदली। ये वो स्टैट है जो इस बात की निशानदेही करता है कि स्पिन अटैक काफ़ी हद तक कामयाब रहा है PTV के लिए। 32 विकेट्स स्पिनर्स ने आपस में हासिल की हैं, जबकि सिर्फ 16 विकेट्स रहीं पेसर्स की। PTV के बॉलिंग का जिक्र करें और हो भी क्यों ना जब आपके पास अली उस्मान और फैसल अकरम जैसे स्पिनर्स मौजूद हों। इसकी बेसिक रीज़न यही है, दोनों बड़े अच्छे स्पिनर हैं और काफ़ी
कंट्रोल से बॉलिंग करते हैं, मिड ओवर्स में आपको विकटें ब्रेक थ्रू पे देते हैं और गेम चेंजर के तौर पे आते हैं दोनों खासतौर। और अली को जहाँ तक मैंने खेला है, उसको देखा है, ऑब्जर्व किया है, काफ़ी कंट्रोल से वेरिएशन करता है, विद इन स्टम्प बॉल करता है, उसके फिंगर्स में बड़ी जान है। और ऐसे मैचेस में मुझे था, ये बिलीव था कि जब अली आएगा तो कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट आएगी, और उन्होंने आते ही ब्रेक थ्रू दिया टीम को। बैकफुट पे जाके इसको पंच किया, लेकिन गैप ना तलाश कर सकेंगे दानिश अजीज़। जी हाँ, बिल्कुल आपने जैसा जिक्र किया, आपने भी अली के साथ खेला है और हमने कायदे आज़म ट्रॉफी में भी इस साल इनको फॉलो किया था। 48 विकेट्स लेके सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बने थे। जी बिल्कुल। और मेरे हो सकता है मेरे स्टैट्स थोड़े 19-20 हों, मगर जहाँ तक मेरी नॉलेज है लास्ट 3 सीज़न में इन्होंने 100 से ऊपर आउट किए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो ये निशानदेही है इनकी कंसिस्टेंसी की कि एक बॉलर अगर अच्छा होता है तो एक सीज़न में अच्छा करता है, मगर 3-4 सीज़न बैक टू बैक अच्छा परफॉर्म करना, इसका मतलब प्लेयर अच्छा है तो कर रहा है। एक और अच्छी बॉल, और ज़रा सामने से बॉल स्विंग हुआ है, दानिश अजीज़ बच गए हैं इस बॉल पे हमाद भट्ट की। टेंटेटिव पुश था दानिश अजीज़ का, खुशकिस्मत रहे कि बाहरी किनारे के नज़दीक से होती हुई गेंद पहुंची विकेट कीपर तैमूर के पास, वरना एक और नुकसान उठाना होता यहाँ पे OGDCL को। जबरदस्त बॉलिंग हमाद भट्ट की तरफ से। 15 ओवर्स हुए यहाँ मुकम्मल, OGDCL 81 5 विकेट्स के नुकसान पे। एक 161 रन मजीद दरकार यहाँ OGDCL को। अली उस्मान अपनी बॉलिंग का सिलसिला जारी रखते हुए फार एंड से। बहुत अच्छी बॉलिंग, टाइट लाइन और लाइन पे बॉल कर रहे हैं। अब देखना ये है कि ये प्रेशर को किस तरह डील करते हैं दोनों बैट्समैन, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी हेल्दी पार्टनरशिप चाहिए। हार्ड हिटिंग बैटर हैं सरवर आफरीदी, और काफ़ी शानदार अंदाज से आगाज़ किया था इस प्रेसिडेंट्स कप वनडे टूर्नामेंट का, जब OGDCL स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मध्य मुकाबिल थी और 303 रन का हदफ था। और एक वक्त ऐसा था जब 200 के रन पे 7 विकेट्स गंवा दी थी OGDCL ने, वहाँ से सरवर आए, उन्होंने सिर्फ 41 गेंदों पे 82 रन बना के वो मैच जितवाया था OGDCL को। वहीं से उनकी जो फतूहात का सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक रुका नहीं। एक अच्छे प्लेयर की यही क्लास होती है कि वो किस तरह अपने आप को बताता है कि सामने कि मैं आया हूँ और मैं अभी गेम को ख़त्म नहीं, मैं गेम ख़त्म करके जाऊँगा। तो ये चीज़ सोचने की बात है। और ये सर्वर को जहाँ तक मैंने खेलते हुए देखा, ये इनका नेचर नहीं है जिस नेचर में अभी वो खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि टीम की रिक्वायरमेंट इस टाइम पार्टनरशिप है। और दानिश अजीज़ थोड़ा टाइम ले रहे हैं और वो लेना भी चाहिए, क्योंकि विकटें जो हैं वो ज़्यादा गिर गई हैं, बोट सही चल रहा है और ओवर्स बहुत सारे हैं अभी। इस दौरान 2 कदम आगे आए और इसको बॉलर के बाएं जाने से निकालने में कामयाब हुए लॉन्ग ऑन की जानिब, जहां मौजूद थे इसरार। 1 रन मजीद हासिल हुआ दानिश अजीज़ को। दानिश अजीज़ कंट्रोल से खेलते हुए और अच्छे शेप में लग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मिडिल ऑफ द बैट ट्राई कर रहे हैं, ज़्यादा बॉलें खेलें और एक पार्टनरशिप लगाने की कोशिश दोनों के बीच में। बैकफुट पे जाके गैप तलाश किया और सिंगल हासिल हो सकेगा। एक और अच्छा ओवर इख्तिताम पजीर हुआ अली उस्मान का। 16 के बाद OGDCL पहुंचा 84 5 विकेट्स के नुकसान पे। घर की तरफ रवा दवा। और बहुत ही आला शॉट, आइडियल बॉल लगी सर्वर को, मिड विकेट के ऊपर से खेला शॉट, 1-2 टप्पे के बाद बाउंड्री के बाहर बॉल, बहुत ही ज़बरदस्त। इस बॉल के लिए मुझे लग रहा है वो रेडी थे और थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी
और जिसको इजीली उन्होंने बाउंड्री में कन्वर्ट किया। ये चेक कर सकते हैं, वेरी गुड शॉट। इतनी हाइट पे नहीं थी बॉल, मगर थोड़ा बॉल पीछे गिरा हुआ था, इसलिए पिकअप हुआ। जहाँ विकेट्स की तलाश में है पीटीवी की टीम, इसलिए आपको ज़्यादातर फील्डर्स दायरे के अंदर नज़र आते हैं। ना ही डीप मिड विकेट और ना ही डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद था, जिसका फ़ायदा उठाया सर्वर ने। और जैसा आपने जिक्र किया खुर्रम, इतनी पीछे नहीं गिरी थी गेंद, लेकिन लेंथ को अच्छा पिक किया सर्वर ने और अपनी भरपूर कुव्वत से इसको मिड विकेट की राह दिखाई और अपनी इनिंग्स की पहली बाउंड्री समेटी। हमाद एक बार फिर बॉलिंग के लिए निकले, इस एरिया को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 2-3 ओवर से हमाद, और उनको हेल्प भी मिल रही है। सिवाय इस जो पिछली बॉल थी वो थोड़ा बैड बॉल था, पीछे बॉल पिच हुआ और अच्छा उन्होंने उसको रन में कन्वर्ट किया सर्वर ने। हमाद को अगर आप देखें, थोड़ा क्रीज को भी यूज़ कर रहे हैं, वो स्विंग में मदद हासिल जो हो रही है, क्लोज टू द स्टंप आके आउट स्विंग बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। दानिश अजीज़ को जब बॉल करते हैं अवे क्रीज को यूज़ करते हैं जाके, ताकि एक एंगल क्रिएट हो। और ये एक एक्सपीरियंस प्लेयर की भी निशानी होती है, तो एक्सपीरियंस तो इनके पास बहुत है। आई होप कि ये यहाँ पे ब्रेक थ्रू लेने में कामयाब हो, एक और विकेट मिले पीटीवी को। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है अब तक हमाद भट्ट ने। शानदार गेंद पढ़ने के बाद मजीद बाहर की जानिब घूमा और हैरान और परेशान नजर आए यहाँ सर्वर। वही शेप क्रिएट किया है उन्होंने दोबारा एक बार फिर, क्लोज टू द स्टंप जाके एक जो पहले के बॉलर सिखाए, देखें ये बॉल और प्रॉपर स्विंग हुआ है, बहुत ही आला, अच्छे लेंथ पे बॉल गिरा, आउट स्विंग बॉल था। सर्वर छोटे कदम से खेलें और वेरी गुड लाइन और लेंथ, मज़ा आ गया। 3 गेंदें मजीद बाकी इस ओवर की। हमाद भट्ट थोड़ा सा ऑकवर्ड बाउंस मिला हमाद भट्ट को, थोड़ा हैमर किया इस बॉल को उन्होंने और सर्वर ने मैनेज किया इस बॉल को। थोड़ा सा ओपन शेप हो गए थे, मगर ये कह सकते हैं कि थोड़ा कोशिश कर रहे हैं सर्वर के एक बाउंड्री आ गई है, कोई अननेसेसरी कोई रिस्क ना लिया जाए। और 88 फॉर 5 बहुत अच्छा अभी तक कंट्रोल में है दोनों बैट्समैन, ख़ासतौर दानिश अजीज़ जिस तरीके से वो टाइम ले रहे हैं, उनकी एक नेचर है, थोड़ा सेट होते हैं उसके बाद वो बड़ी शॉट्स पे जाते हैं और क्लीन फिनिश करके आते हैं। आज बड़ी इनिंग्स की ज़रूरत भी है OGDCL को, दोनों ही बैटर्स से। शॉर्ट पिच गेंद पुल करना चाहते थे, सरप्राइज किया इस बाउंसर के साथ हमाद भट्ट ने। काफ़ी अच्छा वेल डायरेक्टेड बाउंसर था और सरप्राइज हुए हैं सर्वर, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि पिछले 3 ओवर में ये देखें आप आगे के लिए रेडी थे और एकदम शॉर्ट बॉल आई और वो सरप्राइज हुए। लकी भी रहे साथ में कि बैट से एज नहीं लगा, क्योंकि थोड़ा सा हल्का ऑफ स्टंप की तरफ उन्होंने बॉल किया था कि एज लगे और कीपर के पास जाए या टॉप एज के ऊपर डीप स्क्वायर लेग पे कैच हो। अब तक अच्छी वापसी अमाद भट्ट की, ओवर की पहली गेंद पे 4 रन हासिल किए थे सर्वर ने, लेकिन उसके बाद कोई रन हासिल ना हो सका और इस दौरान गैप में खेले हैं। काफ़ी लंबा फासला तय करना है डीप स्क्वायर लेग से फील्डर को। यासिर खान अपने बाएं जानिब दौड़ते हुए आए और इस दौरान 2 रन मुकम्मल किए सर्वर ने। 17 ओवर्स हुए मुकम्मल, OGDCL 90, 5 विकेट्स के नुकसान पे। नेशनल बैंक स्टेडियम का खूबसूरत मंजर। ये ठीक किया है। और ये वो नई इमारत जो चैंपियंस ट्रॉफी से कबल तामीर की गई थी, जहाँ पे अब प्लेयर्स के पवेलियन मौजूद हैं। तारीफ़ तो करनी पड़ेगी जिस तरह का चेयरमैन साहब ने ग्राउंड्स को एक तरीके से पूरा रेनोवेट करवाया और लगता ही नहीं है व्यू देखने का, खेलने का चेंज हो गया है, तो क्रेडिट तो जाता है स्पेशली ख़ासतौर कज़ाफ़ी स्टेडियम का। कदमों का इस्तेमाल किया दानिश अजीज ने, फायदा उठाया दायरे का और गेंद को पहुंचाया मिड विकेट के ऊपर 6 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट और काफ़ी देर से उनका बल्ला रन ढूंढने के चक्कर में था और उन्होंने फाइनली एक बड़ी हिट मारी दानिश अजीज ने और बहुत ही खूबसूरत छक्का।
फीट यूज़ करी, और सबसे अच्छी चीज़ ये बॉल हाथ से रिलीज़ होने के बाद वो क्रीज से बाहर आए और उन्होंने मिड विकेट जहाँ कोई फील्डर प्लेस नहीं हुआ था और वहाँ पे बड़ा छक्का मारा। यहाँ काफ़ी देर से बल्ला खामोश था दानिश अजीज़ का, उन्होंने कदमों का इस्तेमाल करते हुए इन शैकल्स को ब्रेक किया और कोशिश की कि प्रेशर मिलाया जाए गेंदबाज अली उस्मान को। अच्छी लेंथ पे गेंदबाजी की है अब तक अली उस्मान ने। एक बड़ी विकेट हासिल की थी आदिल अमीन की। जी बिल्कुल, आदिल अमीन एज ए कैप्टन भी ये उन प्लेयर्स में आते हैं जिनको बोला जाता है कि प्रेशर के मैचों में अच्छा परफॉर्म करने के आदी हैं। तो आदिल अमीन उनकी बॉल मुझे ऐसा लगा मिस जज की और वो लेग बिफोर हुए स्वीप मारते हुए। उमन इतना आसान होता नहीं गेंदबाजों के लिए, खास तौर पे जब आपके पास एक एंड पे दाएं हाथ के और दूसरे एंड पे बाएं हाथ के बैटर हो और जब सिंगल लिया जाए आपको फौरन अपनी लाइन और लेंथ तब्दील करनी होती है। लेकिन अगर देखा जाए अली उस्मान ने अब तक काफ़ी अच्छी और नपी तुली गेंदबाजी की है, चाहे वो दानिश अजीज़ हो या सरवर हो। इस दौरान फुल टॉस करा बैठे लेकिन फ़ायदा ना उठा सके सरवर, सिर्फ लॉन्ग ऑफ की जानिब खेल के एक ही रन हासिल हो सकेगा। जी छक्के के बाद उन्होंने 8 रन ले चुके हैं और 4 बॉलें हो गई हैं और उनकी पूरी कोशिश होगी एटलीस्ट अगर 2 सिंगल और आ जाए तो 10 रन का ये ओवर जाएगा, और 10 रन जहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं आ रही हो उस ओवर में 10 चले जाए तो वो बेहतर होता है। एक और शॉट निकल के दानिश अजीज़ ने मिड ऑफ की तरफ खेला है। जी 2 कदम आगे ज़रूर आए थे दानिश अजीज़, लेकिन जिस तरह आप ऑफ द एयर बात कर रहे थे कि काफ़ी खिंचा हुआ गेंद कर देते हैं और बिल्कुल अंदाज़ा खो जाता है इनको कि बैटर अब क्या करने की कोशिश करेंगे। और ये पीटीवी की मैनेजमेंट का हिस्सा, और काफ़ी हद तक मुस्कुराहट नज़र आ रही है इनके चेहरों पे, और हो भी क्यों ना जब एक अच्छी पोजीशन पे आपकी टीम हो। वेल बोल्ड, सरवर ने उसको बड़े फुली कंट्रोल से खेला और फाइनली 18 ओवर कंप्लीट हुए हैं, 99 रन्स और 5 आउट। बारी किनारा और कैच का अटेम्प्ट भी ना किया यहाँ तैमूर ने। हमाद बट की जो कंसिस्टेंट एक लाइन और लेंथ को हिट कर रहे थे, एक और चांस क्रिएट हुआ और कीपर हिल भी नहीं पाए, और मुझे ऐसा लगा बॉल पिच होने से पहले अपराइट हो गए थे कीपर, जिसपे मूवमेंट आपकी स्लो बल्कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। देख सकते हैं ऑलमोस्ट इजी लेफ्ट हैंड पे कैच था, कीपर ने अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए, वो हिल ही नहीं पाए। वो यहाँ गैप ज़रूर मौजूद था उनके और शामिल हुसैन के दरमियान जो फर्स्ट स्लिप पे मौजूद हैं, लेकिन काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी तैमूर को, क्योंकि अब तक अच्छी विकेट कीपिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं और अगर यहाँ एक कैच मुकम्मल कर लेते तो मज़ीद करीब आ जाते OGDCL को आउट करने से। लेकिन एक कीमती मौका था विकेट हासिल करने का। 10 रन पे ये कैच निकला है और जो कीपर के लिए बड़ा आसान कैच कहा जाता है इस तरह का, और दानिश अजीज़ 14 पे खेल रहे हैं और देखें एक लाइफ मिल गई उन्हें। अब देखते हैं कि ये मैच को फिनिश कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, क्योंकि अभी तक जिस प्लेयर के इस मैच में कैच ड्रॉप हुए हैं वो लंबा स्कोर कर नहीं पाए। तो दानिश अजीज़ के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि टीम के 5 आउट हुए हैं, इस टीम को किनारे लगाएं और फाइनल में जाने की कोशिश करें, और उसको उम्मीद तो यही है। के बाद अच्छी गेंद जिसको जाने दिया विकेट कीपर के जानिब, कोई शॉट ऑफर ना किया। अब हमारे साथ मौजूद हैं पीटीवी की टीम के हेड कोच मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम, काफ़ी हद तक खुश होंगे, काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड होंगे अब तक आप अपनी टीम की परफॉर्मेंस से? देखिए सेटिस्फाइड तो जब 10वीं विकेट गिरेगी तभी होंगे जब मैच खत्म हो जाएगा, बट वी आर इन गुड पोजीशन, वी आर कॉन्फिडेंट कि यहाँ से मैच कंट्रोल में है हमारे।
वसीम, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है आपकी टीम के पास। अम्माद बट की शक्ल में आपके पास एक्सपीरियंस है, जबकि शामिल हुसैन एक नए कप्तान हैं, एक उभरते हुए बैटर हैं। तो कैसे देखते हैं अपनी टीम के कॉम्बिनेशन को? एक तरफ से यंगस्टर्स ही परफॉर्म कर रहे हैं और सीनियर्स ही परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए मोस्टली यंगस्टर्स हैं साथ में, जहाँ पे कर सकते हैं, और साथ ही विकेट मिल गई है। अभी आपने कहा था ना कि जहाँ पे कैच छूटता है उसके बाद विकेट मिलती है, तो दैट्स द स्पिरिट। ये नॉइज़ जो आपको आई है ना, दैट गिव्स अस एनर्जी कि यंगस्टर जो है ये लेके आते हैं। जहाँ पे थोड़ी कामनेस की ज़रूरत होती है, जहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो लाइक्स ऑफ बट है हमारे पास हैं, तैमूर हैं, ये काफ़ी खेले हुए हैं। तो जो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस और यंगस्टर्स का एक हसीन इम्तजाज, अगर मैं अच्छी उर्दू बोलूँ तो। वसीम, अब तक शानदार कारकर्दगी रही है आपकी टीम की थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और अब तक हम देख रहे हैं सेमीफाइनल में भी। और हम इस गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस डिसमिसल पर कुछ तज्जिया करते हुए यहाँ अम्माद बट की गेंद, और देखना होगा कि वॉज हिज हील बिहाइंड द लाइन। खुर्रम, आप क्या कहते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा टाइट डिसीजन लग रहा है, हो सकता है कि ये नो बॉल कॉल हो जाए। यहाँ से तो क्लियर है कि पाँव अंदर है। जी हाँ, पहला इम्पैक्ट तो अंदर ही है। थर्ड अंपायर इस बात की गौर करते हैं कि पहला इम्पैक्ट कहाँ था, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि जब इनका फुट ऑलमोस्ट लैंड कर चुका था तो इनके हील का कुछ हिस्सा लाइन के अंदर मौजूद था। इस एंगल से तो वाज़ेह लग रहा है कि पाँव क्रीज के अंदर ही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब फैसला आ जाएगा और दानिश अजीज़ की इनिंग का खात्मा। काफ़ी देर से इरिटेट हो रहे थे इस लाइन और लेंथ पे दानिश अजीज़। इससे पिछले इसी ओवर में एक से दो गेंद पहले इनका स्लिप पे कैच निकला था, वो कीपर से अटैम्प्ट नहीं हो पाया था। उसके बाद फिर उसी एरिया में गए और वहाँ पे स्लिप लग गई इनकी। छठी विकेट गवाई मोहम्मद वसीम। मजीद आपकी टीम की पोजीशन बेहतर होती हुई इस बड़ी विकेट दानिश अजीज़ के बाद? बिल्कुल, जैसे भी खुरम ने कहा था वो बात सच साबित हुई कि कैच छूटता है लेकिन इनिंग्स अभी नहीं खेल पाते हैं, तो उसको कह सकते हैं आप थोड़ी सी गुड लक हमारी चल रही है। लेकिन जिस तरह बॉलिंग हो रही है कंसिस्टेंट एक जगह पे हो रही है, तो ऑब्वियसली फिर चांसेस क्रिएट होते हैं। और पिच में भी मैं कहूँगा कि थोड़ी सी हेल्प बॉलर्स के लिए मौजूद है, तो अब तो काफ़ी हद तक हम कंट्रोल में। आई थिंक ये लास्ट प्लेयर है, यहाँ पर हमें एक और जल्दी विकेट मिलती है, तो आई थिंक हमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए यहाँ से। वसीम, इब्तदाई मैचेस में हमने देखा था अम्माद बट कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, लेकिन उसके बाद वो कुछ मैचेस में खेल ना सके। तो वाज इट बिकॉज ऑफ द फिटनेस कंसर्न्स, या फिर आपने मौका दिया था उनको रेस्ट करा के? देखिए, जिस तरह ये सीज़न डोमेस्टिक चल रहा है, ऑब्वियसली काफ़ी लंबा सीज़न हो गया है कि आप काफ़ी मेहनत से यही लड़के खेलते हुए आ रहे हैं, चाहे वो अनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी थी, फिर कादर आज़म ट्रॉफ़ी हुई, उससे पहले भी क्रिकेट चल रही थी। तो बीच में मुझे लग रहा था कि जहाँ पे किस लड़के को कहीं ब्रेक चाहिए, तो इमाद का वी ऑल नो कि इज़ अ क्वालिटी ऑलराउंडर, लेकिन उस तरह वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। सो वी हैड अ चैट विद हिम, उसको बिठाया, उससे बात की कि यार मे बी इट्स टाइम टू हैव अ ब्रेक। तो कप्तानी से भी ब्रेक आपको मिल जाएगी, 2-3 मैचेस आप बाहर बैठते हैं, आपको ज़रा ना रिफ़्रेश होने का मौका मिलता है। तो ये चीज़ हमने सलमान के साथ भी की थी और उसके बाद बट के साथ भी की है। एंड लुक एट हिज परफॉर्मेंस, जिस तरह बॉलिंग में आज वो बॉलिंग कर रहे हैं ज़बरदस्त, तो ये पार्ट ऑफ प्लान था हमारा। अच्छा वसीम, अब तक हमने देखा काफ़ी हद तक आप एक्टिव नज़र आते हैं हमें सोशल मीडिया पे, और अब तक 2 बड़ी व्हीकल्स को आप शिकस्त दे चुके हैं। आज अगर कामयाबी हासिल करते हैं तो आज हम किसका नाम देखेंगे? मैं देखता हूँ 3rd नंबर पे कौन से आते हैं। लम्बोर्गिनी, क्योंकि देखें 7 मैच जीती हुई टीम एक आ रही है, तो ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि बेस्ट टीम जो टूर्नामेंट की अभी तक रही है। नॉट ओनली कि सिर्फ ये मैचेस जीते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये मैचेस खेली है OGDCL, तो आई थिंक दिस गोइंग टू बी द बिगेस्ट विन फॉर अस। Alright, Mohammad Wasim, thank you so much for talking to us. It was a pleasure talking to you, and all the best for your team as well as your performance. Thank you. तो ये थे मोहम्मद वसीम, जो हेड कोच थे PTV के, जिनकी कोचिंग के दौरान अब तक शानदार फतुहात हासिल की हैं इस प्रेसिडेंट कप वनडे टूर्नामेंट में, और इस बात को यकीनी बनाया है कि अब बहुत करीब आ चुकी है PTV की टीम OGDCL की मजीद विकेट्स हासिल करने से। तो एक कामयाब ओवर अख्तिताम पजीर हुआ अम्माद बट का 19 ओवर्स के बाद OGDCL 103 6 विकेट्स के नुकसान पे। तो खुर्रम, अब तक मुकम्मल तौर पे हावी नज़र आ रही है PTV की टीम, जिस अंदाज से विकेट्स
अब तक गिराई हैं, और जो हम उम्मीद कर रहे थे कि दानिश अजीज़ आज अपना तजुर्बा दिखाते हुए यहाँ पे कीमती रन स्कोर करेंगे, वो हो ना सका। ऑल तो उनको मौका मिला था, लेकिन एक शानदार कैच लिया शामिल हुसैन ने। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगा दानिश अजीज़ कुछ ज़्यादा शेल में चले गए थे। देखें, पार्टनरशिप बिल्ड करने का एक प्रोसेस होता है, स्ट्राइक को रोटेट करना। खैर बॉलिंग में चेंजिंग हुई है और फैसल अकरम जो आए और उन्होंने आते ही पहला बॉल किया, सिंगल बनाया है सर्वर ने। तो अब जो बैट्समैन आए, इमरान रंधावा, ये भी अच्छे प्लेयर हैं, सीजन प्लेयर हैं, और वाइट बॉल क्रिकेट में इनको हाईली रेट किया जाता है। ये वो बॉल है जिस पे दानिश अजीज़ की स्लिप लगी और बहुत ही अच्छा कैच, और काफ़ी नीचे कैच था और अच्छा आई रखी बॉल को जब तक हाथ में नहीं आ गई। सबसे अच्छी चीज़ ये आखिरी टाइम तक बॉल को उन्होंने देखा, फॉलो किया। फैसल अकरम को लाया गया है अब यूनिवर्सिटी रोड एंड से, जिस एंड से हमने देखा था अली उस्मान ने अब तक गेंदबाजी की थी, उनकी जगह एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आर्म चाइनामैन कहा जा सकता है फैसल अकरम को, क्योंकि दोनों ही तरफ गेंद घुमाने की महारत हासिल रखते हैं। और ये वो वक्त ऐसा है जहाँ पे कहीं ना कहीं बॉलर्स को मुश्किलात ज़रूर पेश आती हैं, इसलिए ज़रूरी था आज पीटीवी के लिए कि नई गेंद का सही इस्तेमाल करते हुए विकेट्स हासिल करें, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह पहली बॉल और ये जो अभी आखिरी बॉल हुई है, इसमें मुझे लग रहा है ग्रिप करने में मुश्किल हो रही है, और इस बॉल करने से पहले उन्होंने बॉल को अपने टॉवल से ड्राई करने की कोशिश की थी, मगर बॉल स्केट हो रहा है उनके हाथ से, ऐसा फील हो रहा है जिस तरह वो दिख रहा है हमें। तो बॉल की केयर करनी पड़ेगी, वरना आपको तो पता है फिर जब रन्स जब शुरू होते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। पीछे गिरा हुआ गेंद था, इसको बैकफुट पे जाके पुल करना चाहते थे इमरान रंधावा, लेकिन इतना टाइम ना कर सके और गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन की जानिब और एक ही रन हासिल हो सकेगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा, जिस तरह पीटीवी में जहादात ने आके सडन एकदम से अटैक शुरू किया था और वो बेहतर पोजीशन में आए, वो जहादात की वजह से ही आए थे। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की बॉल फैसल अकरम की, बिल्कुल मिस जज हुए, रीड नहीं हुई उनको, एक अच्छा बॉल देखने में आया। यहाँ लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैं फैसल अकरम, और जैसा हम जिक्र कर रहे थे दोनों ही जानिब गेंद को घुमा सकते हैं। पिछला गेंद पड़ने के बाद बाहर की जानिब घूमा था, अगला गेंद पड़ने के बाद अंदर की जानिब आया, जिसको खेला मिड विकेट की जानिब। तो एक किफ़ायत शुआर ओवर इख्तिताम पजीर हुआ फैसल अकरम का, सिर्फ 4 ही रन हासिल हो सके। 20 के बाद OGDCL 242 के ताकुब में पहुंच सका 107, 6 विकेट्स के नुकसान पे। और हम उमूमन दिन के इस वक्त हम देखते हैं कि काफ़ी हद तक ड्यू ऑलरेडी गिरना शुरू हो जाती है, अगर ख़ास तौर पे शहर का जिक्र करें, लेकिन अगर हमारे कैमरा में दिखाते चलें अब तक इतनी ज़्यादा ड्यू गिरी नहीं है और काफ़ी ड्राई कंडीशंस हैं, तो यहाँ पे मौका है स्पिनर्स के पास अच्छी गेंदबाजी करके विकेट्स हासिल करने का। नहीं, ऑब्वियसली बात है, आप केयर भी करते हैं और ये इनके जहन में, फील्डिंग टीम के जहन में होगा कि तकरीबन जितने भी बॉलर्स हैं उनके सबके पास अपने इंडिविजुअल टॉवल्स हैं और कहीं ना कहीं बॉल को ड्राई रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बॉलर को हेल्प हो। और जहाँ तक एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतनी ड्यू गिरी नहीं है अभी तक, और मेन चीज़ ये है विकेटें 6 गिर गई हैं। और हम काफ़ी हद तक आपने क्रिकेट खेली है, आप T20 क्रिकेट में तो आप रेगुलरली खेलते हैं, इनफैक्ट आपका अगर पिछला असाइनमेंट हो तो हमें याद है आपने नेशनल T20 खेला था आज इस साल के आगाज़ में, रमज़ान गालिबन के दौरान आप नेशनल T20 खेल रहे थे। इस दौरान अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर की जानिब आई, जिसको सीधे बल्ले के साथ खेला। और हमने इस प्रेसिडेंट्स कप में देखा था कि चौथे राउंड से कुछ मैचेस डे एंड नाइट में मुनक्कद किए गए, और कराची में ज़्यादातर पे मौसम का जिक्र करें तो ड्यू काफ़ी गिरता है, ख़ास तौर पे नवंबर और दिसंबर के महीने के अगर हम जिक्र करें तो। जब आप क्रिकेट खेलते थे तो उम्मन ऐसा होता है कि इन कंडीशंस के लिए ख़ास तौर पे प्रैक्टिस की जाए, गीली गेंद से गेंदबाजों को गेंद कराई जाए। समटाइम कराते हैं कोचेज़ के बॉलर को थोड़ा आदी होना चाहिए, ख़ास तौर यूज़ बॉल को, और स्पेशली उनको इस पर ड्रिल्स होती हैं कि थोड़ा सा बॉल को कंट्रोल किस तरह रखना है ताकि बॉलर एकदम से आए तो फिर वो एक्सक्यूज़ होता है, लेम एक्सक्यूज़ जिसको हम कह सकते हैं। एक और बेहतरीन बॉल, और ये कंसेक्यूटिव में 7वां ओवर कर रहे हैं हम्माद बट, फुल कंट्रोल, वही एनर्जी जो पहले ओवर में थी
अगर आपको याद हो, हमने पहले इनिंग में जब बॉल कर रहे थे अरशद, तो हमने एनर्जी की बात की थी। ये अमाद बट बेहतरीन लाइनो लेंथ पे बॉलिंग, जिस पे बैट्समैन को मुस्तकिल प्रॉब्लम हो रही है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे बैट्समैन कोई गलती करे, एक और विकेट मिले और उनकी टीम को हेल्प हो। मगर मेन चीज़ ये है कि कैप्टन के कहने पे 7वां ओवर कंसेक्टिव। अच्छी गेंद पढ़ने के बाद अंदर की जानिब आई और अंदरूनी को हिस्से को लगती हुई गेंद पहुंची स्क्वायर लेग की जानिब। खास तौर पे पिछले ओवर में जिस अंदाज से पहले करीब आए थे बाहरी किनारा और विकेट कीपर ने अटैम्प्ट नहीं की, उसके बाद एक विकेट लेने में कामयाब हुए थे, तो शायद कप्तान ने मजीद इन पे भरोसा करते हुए एक और एक एक्स्ट्रा ओवर दिया कि यहाँ पे अगर मुझे आप एक मजीद विकेट हासिल करके दे सकें तो हम मजीद फतह के करीब जा अमाद सकेंगे। भट्ट की थोड़ी सी मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि अमाद भट्ट में एक थोड़ी सी आदत है कि वो कैप्टन से बोलता है कि मुझ पर ट्रस्ट करें, मुझे बॉल दें, मेरा रिदम है, या बैटिंग में अगर उसको लगता है कि मैं यहाँ जाके चिप इन कर सकता हूँ तो वो बोलता है जाके। अमूमन प्लेयर इस चीज़ को करते हुए डरते हैं, तो ये इस प्लेयर में है थोड़ी सी कि जाके बोलता है मेरे को लीड करना है फ्रंट से। एक अच्छी बॉल, एज निकला, थर्ड मैन पे सिंगल। या बैकवर्ड पे जाके इसको पंच करना ज़रूर चाहते थे, लेकिन थिक एज हुआ और गेंद गली के नज़दीक से होती हुई पहुंची थर्ड मैन की जानिब और एक रन हासिल हुआ। एक बड़ी शराकतदारी की ज़रूरत यहाँ पे OGDCL को अगर इस मैच में वापस आना है। और फिर हम उस स्टार्ट का जिक्र करेंगे। ज़्यादातर रन, इनफैक्ट जितने भी अब तक रन स्कोर किए हैं OGDCL ने, उसमें आधे रन इमामुल हक और मां सदाकत ने मिलके बनाए हैं पहली विकेट्स के लिए, लेकिन उसके बाद इनकी बैटिंग इतना ज़्यादा परफॉर्म करती हुई नज़र नहीं आई थी। ऑल्दो दानिश अजीज़ ने काफ़ी यूज़फुल इनिंग्स खेली थी प्रेसिडेंट्स कप में, लेकिन अब वो भी डकआउट में वापस जा चुके हैं। लेग स्टंप पे पड़ी हुई गेंद और अंपायर का इशारा वाइड। यहाँ लग रहा है अमाद जो है थोड़ा एक्स्ट्रा जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं इन स्विंग पे कि लेग बिफोर की चांस ले रहे हैं, क्योंकि इमरान रंधावा के साथ काफ़ी क्रिकेट खेली है इन्होंने, और जब आप साथ खेलते हैं तो उनका प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट आपको पता होता है। तो शायद कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि लेग बिफोर का चांस लें। और आखिरी इस ओवर की आखिरी बॉल है। अमाद बट 20 रन दे चुके हैं, 2 आउट किया है, तो देखते हैं, आई होप कि ये अच्छा ओवर फिनिश हो। बिल्कुल एक्सटेंडेड स्पेल है अमाद भट्ट का, लेकिन काफ़ी यूज़फुल रहा है PTV के लिए। ऑस्टम के बाहर गेंद, इसको बैकफुट पे जाके पंच करना चाहते थे, लेकिन ताहा मौजूद थे कवर पे, रन बनाने का मौका नहीं। तो 21 ओवर्स हुए इख्तिताम पजीर। OGDCL पहुंचा 110, 6 विकेट्स के नुकसान पे, और वक्त हुआ जाता है कॉम बॉक्स में तब्दीली का, जहां आपको ज्वाइन करेंगे फ़रूक रियाज और उनके साथ होंगे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त। उससे फायदा क्या हुआ? Thank you very much, Khurram Manzoor and Zishan Khalid. 110 for 6. It's Faisal Akram, who has come into the action. A promising left arm Chinaman is into his second over. He's on the shorter side. Here's a man out there, should be taken. Gone, comfortably held. Wicket for Faisal Akram for the first time. Bad delivery, and the batsman found the fielder. Well, that's my personal opinion. I find that Faisal Akram is one of the best spinners in Pakistan, and he's not given a proper chance. So this time it was off spin. Actually, in our days we used to call them a Chinaman. Now we call them wrist spinners. And a wrist spinner bowl an off spin. This is an off spin, I think. So it's a fair delivery. It was a little bit short. He tried to pull it, but could not time it properly. Straight to the fielder, who took a very good catch. Excellent catch, and Faisal Akram is very happy. So Mohammad Sabar is gone for 12 of 29 balls, 110 for 7.
110 for 7. Faisal Akram has got his first wicket. He was on a shorter side, not the best of balls he has bowled. But the kind of form he is in, he's doing nothing wrong, and he created the breakthrough. The server didn't find the middle part of the bat. Well, I must say, smart captaincy by Shamil, keeping the slips. Asif Afridi is there. He's a very senior and experienced campaigner, and he can be, you know, dangerous if he can stay there. And who else is with him is Imran. I don't know how good he is. Let me see his Ali Imran. He just scored 12. No. Big shot from Asif Afridi. Mid-on is going backwards. Oh, almost he got there. He covered plenty of ground. Asif Afridi smashed it first ball he faced and is off the mark. Well, that was a very, very difficult chance. Running back is not an easy thing to catch. If you're running backwards, like this fielder was running backward, it's very difficult. You have to keep your head straight, which is not possible. He was there, almost there, but slips. And oh, another catch drop. Oh, that was a certain chance, more than half a chance. Faisal Akram once again created the breakthrough. He did his job. But Shamil Hussain, the skipper in the slip cordon, he just could not show his quick reflexes. So Asif Afridi survives. Well, Asif just want to score runs. Let's see. He has been brought into the attack very late, Faisal Akram. Outside edge, certain chance. Shamil, he should have taken that. Well, I request the recording room to record his channel, or we call it a wrist spin, which is off spin, and then when he's going to bowl another googly. Oh, that was a quicker one. We like to compare it. So another over is gone, 22. Overs are gone, 112 for 7. There's a chance at the high catch. Asif Afridi, the first ball, has a good ground covered by Asrar. And the second chance, the two chances created in the same over. Shamil Hussain just could not hold on. It was high, it was away to his right. There's the sponsors we have. This AirSeal presents University of Lahore President's Cup 2025. So tail has been exposed. Samad Butt is will continue with one of the premier bowlers today. Extra bounce. Very well bowled. Ahmad is using all his experience. This is his 8th over, bowling on a stretch, which is very good. He has the stamina. He's pretty senior, but he has that stamina to bowl 8 continuous overs, and he has just given 21 runs and taken 2 wickets. It's very good. And initially, remember, I was telling you that he's bowling to a good line, just he has to keep that one line. And the captain has the faith in him, and he's doing a very good job. He has been so disciplined. He's not doing anything fancy, just exploiting the conditions. Extra bouncer and ducked by batsman Imran. I don't know, but I just has a feeling as a bowler, I like to see that gully fielder, if you can show that gully fielder into the slips. That's the bouncer. Too short. Kept the batsman bat in the air. Yeah, that's not a good way to, a proper way to leave the ball. So I don't mind if the gully fielder is moved towards the first slip. Width provided, cut away. There's a boundary rider. That was a little bit short, but still safe. Only 1 run came off that short ball. And now Asif is there, I think. Yeah, he's the one who's getting a bit aggressive.
against Faisal Akram. Now let me see how he's going to play, how he's going to bat against Ahmad. 113 for 7. He seems to be an aggressive low-order batsman. Asif Afridi has created a couple of chances, so he will certainly try to go after the bowler. A slip in position for Asif Afridi, a conventional first slip position, and that man from extra cover is moving towards the onside. So there are some gaps in the offside as well, 2 big gaps in the driving range. But I like to see the long on a little bit back. It's a good one outside the off stump. Asif Afridi just flirting outside the off stump. Almost a nothing shot from him. Very impressive, Ahmad. He's done a wonderful job for PTV, using his experience, very good stamina. And he's bowling to a very good line. I still like to see that long on a little bit deeper, because he's going to hit either long on or long off. I think long on. Let's see if he hits there or not. All along the carpet, not in the convincing fashion, so the captain might be encouraged to bring one more slip for Ahmad. Well, for the right-hander, he's keeping a gully. He's still keeping a gully. And Asif is not attacking the seamers, Ahmad. He's not attacking Ahmad. He was attacking the spinners. So let's see. Wait for another over from Faisal Akram. .23 gone, 114 for 7. OGDCL is struggling. 242 is a modest score, but they have lost 7 wickets, so Faisal Akram will continue. I'm 100% sure Asif Afridi is going to take a chance or will charge against Faisal Akram towards the long on. Swept away hard. Just one taken. So the left-arm spinner versus the left-arm spinner. So, but both are from entirely different. Totally different. And the Chinaman, the wrist spinners are very rare in the world right now. Do you remember any right now? Currently, it's Kuldeep Yadav from Kuldeep, India, and then South African Shamsi, the British Shamsi. Not and many. Sufyan Mukim as well. Yeah, Sufyan is just from the Pakistan side. See, this is the googly, which went away. Almost the release point is almost similar, so as a batsman it's very difficult to pick. Swept away, it's in the air, that's got to be 4 runs over the infield. That is well played by Imran. And I will say Faisal Akram bowled bad over here. He bowled that off spin of him, which is the wrist spin towards his leg side, so it's easier to hit. If he wants to bowl that ball, he should keep it a little bit on the offside. See, if you bowl on the leg side, it's easier to sweep the ball and hit it towards the boundary. And that, as the fielders are up, now the fielder's gone back, I think so. The 2 fielders were up, now it's gone back, so it will be now let's see where he bowls. He should keep a good line. That's a good line, and he bowled. No, is he bowled? No, I thought it's gone. Yeah, it's gone. Yeah. See, this is where he should be bowling. Faisal Akram struck again. He just considered a boundary and he back on the stumps, came back in sharply and hit the back leg. Umpire had no hesitation whatsoever.
And that is why he's a genuine wicket taker, Faisal Akram. The batsman walked, 8 down now. PTV inching closer from a memorable victory. For spinners, it's very vital that they should bowl to a very good length. And this is the length where he should be bowling as a wrist spinner towards the off stump. A little bit fourth stump or the third stump, that's a legal ball. And whenever a batsman beaten on that, just watch it. And then it goes straight into the ball. So this is a perfect wrist spin. Hit the back leg, no doubt for the umpire. He is walking back Imran Randhawa for 8. 119 for 8 on the board, OGDCL. Two handsome gentlemen commentating. Two are sitting, not standing in the background. The current cricketer. Can you stop? Where is he going? The current cricketer is here. Drone cameraman is doing a great job as covering everyone here in it's getting higher and higher. Mohammad Amar, who bowled well, now has come out to the center with the bat. Oh, he wanted to smash it towards mid-wicket off the leading edge for nothing. Well, it's a typical tail-ender shot. 24 overs gone. Just see that. Whoa, the ball turned in. That's the typical wrist spin. And there was no doubt about it. That is why it's so special, Faisal Akram. Hit the back leg. No problem with the bounce as well. 119 for 8. Arshadullah, the left arm quick bowler, who is at number 11. So I think the partnership towards the end, the batting performance from Jahadat Khan with the tail ender did the trick, and somehow he dragged the score towards 240. Otherwise, anything around 170, 160, the OGDCL would be far more comfortable now. I totally agree with you. Jahadat, you can say, was the man of the match for the batting side. Just the batting. He did wonderfully well because at that time I was telling you that he should stay there till the last over. The last overs were very important because he had almost about 25 overs to 20 overs to bat, and he did that. That was fantastic. Big shot from Asif Afridi on the rise, over the rope for maximum. That is a good strike, right off the middle. Well, I told you to keep the long on at the deep, so though it was a super 6, but still. And the next time he miss hits, then the ball is going to come towards the long on area. So he's going to try again. He's going to try again. Yes, he doesn't have any option left. Cleared his front leg on the rise and smoked it all long on. That's the one way to reply if your side is under pressure. Go for the big shots, apply pressure on the bowling side. Well, there is no harm if you send the long on fielder a little bit deeper. That's what Ahmad is doing. I asked him to be a little bit towards the boundary. He's halfway, I think so. Not even halfway. Big shot again. Mid-on has been cleared for the second time. This time, one bounce over the rope. So 10 runs of the first 2 balls. Well, I said you have to do it. The long on fielder should be there on the line because this is what he can hit. He's not a proper batsman. That's the only way he can hit towards the long on mid-wicket area. Anything short, he's going to hit it over there. So the long on should be on the boundary line. Now he's there, but he should have been there from the first ball. Because you know, Asif Afridi is a tail-ender. This is the only shot he can hit properly. Slow one, washfully played. I think Shamil Hussain heard you after conceding a couple of boundaries.
One of the prominent features, the drone cam is covering every angle, every height. This sponsors ASIAL and the University of Lahore, the two major sponsors. Ahmad Bhatt continues to bowl round the wicket to the left-hander. Oh, swing and a miss. Swing and a miss. Wild swing from the tail ender Asif Afridi. No, I think Ahmad should try a bouncer. Just give it a try. Give it a try towards his head. Let's see what happens. There is a square leg, deep square leg, a fine leg, and a long on. So let him hit. Again, he went for a cut shot this time, but ball him a little bit towards his head. Let's see what happens. I love to do it whenever the tail is playing. I don't mind trying it. He heard you as well. Ahmad Bhatt tried the bouncer, but not well directed. Yeah, I think they are listening to us. And I think they should try it again. But this time should be towards his face, not puts a little bit higher. He can afford to ball the bouncer. That there is a man at deep square leg as well. One of the over has been called by the umpire. But they have a lot of runs to play with, so they can do it. 130. Still, how many runs to? Almost 120, 112 runs. So they can play with that. Ahmad Bhatt coming back after conceding 10 of the first 2 balls. So he's got his line right now. No, he's keeping a little bit shorter length towards to Asif. Asif going to hit again. You will see, he's going to hit towards the long on or towards the mid wicket area. He's going to give a room a little bit, and he's going to hit again. Now it's a challenge for him. Just wait and see. Oh, chance of a run out. Oh, he fumbled. He fumbled. Mohammad Amir was halfway down, but he survives. He came back. Over gone. 25 overs have been bowled. 130 for it. Asif Afridi tried to take the single. He refused to go for a run. In the end, no damage done. And one of the beautiful floodlights, just a touch hazy and foggy situation. Otherwise, the production has been top class. So normally we don't see. Nothing to do with the production. Yesterday I was going towards the beach area for my gym. There was a lot of fog. It was very hazy. Could not see after 20 yards, things like that. It was for the first time in Karachi. And it's getting a little foggy right now here in Karachi too. Karachi is still a blessing for cricket. The only city in Pakistan where the cricket can be played all the 12 months. That's the googly. If you can keep this thing, you know, we can compare it. If we can keep that record in the leg before. So to comparison, we can tell the viewers what is a googly. This is a googly. See, the ball leaves you. Go away from you like this. Yes. Terrific bowling. Low full toss goes down the ground. Long on coming around. Just good. Oh dear, that's gonna be 4 runs. He made some effort, but somehow could not control. A boundary picked up by Mohammad Amir. That was a good try, but he could not control himself or balance himself to stop that ball. Anyway, it was a good try by the fielder. So he went for a big one, and I think did the ball turn? No, he slipped early. Faisal is bowling to a very good line. He must try again another googly from the middle stump. Let him go for a sweep shot. Oh, big shot. He found the cow corner. Great sound of the bat. And that's gone all the way for half a dozen. No worries, Faisal.
You have a lot of runs to play with. Let him hit. Give him another flighted ball. And he's going to try again. It's a very good shot. Very well timed. Very well timed. Good shot. Big hit. Yes, the sound of the bat tells how well it's connected. He's stretching his front leg very much. He's just trying to reach the pitch of the ball. And so far he has been quite impressive. 10 runs he has got of the five balls he has faced. And dot ball to finish the over. So good job by Mohammad Amir. 26 gone, 140 for 8. नहीं हमने करना है यार, वो तो असिस्ट करते हैं, वो तो असिस्ट करते हैं ना, अगर वो बातों में लगा हुआ था वाटर. That's the batting card we have. Maz off to a flyer, 35 of 16, Imam 20 of 21. And after that, no stability we saw from in the middle. Harun goes 117 for Rohail, 3 for Adil, Danish goes for 14. And they just really struggle to get the partnership going. Well, if you see the scorecard of the PTV, the middle order was a bit scored a lot of runs, and then in the end, Jahandad. That is off the bat, hit the back of the helmet, I guess. Some apology from Ahmad Butt. I think he's going to get some medical attention. Anything on the head. Immediately the physio comes in the middle. It must be the concussion protocol. I don't know where he got hit, on the helmet or on at the back. I hope it's not a back. The back is not that good thing. So drinks have been taken. So Asif Afridi is thankfully back in action, back on the strike. He's fine now. He got a blow. He seems to be okay.
Very well done, Ahmad. I'm really impressed with his fitness. His bowling is 10th over, which is the final over of his quota. And he bowled, and it's taken 2 wickets for 34. He very well bowled, and he's kept the batsman in check all the time. Good liner length, good swing, and very impressive. Very watchful, Asif Afridi. Ahmad Butt is about to finish his full quota of 10 overs. He's been super impressive. He bowled with a lot of discipline. He has used the conditions well. He has used a new ball with a good effect, and picked a couple of very important wickets. Well, now this ball, I have a feeling, my sixth sense saying that Asif is going to hit towards the mid-wicket or long one. Let's see if I'm right or not. He has just got a blow. Will he be more careful? Slower one, well bowled and well read. Found the fielder. It's a good change of pace. Well, still have a lot of runs to score. 102 runs with 2 wickets. So it's almost over for OGDCL. And PTV must be very happy team right now at the moment. These are the match balls, match cricket balls. One more. So OGDCL, remember, they have been unbeatable throughout the competition. They dominated the competition. They beat PTV by 5 wickets in the round match. And now the things have changed dramatically. This is how the cookies crumble. We see, and 241 posted by PTV, and that was exactly what we anticipated. That should be an easy task for OGDCL. Back with stars. Thus, credit goes to PTV bowlers. They were so clinical. But I will say the credit goes to the middle order batting of PTV, where they scored a lot of runs. And the lower order, Jahandad, and then before him the other batsmen, they did well. They all contributed a little bit. And 10 overs completed by Ahmad. 27 overs gone, 141 for 8. Oh, tossed up outside the off stump. He just let the ball go. Oh, well bowled. Spun sharply away from Asif Afridi. Try to heave it towards mid-wicket. Smart bowling by Faisal. Oh, good sound of the bat. Low full toss. And has found the gap for 4 runs. Good strike. Asif Afridi. He connected it well. And plenty of vacant space down there at mid-wicket boundary. I'm really surprised that there is no mid-wicket. See, there is a square leg if we see the onside field. The long on fielder went to pick the ball. And there is a square leg. And there is no mid-wicket. From square leg till long on, there is no fielder. And it's very easy to hit him towards the mid-wicket area. Now they are sending him back.
that the other fielder was at the short mid wicket, and they're bringing the deep. That's the mid wicket guy. He's off strike, Asif, so Faisal Akram has a chance to deliver to Mohammad Amir. 2 balls left in this over. That leg side, Faisal Akram. Swept away hard. 2 men are converging. Did well. Extra dive to the right. They need to be a little careful. Well, good commitment by the fielder. Come on, yaar. And he did stop a boundary. Very well done. And this might be my last ball before the match finishes. So I said when I was giving the pitch report to bat first. It's up in the air. Is he now safe? Just 1 bounce over the row for 4 runs. Good strike by Mohammad Amir. This is good batsmanship by both the batsmen. They have been watchful and now finding boundaries. Boundary to end the over. 28 gone. 152 for 8 on the board. OGDCL. So they need exactly 90 in 22 overs. Time for the change in voices. Khurram Manzoor and Zashan Khalid will take up the commentary now. Left arm over. तो 152 तक पहुंच चुकी है OGDCL की टीम। 8 विकेट्स का नुकसान उठाया है अब तक 28 ओवर्स में। 90 रन मजीद दरकार। और क्या लगता है खुर्रम, कहीं वापसी हो सकती है OGDCL की इस मकाम से? आपके कहने पे तो मौजे ही दिख रहा है मुझे। अगर ऐसा होता है तो ये मौजे से कम नहीं होगा, मगर क्रिकेट में बोलते हैं कि हर चीज़ पॉसिबल है टिल आखिरी बॉल तक। तो देखते हैं। अब ये जहादात को लाए गए, कप्तान ने सोचा कि जहादात को लाएं और यहाँ पे रैप अप करें, मगर आसिफ आफरीदी जो है वो थोड़ा ख़तरनाक मूड में लग रहे हैं, ख़ास तौर फास्ट बॉलर के खिलाफ। ऑस्ट्रम के बाहर गेंद थी, इसको जाने दिया विकेट कीपर के पास। शॉट अटेम्प्ट नहीं किया इस गेंद पे आसिफ आफरीदी ने। काफ़ी तजुर्बा है आसिफ आफरीदी को। इससे पहले भी हम उस मैच का जिक्र कर रहे थे जब ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मध्य मुकाबल थी और सरवर आफरीदी ने आसिफ आफरीदी के साथ मिलके 8वीं विकेट के लिए 103 रन की पार्टनरशिप लगाई थी, जिसमें 33 कीमती रन जोड़े थे आसिफ आफरीदी ने। देखना होगा कि क्या आज मोहम्मद आमिर के साथ मिलके मजीद 90 रन या उसके करीब तक लेके जाते हैं अपनी टीम को या नहीं। एक और अच्छी बॉल, चेंज ऑफ पेस थी, आसिफ ने रीड किया और सेंसिबल खेला। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आसिफ आफरीदी और आमिर क्या ये कर पाएंगे या नहीं, मगर दोनों बैटिंग सही करते हैं। आमिर भी 16 रन पे खेल रहे हैं 10 बॉलों पे, और 26 बॉलों पे 20 रन पे आसिफ खेल रहे हैं। तो हो सकता है, मगर इनके इरादे क्या हैं ये यही बताएंगे खेल के। बाहरी किनारा लिया लेकिन गैप तलाश करने में कामयाब हुए हैं आसिफ आफरीदी और एक और 4 रन हासिल करेंगे बैकवर्ड पॉइंट की जानिब। आसिफ जिस तरह फास्ट बॉलर्स को खेलते हैं, ये मुझे लग रहा था कि ये ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं बॉल को कि इनके जोन में गिरे और उसको शॉट खेलें, और उनको थोड़ी सी आगे गिरी हुई बॉल पे हेल्प होती है। देखें बैट का फेस खोला और पॉइंट के ऊपर से बॉल गया और चौका। अच्छा शॉट था, विद इन स्टंप बॉल करने की प्लानिंग से मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा डर रहे हैं जहादात, क्योंकि डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट और मिड ऑन लिया हुआ है और बड़ी हिट अक्सरियत में यही मारते हैं आसिफ आफरीदी। एक और बैक ऑफ द हैंड स्लो गेंद और काफी करीबी मामला हो सकता था, क्योंकि ऑफ स्टंप के काफी नजदीक से होती हुई गेंद पहुंची विकेट कीपर तैमूर के पास। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं जहादात। पिछला बॉल तेज़ था, ये वाला बैक ऑफ द हैंड चेंज ऑफ पेस किया और कीपर ने अच्छा बॉल को कलेक्ट किया। 2 टिप्पे में आई बॉल। पुरानी गेंद से काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं जहादात, खास तौर पे जब बैक ऑफ द हैंड स्लोअर डिलीवरी। एक बार फिर हल्की की थी गेंद और ऑफ स्टंप के बाहर रखी थी। कुव्वत भरा स्ट्रोक खेलना ज़रूर चाहते थे आसिफ आफरीदी, लेकिन बीट हुए।
इस दौरान लैक ऑफ पेस से ज़्यादा चाह रहे हैं कि ये स्लो वन पे चांस लें और उस पर इनको विकेट मिले, और कहीं ना कहीं आसिफ की कैलकुलेशन अभी तक अच्छी जा रही है। तेज़ बॉल को ढूंढ रहे हैं, आगे गिरी हुई तेज़ बॉल हो जो इनका फेवरेट जोन है, और कहीं ना कहीं फील्ड में तब्दीली की है। डीप कवर जा रहा है, मिड विकेट सर्कल में आ गया है और कप्तान ने स्ट्रेटजी बदली है। तो देखते हैं अगली बॉल। इस दौरान बड़ी हिट की जानिब गए और मिड विकेट पे फील्डर मौजूद थे, ताहा रन ना हासिल हो सकेगा। 29 ओवर्स हो इख्तिताम पजीर। OGDCL 156, 8 विकेट्स के नुकसान पे। एक 156, 8 विकेट्स के नुकसान पे 86 रन से मजीद दरकार और सिर्फ 2 ही विकेट्स लेना बाकी PTV के लिए। और ये देखते हुए अब एक और बॉलिंग में तब्दीली की गई है और यूनिवर्सिटी रोड एंड से अब फैसल अकरम की जगह अली उस्मान को लेके आए हैं कप्तान शामिल हुसैन। तक काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है अली उस्मान ने। आदिल अमीन की विकेट हासिल की, 4 ओवर्स में सिर्फ 15 रन से कंसीड किए। 4 ओवर में 15 रन दे के बहुत ही कीमती विकेट लिए, और अली से मुझे लग रहा है कि आमिर शायद चांस ले, क्योंकि विद इन स्टंप बॉल करते हैं, पता है इतना बॉल टर्न नहीं हो रहा है पिच पे। यहाँ स्टम्प्स को टारगेट करते हैं और अच्छी लेंथ पे गेंद गिराते हैं। मुश्किल होता है बैटर को कि पिच ऑफ द बॉल पे आए और उसको उठा सकें। इससे पहले हमने देखा फैसल अकरम के खिलाफ बड़ी हिट लगाई थी आमिर ने। एक और अच्छी बॉल, बहुत ही ज़बरदस्त चैनल बॉलिंग कर रहे हैं अली विद इन स्टंप। इतना आसान नहीं होता है, कहीं ना कहीं एक डाउट आता है कि अगर बॉल मिस हुआ तो लेग बी 4 के चांसेस हैं। अच्छी बॉल कर रहे हैं, देखें थोड़ा सा छोटे कदम से खेले, रिसीव हुए, हल्का ब्रेक हुआ। या उस लेंथ पे गेंदबाजी करते हैं जहां आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि गेंद को छोड़ना, आपको बल्ला नीचे लाना ही होता है। और वहां से अगर ये गेंद को स्पिन कराने में, ग्रिप हासिल करने में कामयाब होते हैं तो काफ़ी ख़तरनाक साबित होते हैं। आमिर के साथ वही हो रहा है, अली वही कर रहे हैं जो ये बैट्समैनों के साथ कर रहे थे। आमिर विद इन स्टंप बॉल कर रहे थे, तो आज अब एक ही दिन में इनको भी वही चीज़ फेस करनी पड़ रही है जो ये खुद कर रहे थे अपनी बॉलिंग में। विद इन स्टंप बॉल हो रही है ताकि ये चांस लें तो लेग बी 4 और बोल्ड होने के चांस हो। तो आमिर सेंसिबल खेल रहे फिलहाल वक्त, शायद स्ट्रेटेजी बनाई है आसिफ ने। स्वीप करने गए, आउट होने का खतरा और पैड को टकराती हुई, बैट्स को छूती हुई गेंद पहुंची विकेट कीपर तैमूर के हाथ में। तो एक और विकेट लेने में कामयाब हुए अली उस्मान। जिस मकसद के लिए उनको लाया गया था उसको पूरा किया और नवी विकेट गंवाई यहाँ OGDCL ने। जी हाँ, जिसका डर था वही हुआ, आमिर आउट हो गए। और मुझे ऐसा लगा बैट पे लगने के बाद बैट पे लगी है और कीपर ने कैच पकड़ा है। ज़बरदस्त लीगल डिलीवरी और ज़बरदस्त डिसीव किया है अली ने ये। और जी बिल्कुल बैट का ऊपरी किनारा लेते हुए कीपर ने पकड़ा और अपील हुई और वो आउट हो गए। 9 आउट हो गए हैं 156 रन पे। 30 ओवर का इख्तिताम हुआ।
जहादाद अपने कोटे का छठा ओवर करने के लिए एक बार फिर आए हैं। आसिफ फेस करेंगे। 30 बॉलों पे 24 रन कर चुके हैं। आखिरी विकेट है और क्या ये जहादाद की तरह जिम्मेदारियां लेंगे? शॉर्ट पिच गेंद थी जिसको जगह बना के कट करने में कामयाब जरूर हुए। अर्श दौड़ते हुए आए, इसरार अपने बाएं जाने थर्ड मैन से यहाँ पे मिक्सअप हुआ है। रन आउट होने का मौका भी था नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे, लेकिन बैकअप पे कोई फील्डर मौजूद नहीं, इसलिए थ्रो करने से गुरेज किया तैमूर विकेट कीपर ने। और यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी इसरार की थ्रो की। बहुत ही अच्छा उन्होंने पहले फील्ड की, उसके बाद जो थ्रो थी बहुत तेज थ्रो थी जिसपे आसिफ थोड़ा सा मिस जज हुए, जिसकी वजह से रन आउट का चांस क्रिएट हो रहा था। अब देखते हैं कि जो नए बैटर हैं वो जहादाद को किस तरह खेलते हैं, क्योंकि आज के एडवांस क्रिकेट में थोड़ी बहुत बैटिंग तो बॉलर्स करते ही हैं। ये देखें, अच्छा पिकअप और गुड थ्रो। कीपर अगर ये चांस लेते तो शायद आसिफ रन आउट हो सकते थे। क्या बिल्कुल इसी वजह से आसिफ आफरीदी दूसरे रन की ताकों में थे, क्योंकि उन्होंने अरशदुल्ला को एक्सपोज नहीं करना था। इस दौरान कुव्वत भरा ड्राइव, लेकिन यासिर खान मौजूद हैं कवर पे, कोई रन हासिल ना हो सकेगा। और इस अंदाज से विकेट गंवाई थी आमिर खान ने। स्वीप करना चाहते थे, गेंद पहले बैट को टकराई और फिर बैट को छूने के बाद हवा में गई और तैमूर ने आसान कैच अपने हाथों में महफूज किया। अमूमन कुछ मुश्किल हो जाता है जब आप विकेट के पीछे खड़े हों और गेंद आपसे ऊपर हो और आप हेलमेट पहने हो एज अ विकेट कीपर, लेकिन इतनी रफ्तार नहीं थी और एक आसान कैच मिला यहाँ तैमूर का। अच्छा दिन गुजरा है आज तैमूर के लिए विकेट के पीछे, काफ़ी शानदार कैचेस भी लिए हैं। जहादाद की एक वाइड ऑफ द क्रीज जाके एक ऑफ स्टंप से बाहर डिसीव करवाने की चेंज ऑफ पेस डिलीवरी थी, जो बैट्समैन ने बड़ी स्मार्टली तरीके से छोड़ दिया। क्योंकि मुझे वो ऐसा लग रहा है कि अरशद भी चाह रहे हैं कि ज़्यादा बॉलें जो हैं वो आसिफ ही फेस करें, और जो एक छोटी सी रन है मौजूद वो आसिफ ही अपने हाथ में लें और उससे जो मैक्सिमम रन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आखिरी प्लेयर आउट ना हो जाए कुछ कह नहीं सकते। क्रिकेट है ये। अच्छी गेंद और शॉर्ट पिच गेंद की थी, इतना बाउंस ना हुआ और अपनी नजरें हटा चुके थे अरशदुल्ला इस गेंद पे, बैठ गए थे। बच गए हैं, सीधे लफ्जों में बच गए हैं, अल्लाह ने बचा लिया इनको। अमूमन फास्ट बॉलर के साथ ये देखने में आता है कि शॉर्ट पिच बॉल से थोड़ा डर खौफ होता है, और देखें ये शॉर्ट पिच की थी, उन्होंने अपने चेहरे को भी पीछे की तरफ मोड़ लिया था। वो तो शुक्र है कि बॉडी में बॉल नहीं थी, बॉल में इतना बाउंस नहीं था और अवे थी बॉल। और देखा जाए तो अपना बैट भी ना हटा सके थे। अमूमन हमने देखा है कि गेंद जब इतना नजदीक से होती है तो इस दौरान बड़ी अपील, क्लोज और फिंगर हवा में बुलंद। शानदार परफॉर्मेंस आज पीटीवी की जानिब से। जहादाद खान ने आखिरी विकेट समेटी, एक अच्छी यॉर्कर पैड्स को जा टकराई, अरशदुल्ला के पास कोई जवाब नहीं, और इसी तरह एक बड़ी कामयाबी समेटी आज पीटीवी की टीम ने ओजीडीसीएल के खिलाफ। जहादाद आज के हीरो निकले। शानदार बैटिंग, शानदार बॉलिंग, जितनी तारीफ कर ली जाए कम है। जहादाद ने अपनी मौजूदगी का पूरा बताया कि जहादाद जब तक मौजूद हैं बैटिंग में तब तक आप उम्मीद रख सकते हैं, और एग्जैक्टली उनके वो रन काम आए टीम के जो उन्होंने आखिर में आके चिप इन किए थे, और उसी तरह बॉलिंग में डिलीवर किया। उन्होंने 5.5 बॉलों पे 30 रन देके 2 आउट किया है, और बेहतरीन परफॉर्मेंस पीटीवी की टीम की। जी हाँ बिल्कुल, ये वो वक्त ऐसा था जब पीटीवी की टीम ने 7 आउट्स हो चुके थे 170 रन पे, कोई खराबी नहीं इस गेंद पे। हील का काफ़ी हिस्सा लाइन के पीछे मौजूद था। एक यॉर्कर अटेम्प्ट की, फुल टॉस हुई, इसको डिफेंड करना चाहते थे लेकिन गेंद बैट्स को टकराई। अपील की जहादाद खान ने, और अंपायर ने भी इस बात का इशारा दिया कि जहादाद खान ने एक और कामयाबी समेटी, और ओजीडीसीएल आज सिर्फ 157 रन पे हमें ढेर होती हुई नजर आई। 84 रन से बड़ी कामयाबी समेटी पीटीवी ने, और काफ़ी हद तक मुस्कुराहटें बिखेर दी डग आउट में। अब तक की शानदार परफॉर्मेंस रही है पीटीवी की। अगर पिछले 3 मैचेस का जिक्र करें, पहले 2 कंसेक्यूटिव मैचेस जीते बड़ी टीम्स के खिलाफ, और आज एक ऐसी टीम्स के मद्दे मुकाबिल थी जो अब तक एक मैच भी ना हारी थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा एक अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस जहादाद खान की जानिब से। तैमूर ने अच्छी
बैटिंग दिखाई, तहा ने कीमती रन्स जोड़े मिडिल ऑफ द ऑर्डर और एक फाइटिंग टोटल खड़ा करने में कामयाब रहे अपने मुकर्ररा 50 ओवर में 241 रन बना के। और तो अगर बॉलिंग का जिक्र करें, इतना शानदार आगाज नहीं था जब मास सदाकत आड़े हाथों लेते हुए नजर आए तमाम ही बॉलर्स को। एक जारहाना मिजाज से आगाज दिया था 16 गेंदों पे 35 रन बना के, लेकिन उसके बाद जो विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरू हुआ वो थमा नहीं और तमाम ही बॉलर्स ने यहाँ पे कामयाबी समेट के इस बात को यकीनी बनाया कि पीटीवी ने ये पहला सेमीफाइनल, पहला मार्का अपने नाम किया है नॉकआउट स्टेजेस का और अब वो 25 दिसंबर के रोज़ फाइनल में एक बार फिर उतरेगी नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में। मायूस से चेहरे ओजीडीसीएल के, अब तक की परफेक्ट कैंपेन रही थी लेकिन अपनी विनिंग स्ट्रीक को बरकरार रखने में नाकाम रहे और एक बड़े अहम मुकाबले में आज शिकस्त का सामना हुआ। ये मास सदाकत आउट होने वाले पहले बैटर थे जब टो एंड ऑफ द बैट को गेंद टकराई थी। एक शानदार कैच लिया था इसरार ने, उसके बाद हारून अरशद की बड़ी विकेट हासिल की, इमामुल हक को चलता किया, एक्स्ट्रा बाउंस मिला, अली उस्मान आए, उन्होंने आदिल उस्मान की बड़ी विकेट हासिल की और फिर एक वो मैराथन स्पेल अब्बास भट्ट का, साथ में 2 विकेट्स हासिल की अपने स्पेल में, लगातार 10 ओवर्स कराए। फैसल अकरम ने भी चिप इन किया, विकेट हासिल की अपने स्पेल में, 2 विकेट्स उनके नाम रही। इमरान रंधावा को आउट किया, अली उस्मान को एक बार फिर लाया गया, उन्होंने 9वीं विकेट हासिल की और ताबूत में आखिरी कील ठोकी यहाँ पे जहादात खान ने जब अरशदुल्ला को लेग बिफोर आउट किया। तो ये बैटिंग की सूरत हाल ओजीडीसीएल की। 242 रन का हदफ था। मास सदाकत और इमाम उल हक एक बार फिर इनिंग्स का आगाज करने आए। जारहाना मिजाज से इनिंग्स का आगाज किया मास सदाकत ने, छक्के और चौके की बारिश की, लेकिन वो आउट होने वाले पहले बैटर थे। 16 गेंदों पे 35 रन बनाए। हारून अरशद सिर्फ 1 ही रन बना के डगआउट में वापस गए। रोहिल नजीर ने सिर्फ 17 रन बनाए। इमाम उल हक 20 रन बना के पवेलियन लौटे। आदिल अमीन कप्तान सिर्फ 3 ही रन बना सके। दानिश अजीज का तजुर्बा काम ना आया, सिर्फ 14 ही रन बना सके। मोहम्मद सरवर ने भी 12 रन बनाए, जबकि आसिफ आफरीदी लोअर डाउन दी ऑर्डर कुछ मुजाहिमत दिखाते हुए नजर आए जब 31 गेंदों पे नाकाबिल शिकस्त 25 रन बनाए। कुछ हद तक साथ निभाया इनका मोहम्मद आमिर ने, जिन्होंने 16 गेंदों पे 16 रन बनाए, लेकिन वो भी ज़्यादा देर क्रीज पे टिक ना सके। शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस आज देखने को मिली तमाम ही बॉलर्स से। जहादात खान जो नई गेंद से थोड़े महंगे साबित हुए हों, लेकिन उन्होंने एक बार फिर दिखाया वाई ही सच अ वैल्यूबल ऑलराउंडर फॉर पीटीवी। 2 विकेट्स अपने नाम की। इसरार अहमद ने भी अच्छी रफ्तार से गेंदबाजी की, कुछ रन ज़्यादा दिए लेकिन 2 बड़ी कामयाबी समेटी। अम्माद भट्ट ने लगातार अपने 10 ओवर्स कराए, 1 मेडन के साथ 2 विकेट्स वो भी लेने में कामयाब हुए 35 रन देके। अली उस्मान ने एक बार फिर दिखाया वाई ही हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर। 5 ओवर्स में 15 रन देके 2 विकेट्स वो अपने नाम करने में कामयाब हुए और फैसल अकरम भी 5 ओवर्स में 2 विकेट्स हासिल की 32 रन देके। तो याद रहे आज पहले सेमीफाइनल में, और ये वो मौका जिसका पीटीवी की टीम और हम सबको शिद्दत से इंतज़ार था। मोहम्मद वसीम जो हेड कोच है पीटीवी के, एक बार फिर अपनी फतह का जश्न मनाते हुए अपनी टीम के साथ। याद रहे पिछले 3 मैचेस काफ़ी यादगार रहे हैं पीटीवी के लिए, पहले एसएनजीपीएल, फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और अब एक अहम मुकाबले में अनबीटन ओजीडीसीएल टीम को भी एक बड़ी शिकस्त से 2-4 किया। ये है मैच समरी। याद रहे आज टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया था आदिल अमीन जो कप्तान है ओजीडीसीएल के, और 241 रन बनाए थे अपने मुकर्ररा 50 ओवर्स में, जिसमें जहादात खान नुमाया रहे। 47 गेंदों पे 63 रन बनाए। तैमूर ने शानदार इनिंग्स के लिए 48 रन बना के उनका साथ निभाया था ताहा ने, जिन्होंने 35 रन बनाए। इमरान और आदिल 3-3 विकेट्स अपने नाम करने में कामयाब हुए, जबकि तजुर्बेकार आसिफ आफरीदी ने भी 2 विकेट्स चटकाई और जवाब में हमने देखा ओजीडीसीएल सिर्फ 157 रन पे ढेर होती हुई नजर आई। मां सदाकत जो आज अपनी इनिंग्स को प्रोलॉन्ग न कर सके, 16 गेंदों पे 35 रन बनाए। आसिफ आफरीदी ने 25 रन बनाए। इमाम उल हक भी तजुर्बा काम ना आ सका, 20 रन बना के वो पवेलियन वापस लौटे, जबकि अम्माद और तमाम बॉलर्स ने 2-2 विकेट्स हासिल की। तो इस तरह कामयाबी समेटी आज पीटीवी ने पहले सेमीफाइनल्स में। वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नेशनल बैंक स्टेडियम से विद द पोस्ट मैच शो।
AirCR presents the University of Lahore President Cup और आपको खुशामदीद कहते हैं नेशनल बैंक स्टेडियम में, जहां पहला सेमीफाइनल खेला गया OGDCL और PTV के दरमियान, जो कि PTV ने 84 रन के बड़े मार्जिन से अपने नाम किया और फाइनल में जगह बनाई। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी कमेंटेटर टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर, कप्तान PTV के शामिल हुसैन और जादाद खान जो मैन ऑफ द मैच हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे विनिंग कैप्टन शामिल हुसैन से। शामिल, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और टॉस आपकी टीम हार गई थी, लेकिन आप कॉन्फिडेंट थे कि आपको पहले बैटिंग ही करनी थी। तो सबसे पहले बताएं, वर यू हैप्पी विद द स्कोर? 241 कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन समहाउ इन द एंड ये एक मैच विनिंग साबित हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह कि शुक्र हम जीते। और जैसे हमारा स्टार्ट हुआ था तो हम लोगों ने जैसा रिकवरी की, जैसा जानदाद खेला, जैसे बीच में तैमूर भाई खेले, ताहा खेला, तो हम लोगों की बहुत अच्छी रिकवरी थी। और ऑब्वियसली बॉलिंग के ऊपर आपको बिलीफ होना चाहिए, जो हमें था। हम लोगों ने अपने प्लान सेट किए हुए थे बैट्समैन के लिए और हम लोगों ने उसको कमिट किया। शुरू के अंदर पे ऑफ नहीं हुआ, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पे ऑफ हो गए और बॉलिंग के ऊपर हमें पूरा यकीन था कि वो कर सकते हैं। फिर जब 2-3 विकेटें गिरी, उनके ऊपर प्रेशर आया, फिर हमने मैच ले गए। अच्छा, पार्टनरशिप ज़रूर लगी, कुछ रन रेट भी इतना हाई नहीं था, लेकिन आप लोग का मेन फोकस था कि विकेट हाथ में रखनी और आखिर तक जाना है। तो वो चीज़ पे ऑफ हुई आपको तो टुवर्ड्स दी एंड, और फिर जहादात की बड़ी बहुत ही इफेक्टिव इनिंग्स। हाँ जी, हमें यही था कि जानदार जब तक क्रीज पे रहेगा तो रन आते रहेंगे। हमें पता हुआ कि एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, तो हमें बाउंड्रीज ही चाहिए थी। हमें इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कि विकटें हमारी एक रहेगी, 2 रहेगी। अगर जानदार क्रीज के ऊपर था, मेन स्टे हमारा यही था। तो हमें ये था कि ये जितना एंड तक लेके जाए, चाहे आखिर तक लेके जाए। साथ फैसल ने थोड़ा बहुत अच्छा साथ दिया कि उसने अपनी विकेट नहीं दी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो काउंट होती है, जो एंड पे आके हमें जितवाती अच्छा, हैं। बॉलिंग बड़ी इंप्रेसिव रही। फैसल अकरम, अम्माद बट सबने 2-2 विकेटें ली। तो ऐसा बॉलिंग जब आप डिफेंड करने गए तो क्या थॉट प्रोसेस था, क्या बातें की आपने अपने बॉलर से? देखिए, हमें पता था कि वो थोड़ा सा आके अटैकिंग इंटेंट से आके खेलेंगे, लेकिन हमें ये था कि अगर उनकी 2 विकेटें गिर गई, क्योंकि वो लोग 2 प्लेयर्स पे ज़्यादा रिलाई कर रहे थे, तो हमें ये था अगर इनकी 2 विकेटें हम लोगों ने ले ली तो इनकी टीम थोड़ी अंडर प्रेशर हो गई। और वही हुआ। फिर उसके बाद फैसल ने आके बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसने मेन विकेट्स ली। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब प्रेशर बढ़ता गया तो फिर टारगेट उनके हाथ से निकल गया। एक बड़ी फतह यकीनन OGDCL जो कि अनबीटेबल थी, और PTV के लिए पहला ये फाइनल है, ये आपको ये एजाज़ जाता है। सो अब फाइनल आने वाला है जो कि KRL या SNGPL के अगेंस्ट होगा। सो व्हाट इज़ योर थॉट? क्या प्रिपरेशन है और क्या कॉन्फिडेंस है अभी डगआउट में? देखिए, कॉन्फिडेंस तो बहुत है और मेन चीज़ ये है कि हम चीज़ों को सिंपल रखेंगे। कोई हम ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ करने नहीं जाएंगे। जो हमारे बेसिक्स हैं हम उस पर स्टिक करेंगे। बैट्समैन अपने रन्स करने जाएँ, बॉलर अपनी अच्छी जगह पे बॉलिंग करे। एंड पे आके जो छोटी छोटी सिंपल चीज़ें वही आपके काम आती हैं। अच्छा, खुर्रम, आप कुछ पूछना चाहेंगे शामिल हुसैन से? इनकी जिस तरह बैटिंग रही, जिस तरह की परफॉर्मेंस रही इनकी बैटिंग की? जी बिल्कुल। शामिल, सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद कि आप लोग फाइनल के लिए क्वालिफाई किए। जानदाद ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है, बैट बॉल दोनों तरीके से। कोई ख़ास प्लानिंग, क्योंकि दोनों टीमों के खिलाफ आप राउंड में भी खेले हो, SNGPL के खिलाफ भी, KRL के खिलाफ भी, क्योंकि हर टीम का एक वीक पॉइंट होता है और उसको ज़्यादा टीमें टारगेट करती हैं। तो कोई ख़ास स्ट्रेटजी होगी इनमें से दोनों को देखेंगे आप, क्योंकि कल आप मैच देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि किस तरह का आएगा। तो कोई ख़ास जहन में प्लानिंग है उनके खिलाफ? कोई ख़ास नहीं। ऑब्वियसली मेन चीज़ ये होती है कि हम अपनी बेसिक्स पे स्टिक करें। जो हमें सबसे अच्छा आता है हम सबसे पहले उस पर काम करें। जो हमारी स्ट्रेंथ है हम उस पर रहें। अगर हमारी बैटिंग अच्छी है तो उसके अंदर हम क्या बेहतर कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से जितनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें देखनी होती है। टॉस जीत के तो क्या करना है, फिर पिच किस तरह होगा, वो चीज़ें ऑब्वियसली ऑन द डे बंदा आके देखता है। लेकिन हमारी प्रिपरेशन के अंदर से हमारी मेन चीज़ ये है कि हम लोग अपना प्रोसेस अच्छा रखें। हमारा शुरू से यही रहा है। विश यू गुड लक। और जानदाद, आपसे मैं चाहूँगा कोई ख़ास तैयारी, जिस तरह आके आपने बूम बूम किया है, तो कोई आपके फाइनल में भी जहन में है कि इस तरह कोई डैमेजिंग, जिस तरह जैसे आपने बॉलर्स को डैमेज किया है, ये कहूँगा तो ये गलत ना हो, जिस तरह आपने बम्बार्टमेंट की है फास्ट बॉलर्स को, तो कोई ख़ास प्लानिंग फाइनल के लिए? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करो कम है। बड़े मैच में अल्लाह पाक ने इज़्ज़त अता फरमाई। बस हमारा कोई इतना ख़ास प्लान नहीं होता। बस टीम जो डिमांड कर रही होती है उस टाइम हम जो सिचुएशन बनी होती है। आज भी जिस तरह वसीम भाई ने मुझे कहा कि जाओ और अपनी बैटिंग करो, बैटिंग में प्रमोट भी किया मुझे कि जाओ तुम अगर 25-30 रन तेज़ कर देते तो टीम का फ़ायदा हो जाएगा। बस मेरा वही सिंपल प्लान होता है कि मैं जिस तरह मैं बैटिंग करता हूँ उस तरह खेलूँ और अल्लाह पाक ने मुझे इसमें इज़्ज़त अता फरमाई। चलें, विश यू गुड लक आप लोगों के लिए फाइनल के लिए। आई होप कि आप लोग अच्छी क्रिकेट खेलें। बहुत बहुत शुक्रिया शामिल और जहादात, मैन ऑफ द मैच, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल एज वेल, द फर्स्ट एवर फाइनल फॉर PTV। और 84 रन के बड़े मार्जिन से उन्होंने शिकस्त दी और जगह बनाई। याद रहे कि OGDCL की टीम जो थी वो अनबीटेबल थी। खुर्रम, आपसे बात करेंगे वही कि एक ऐसी टीम जो कि अनबीटेबल थी और वो एज अ फेवरेट गई, और यहाँ पे PTV ने बिल्कुल इनको आउट क्लास किया। हाउ डू यू सी, किन एरियाज पे PTV ने इनको जो है को चित कर दिया और एक बड़े मार्जिन से ये फतह अपने नाम नहीं, की? कहीं ना कहीं ऐसा लगा वेल ऑर्गेनाइज प्लानिंग थी और बड़ा उसको एग्जीक्यूट जिस तरह किया, खासतौर माँ सदाकत जिस तरह उनको मुस्तकिल बाउंसर्स के ऊपर वो चाह रहे थे कि शॉट अटैम्प्ट करें, जिस पे उनके कैप्टन ने भी कहा कि थोड़ा सा शुरू में
पे ऑफ हमें नहीं हुआ और इन दी एंड वो कामयाब हुए। और एक फील्ड में आप और हम ही ऊपर कमेंट्री बॉक्स में डिस्कस कर रहे थे कि विदाउट स्क्वायर लेग या डीप फाइन लेग लिए बगैर बॉल करना, इसके पीछे कोई लॉजिक होगी और दोनों हैंड से वो अटैम्प हो रहा था। तो कहीं ना कहीं अच्छी प्लानिंग थी, एग्जीक्यूशन थोड़ी सी देर हुई मगर हुई। और यही स्मार्ट टीमें होती हैं जो ऑन अ डे कोशिश करती हैं अच्छी क्रिकेट खेलें। जबकि टॉस हार गए थे, पहले बैटिंग आ गई थी, बहुत सारे सवालात जहन में आते हैं, वो चीज़ों को इन्होंने साइड पे रख के कोशिश किया। ख़ास तौर ताहा की और सुलेमान की अगर बात करें, या इनके विकेट कीपर जो बैट्समैन हैं जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्टनरशिप लगाई ताहा के साथ मिलके, और वो 48 रन इनके, और फिर एंड में जिस तरह जहादात ने फिनिश किया और एज ए सीनियर फिनिश किया, ये ज़्यादा खुशी थी मुझे कि बहुत कम प्लेयर्स होते हैं जो बोलते हैं कि मैं फ्रंट से लीड करूँगा, और कहीं ना कहीं उसने देखा कि अब टाइम है कि स्ट्राइक अपने ही हाथ में रख के अगर छोटा कोई सिंगल है उसको भी इग्नोर किया जाए और बड़ी हिट पे जाए। तो ऐसे कंट्रोल्ड इनिंग वो आपको पे बैक करके गई। इस तरह बॉलिंग यूनिट, जिस तरह फैसल ने बॉलिंग की है, बहुत अच्छी बॉलिंग की, और वो इस तरह का बॉलर है, उससे ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि इस तरह की सिचुएशन में आके ये ब्रेक थ्रू दे। अली ने बॉलिंग की विद इन स्टम्प, उसने आदिल अमीन को जिस तरह आउट किया, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। खुर्रम, यकीनन हमने देखा कि जो वनडे फॉर्मेट, वनडे का जो मिजाज था, उस मिजाज से उन्होंने पीटीवी ने बैटिंग की, ऑल्दो कुछ डॉट बॉल्स भी थी, लेकिन उन्होंने आखिर तक गए। लेकिन टेम्परामेंट की कमी नज़र आई जब चेस हुआ, शॉट्स लग रहे थे लेकिन विट्टे गिर रही थी, और इन दी एंड यही हुआ कि रन रिक्वायर्ड रेट तो काबू में था लेकिन विट्टे नहीं थी। मुझे ऐसा कहीं लगा जब 242 का टारगेट आया, थोड़ा सा रिलैक्स लगी बॉडी लैंग्वेज OGDCL की, और वही चीज़ इनको डैमेज कर गई, क्योंकि दोनों टॉप रन्स गेटर वो इनके पास थे और फॉर्म में थे। स्टार्ट भी अच्छा लिया, ऑलमोस्ट 3 ओवर में 35-40 रन हो चुके थे, और सडन एक आउट हुआ और उसके बाद बैकफुट पे जाते रहे, और सामने वाली टीम ने उस मैच, जब वो मैच में इन हुए, फिर वो उन्होंने पलट के नहीं देखा। ये एक स्ट्रेटजी कह लें या वेल प्लान्ड कह लें कि आपका अच्छा मेंटली टफनेस आप तब होते हैं जब आपका होमवर्क अच्छा हो, और कहीं ना कहीं पीटीवी का थोड़ा सा ये कह लें कि होमवर्क ज़्यादा बेहतर था OGDCL के मुकाबले में, इसलिए वो एक स्टेप आगे निकली। जबकि वो थोड़ा पीछे हो गए थे, रन्स ऑन बोर्ड इतने नहीं थे, मगर कैलकुलेशन, ओवर्स अच्छी करवाना, फिर बॉलर ने टाइमली डिलीवर किया। एग्जैक्टली, तो मेन चीज़ ये थी। तो शुक्रिया बहुत बहुत खुर्रम मंजूर, और मेरे साथ मौजूद थे टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर, मेरे साथी कमेंटेटर। और पहला सेमीफाइनल अपने अख्ताम को पहुंचा और पीटीवी ने जगह बनाई, OGDCL को 84 रन से हराया। कल सेमीफाइनल खेला जाएगा दूसरा, और KRL और SNGPL के दरमियान, और उसके बाद कल के मैच के बाद हमें 2 फाइनलिस्ट मिल जाएंगे इस एयरसेल प्रेजेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर प्रेसिडेंट्स कप। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आप सबका ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।